Good morning, everyone. Namaste. Good Hari. morning. Good morning. Good morning, Arun ji. Good morning, Virendra ji. Good morning, Supriya ji. Good morning, everyone. Okay, all set. Hope you guys are ready for the breathing practice. But today I want you to meet you in a standing position, just for few kriya, and then we just sit on the chair and do some breathing exercise. So first, stand in a samasthiti. Hope everyone stand in a samasthiti, just to activate your lungs, your lower lobe, middle lobe, and your upper lobe. Perfect. Thank you. Shukriya. Chalo. IT team, please mute kar dijiye sabko. Both feet should be parallel and firm. See, so don't overarch your back or don't round your back. Spine should be neutral. Rest your hands in front of your anterior thigh, the front of your thigh. With inhale, slowly lift your both hands up. Inhale, 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 both hands up. Slowly exhale, hand down. Again, inhale, lift your both hands up over the head, elbow straight, expand your rib cage, lift your organic body up. Now slowly exhale. Very slow. So connect your breath with your hand movement. अभी ऐसे नहीं करना है, ये जल्दबाजी नहीं चाहिए. Inhale, exhale. Very slow. So try to inhale in 6 count, exhale in 6 count. I'll show you the side view. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Few more rounds. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 more rounds. Okay, I'll count. Start. Hands in front of your anterior thigh, front of your thigh. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So your movement is last as long as your breath lasts. So make it slow, not too fast. 3 more rounds. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. धीरे धीरे नीचे लाएंगे. Exhale, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 more rounds. चलिए साथ करेंगे सब. चल. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, bring your hands slowly down in front of your thigh. Last round. Again, inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This kriya will activate your lower lobe of your limb. Now the middle lobe. The second kriya, bring your hands in front of your shoulder. So join your palms, the palm side in. Inhale, slowly expand your chest. Try to maintain your shoulder, elbow, wrist same line. हम एक लाइन में रखेंगे हाथों को. धीरे धीरे आगे लाएंगे. Slowly bring your hands back. Again, inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 more. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathing के साथ जैसे जैसे आपके हाथ आप बाहर खोलेंगे, श्वास लेते जाएंगे. धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे. 5 more rounds. All together. Inhale, slowly expand your rib cage, expand your chest.
and feel the retraction at your scapula. So bring your scapulas together, fully expand your rib cage. Now with exhale, bring your hands in front. Last 3 rounds. Deep, slow, controlled inhale. Expand your rib cage, elbow straight. Slowly exhale back. Okay, last round, everyone, all together. Slow inhale. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and rest. Perfect. Now the third exercise, I'll show you quickly. Interlace your finger. This will activate the upper lobe of your lung. Interlace your fingers in front of your chest. Now with inhale, turn your palm up, धीरे से हथेली ऊपर की तरफ. श्वास भरते हुए हाथों को स्ट्रेट करेंगे. So extend your elbow and flexion at the shoulder joint. पूरा ऊपर खींचेंगे. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए back to position 1. Again inhale. You can easily feel the expansion in the upper chest. Slowly exhale down. 6 more rounds. Inhale, slowly up, 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 up. Elbow straight, elbow straight. धीमा श्वास छोड़ते हुए नीचे. So coordinate your breath with your hand movement. 3 more rounds. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए. धीरे धीरे पाम टर्न कीजिए. श्वास भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए. पूरा हाथ ऊपर. श्वास छोड़ते हुए turn your palms down. धीरे धीरे नीचे, 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 नीचे. Back to position back. 2 more rounds, everyone. फिर से करेंगे. चलिए. Turn your palms up, 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 up. श्वास भरिए. Slow inhale, slow inhale, slow inhale. धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे. Now rest. Okay. Thank you. Sit in a comfortable posture on your chair. I'll choose the cross leg posture. Just sit on your chair. Okay, everyone, make a chin mudra. So index finger and thumb will make a circle. Rest 3 fingers straight and all together. So this is the palmar side and this is the dorsal side. So अभी ये पीछे वाले हिस्से को आप अपने थाई पे रख लीजिए. कमर गर्दन सीधी. धीरे से आंखों को बंद करेंगे. Now bring your awareness towards your breath. बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ब्रेथ से कनेक्ट करना है. धीमा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Hands still in a chin mudra for next 6 rounds. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए. Just connect with your breath. धीमा, गहरा और लंबा श्वास छोड़िए. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Do your deep breathing. बिल्कुल धीमा, गहरा, लंबा श्वास लीजिए. This is very powerful practice. Very slow inhale, slow exhale. 2 more rounds. Just chin mudra, activate the lower lobe of your lung. Last 2. धीमा श्वास लीजिए. No sound during inhale and exhale. धीमे श्वास को जाने दीजिए. Last 1. Hand still in a chin mudra. Okay, last fully exhale and relax. Gently open your eyes. Now, the second one is a Chinmaya Mudra. First, index finger and thumb, still same like Chin Mudra. All the 3 fingers. So curl your all the 3 fingers. Now again, rest the dorsal part on your thigh. Chest up, spine neutral, eyes closed. And again, start your deep breathing in Chinmaya Mudra. 6 to 8 rounds. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए, धीमे श्वास को जाने दीजिए. स्लो, सबको आंखें बंद रखनी है.
धीमा गहरा और लंबा श्वास लीजिए। विपिन जी, आप भी आंखें बंद कर लीजिए। This chinmay mudra will activate the middle lobe of your lung. बिल्कुल धीमा श्वास भरिए, धीमे श्वास को जाने दीजिए। Few more rounds. Connect with your best friend, your breath. Don't move your spine with inhale and exhale. Spine should be neutral. Now the third one is eyes still closed. This time release your chin mudra. Make a fist. मुट्ठी बनाएंगे. Thumb in, all four finger out. तो अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां चारों बाहर. Again, rest the dorsal part of your hands on your thigh. Spine neutral. And again, start deep breathing for next 6 to 8 rounds. Hands in a Adi Mudra. And this Adi Mudra will activate the upper lobe of your lung. First, we are doing with the Chin Mudra. Second, with the Chinmay Mudra. And this one is the Adi Mudra. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए, छोड़िए. No sound during. आंखें बंद, आंखें बंद. धीमा, गहरा और लंबा श्वास लीजिए. उतने ही धीमे, गहरे, लंबे श्वास को जाने दीजिए. 4 more rounds. Slow, deep, long, controlled inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. And still same in Adi Mudra. पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती और जाती हुई श्वास पर. Once you fully exhale, then relax. Eyes still closed. Release your Adi Mudra. Release your hand gesture. Hands on your lap. Now join your palms together in front of your chest. We do 3 rounds of Om. धीमा, गहरा और लंबा श्वास लेंगे. Deep, slow inhale and chant 3 rounds of Om all together. Inhale, धीमा गहरा लंबा श्वास भरिए. Again inhale, श्वास लीजिए. Now relax. Hands on your lap. Now rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your lap. Now make a leaf with your palms. You can chant with me or after me. Karage vasate Lakshmi. Karage vasate Lakshmi. Kar madhya Saraswati. Kar madhya Saraswati.
कर मूले तू गोविंदा, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना, प्रभाते कर दर्शना. Gently open your eyes here. Thank you. Thank you so much. Thank you for sharing your plan. Hare Krishna. Jai Hind. Thank you, Dev. Over to you. Thank you very much, Neha ma'am. Thank you. For a wonderful session. We'll again see you tomorrow for another wonderful session. Sure. Okay, Nagendra ji, आप प्लीज देव आप ना मेरी मेल आईडी सबको दीजिएगा. Yes, I will share your mail ID with all commandants, and if they have any questions and queries, they can reach out to you definitely. Sure. Thank you. Thank you so much, ma'am. Hare Krishna. Good morning, everyone. Good morning. Welcome back, sirs. Good morning, sirs. Good morning. Good morning. How are you all feeling today, sirs? Very good morning. Fantastic. Fresh and energetic. Fantastic. Very energetic. Great to hear that, sir. Great to hear that, sir. Energetic. Fantastic, sir. Aj, I'm happy because we are going to be starting off with, a wonderful session, and we have very interesting days. Good morning, Ramesh, sir. Good morning. Today we, like I said, we have very interesting sessions lined up for you, sirs. A lot of self-reflection that is going to be on, and I hope you will get a lot of chance to deliberate. आज के हमारे जो सेशंस है वो अराउंड इट इज मैप्ड अराउंड दैट बीइंग द बेस्ट ऑफ यू दैट अंडर द 7 टैलेंट्स ऑफ अ लीडर एंड हमारे इंट्रोडक्टरी जो सेशन है इट इज एन एक्सपर्ट टॉक on personality and leadership. To facilitate the session, I'm very excited and privileged to introduce Dr. Aruna Bruta ma'am to you. Dr. Aruna Bruta ma'am is a globally acclaimed psychologist and revered mind, body, soul transformation expert. And she has over 4 decades of inspirational life makeover practice. Ma'am is a retired professor at the Department of Psychology, Delhi University, and with a doctorate in clinical psychology. Ma'am is being the president of National Academy of Psychology and of Sambhavata, NGO dedicated. Bas karo. Okay. Ma'am, I will hand over then the session to you. इतना नहीं बोलो, फिर बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं and then they get disappointed. हाँ? मेरा नमस्कार है सबको प्रणाम है, सबको मैं वेलकम करती हूँ, and I am grateful to this MIT school that thinks of such topics, because let me say right in the beginning, nobody wants to understand that he or she has a need to consult a psychologist, because the first reaction is मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर ब्रूटा के पास या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास. So this is our attitude towards mental health, but more than the attitude, we start thinking that we are perfect, and if there is any flaw in us, पंडित जी ठीक कर देंगे, फ्यूचर में बता देंगे कौन सी अंगूठी पहननी है, कौन सी तावीज पहननी है, और सब जादू की तरह सब ठीक हो जाएगा. I want to just say in one sentence, पागल कोई भी नहीं है, लेकिन सब में एक कॉर्नर है जो इम्प्रूव हो सकता है, and that is the drawback of each one of us in our personality. Even I am not perfect. तभी कहते हैं ना हिंदी में, वो पूरा हो गया. परफेक्ट आदमी तब होता है जब आदमी रहता ही नहीं है, लेकिन अधूरा तब होता है जब अपने में कमियां हम देख सकते हैं. So today's session is about our personality, but with special reference to leadership, because I have been asked to speak on that, but also because I know that commandants are the biggest leaders of the world. मैं देख रही थी जो मुझे documents भेजे गए थे, that what is the role of a commandant in BSF, and tremendous role of responsibility, tremendous. And therefore I think we need to understand, can we
be leaders? Are we leaders? Can we improve our leadership skills? Can we? Or is there a huge debate? Are leaders born? Can they never be made? Can a leader be groomed to be a leader? Or you keep trying and he will never become one? And yet, when you joined BSF, you did have this ambition in you. I wish I could rise. I wish I could rise. I wish I could rise higher and higher and higher. But as you go high up on the ladder, our work role changes. And what you call a leader, I will say you will have to, one, take decisions. Two, resolve conflicts within your own self, within the battalion that you are leading, not the army conflicts or not the intra-country conflicts that we are talking about, not political conflicts. The conflicts that you read every day, face every day, be with every day, that requires your decision making. And I think leaders can definitely be groomed if they attend such meetings, such workshops every now and then, so that they get time to reflect into their inner self, so that they get time to understand, was that a correct decision? Did I take too much time to take that decision? Did someone coerce me to take that decision? Was I under the influence of someone on my right hand, someone as my left hand? Or was it me that took the decision? Because I understand my job, or I too don't understand it very well. Or I have the tendency to be perfect. ये करूंगा तो शायद ये ना हो जाए, वो डिसीजन लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए. So A, you live in conflict. B, you take more time in decision making. And 3, you're looking for some validation from somewhere. Why? Because you are not sure of yourself. This is what I want to talk about today. I will say, whatever questions I have raised depends upon also, not only do I have the capacity to be a leader, but what kind of leader do I want to be? So there are leadership styles. So can I have the slide on leadership styles? Yes. Please, Yes, someone who's assisting me. Yes, ma'am. Tanvi, Yeah. beta. Tanvi, yes, beta. ma'am. I'm here. Yeah, I'm just thank you, sweetheart. Thank you. So if we look at classical, styles, so we have a democratic style of leadership, we have an autocratic style of leadership, and we have an arrogant style of leadership. Next slide, please. Personality and leadership दिखा रहे हो, उसके आगे चलो. Are leaders born? We've done this. Go to the next one. Leadership styles. Yes. So there is a democratic leader. There is an autocratic leader who does not consult anybody in taking decisions. And there is an arrogant one who, when discussed about his decisions, will not accept that this was probably not the right one or not very right. If we had modified it, it could have been different, right? So there are many styles of leadership, but these are the 3 that I narrowed down because, well, Amity wants me to talk about everything in leadership in personal self-reflection within an hour. I can't do it, but I'll try my best. So can we have the next one? Identify your leadership style. Now,
can I say, keep a diary with yourself right now. All right, a couple of papers on which you can write. You make your notes, you can make your comments. So all of you must have at least 3, 4, 5, 6 maximum pages for yourself. Identify your leadership style. Are you democratic? May I say something? Sure, please. Please, sir, say your name first. Ma'am, Virendra Giri. Hanji. Ma'am, actually, the first style of leadership which we are talking about, that is democratic. Hanji. Forces that may be not valid. Not applicable. I'm coming to that. Yes. I'm coming to that. Because we are not democracy, we are totally hierarchical organization. Yes, yes. I 100%. And then if leadership style is democratic, then I think either the grooming is wrong or the training is wrong. Absolutely correct, sir. I'm with you 100%. Thank you. And I was coming to that there is a leadership style which is democratic in nature. Is that relevant? Thank you for making it easy for me. Madam, good morning, Mahendra Singh here. The democracy, Hanji, sir. form, democracy in the way of life. It deserves in all aspects of the life, not only in the political form. In talking, behaving, and in administrative setup also. Agreed, sir. But let me say, I am talking about decision making. I am talking about conflict management. This is what I'm talking, which is most important in leaders. I know a democratic style is a very welcome style, but you are not in a professional situation at the top where you can be completely democratic. No. You have to be authoritative. Ma'am, the biggest dilemma which the leadership faces is decision making. That is the most difficult task. मैं उसी बात पे आ रही थी. मैं उसी बात पे आ रही थी. And leaders are there only to give decisions based on the feedback or the suggestions. But ultimately, the onus lies upon the leader as far as decision is concerned. Absolutely correct. Absolutely correct. You're not wrong. That's why we are scared to give decisions. Are we? Of course, are we scared of taking decisions? Of course, we are not, but that's what I'm saying, that dilemma is there always. There is. Do you know, in many people, the dilemma is not there. And in most people, the dilemma is there. Who are these most and who are these many? And I may say, a person who just gets rash, arrogant, will not believe that he needs anybody's advice. But people who are in a dilemma are the people who are looking for validation, endorsement from the others. Nahi yaar, tune acha kiya. Nahi, ye baat theek thi bilkul. The other one says, koi theek nahi thi. So you cannot get 100% validation. You cannot. However, the topic for today is the ease with which you take decisions, the ease with which you resolve your conflicts, work conflicts. Because so this, yes. Yeah, yes, ma'am, please carry on. No, aap bologe. Identify yourself and bolo. I was just saying that we shouldn't keep anything in gray. It should be either black or white. Now, when you are either black or white, that means you are not looking for endorsement, for validation. You're not looking for any other opinion. You're not looking for any criticism. You are only saying this is the correct path and follow. This is a leader in BSF as a commandant. Because if you spend too much time taking a decision, you're going to be inefficient. Ji, sir. Madam, good morning. Good morning. Please identify yourself. Regarding the identity of good leadership, democratic, nowadays
there are requirement of opinion some other also under your command. दूसरे का भी एक ओपिनियन ले करके एक बढ़िया से डिसीजन किसी को बनाना, ताकि वो चीजें प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके अगे और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो। अगर आप अपना पिरामिड देखें, आप कमांडेंट हैं, तो आपके 2-3 जो इमीडिएट, इक्वल एंड जूनियर हैं, एक आपका कोर ग्रुप बनता है। You discuss it with them and you implement. And there one more thing, ma'am, कि junior command is also feeling मतलब happy कि हमसे भी कुछ पूछा जाता है, हमारी भी जो है वो ओपिनियन और व्यू लिया जाता है फॉर मेकिंग द बिग डिसीजन। तभी तो आपको मैंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक स्टाइल भी होता है। चाहे आप उसको फॉलो करें या ना करें, उस डेमोक्रेटिक स्टाइल में एक स्किल होता है which is a listening skill. Yeah, and now in concern of border management, ma'am, तो border पे management करने के लिए you have to take the opinion of your company commander, you have to take the opinion and view of your troops, you have to take the opinion of your staff officer, you have to take the opinion of your second in command. Finally, when you take the opinion, ultimately it's your choice what you are going to select as the decision. So ultimately वो responsibility आपकी आ जाती है कमांडेंट साहब। जी। Yes, madam. Yes, madam. That's why it's called collective leaderships. Exactly. Because जब आप collective leadership की बात करते हैं, onus ultimately एक आदमी पे आता है जो कमांड करता है और जो अपनी कमांड डिस्ट्रीब्यूट करता है। Always true, madam. That's true. Anyway, so I think you have understood and you have made me understand also how important it is to be with your battalion as well as look at their viewpoints, but take your own decision. Madam, 1 point from my side. Ji, sir, identify yourself, sir. I'm T. Mohan. Ji. I agree with Ajay, sir. Ji. It is not actually a democratic form of leadership. It could be a participating type of leadership. Absolutely. Where you are willing to listen to others and delegate powers to others. Ji. Right. But let me say, listening will make you democratic, but your decision will prevail. Your decision may be influenced by what your participants have said to you. But at the same time, the final onus is on you. That is your leadership, you know. So if I have the next slide, please. Hello, good morning, ma'am. Ji, sir, bolo. Myself, P.K. Agrawal, Pramod Kumar Agrawal. Hanji. Ma'am, collective leadership, जैसे हमारे कुछ कलीग भी बोल रहे हैं कि collective leadership means जो है लीडरशिप से भागना नहीं है क्या? नहीं, भागना नहीं है। उनका यही मतलब है कि भाई जो आपने लो, पॉइंट बताया, 2-3 लोगों की सुन लो पर करो अपनी। हाँ, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में व्यूज एंड कमेंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन वैरायटी ऑफ कमेंट्स होंगे वो। बिल्कुल होंगे। लेकिन लीडर तो लीडर है, उसको डिसाइड अल्टीमेट ओनर्स आप पे है। यू आर द कमांडेंट। और यदि उसको हमने कलेक्टिव लीडरशिप बोल दिया, नहीं कलेक्टिव नहीं, then it is run away from leadership. टेक्निकली वो कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है। यू आर द सोल कमांडेंट ऑफ दैट बटालियन। आपके आजू बाजू जो इमीडिएट सीनियरिटी है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, but the decision is yours at the end. So it is not collective leadership. I could understand the meaning of collective leadership. That means you are taking their suggestions, you are giving them a chance to speak, to express, but at the same time, you are keeping your leadership in your hand. That means decision making is in your hand. बात आती है कि अगर आप बहुत लोगों की राय सुन लेते हैं, do you have the ability to take your own decision कि आप कॉन्फ्लिक्ट में बह जाते हैं तो आपका डिसीजन देर हो जाती है, लेट हो जाते हैं। मैं उस बात की बात कर रही हूँ। आज का जो मेरा सेशन है ये सिर्फ इसलिए है
कि आप अपने को सोच लें, क्या मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, सुनना भी जरूरी है औरों को, क्या मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ औरों से, मेरा अपना डिसीजन क्या हर समय पलट जाता है? नहीं। और फिर मैम कलेक्टिव लीडरशिप का कोई दायरा नहीं है, साइज ऑफ सैंपल क्या होगी? जैसे You, मान लो 1200 पर्सन है, you are taking your colleagues literally. मान लीजिए सपोज एक बटालियन में 1200 की नफरी है, आपने 15 लोगों से 20 लोगों से व्यू ले लिए, तो ये सैंपल साइज तो बहुत छोटी हुई है। 3-4 लेंगे इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। तो देन जो है ये आपने जो बताया हुआ है कि एक ऑर्डर ग्रुप होता है हम लोगों के यहाँ, 1 2 3 बस 1 2 3 273। तो उसको कलेक्टिव लीडरशिप नहीं बोलेंगे, उसको कलेक्टिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी all the leaders that are sitting before me virtually. Are they having a developmental history of leadership right from childhood, or have they cultivated it? यहाँ पे आपकी डायरी मेरे काम आएगी। This is your personal diary. मैंने देखनी नहीं है, आपने एक्सचेंज नहीं करनी। आप आज टाइम निकाल के अपने काम से यहाँ बैठे हो अपने बारे में सोचने के लिए, मैं क्या था, मैं कहाँ पहुंचा हूं, क्या मैं और आगे थोड़ा पॉलिश करके अपने आप को रिफाइन कर सकता हूं। So the first question that you answer in your diary is, what were you like when you joined BSF? What were you like? A young boy? क्या ड्रीम्स थी? मैं सिर्फ यस सर यही करूंगा, या मैं आगे जाऊंगा, मेरे स्टार्स लगेंगे? What were you like when you joined BSF? Try to pen that down in about 3-4 lines. That's all I'm asking you to do. Start writing. Take only 3-4 sentences. You don't have to tell me what you write. It's your inner self that will tell you. My next question, what growth do you see in your own personality, not in your job, in your inner self, in your personality? What growth do you see from the day you joined BSF and from where you are today? क्या ग्रोथ पर्सनालिटी में आई? मैं क्या था, आज मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं? Another 3-4 sentences, bas. Next question. Are you satisfied with your personality? How you have developed, how you have grown? Are you satisfied? कि होता है कि यार कुछ और कर लेते, इससे ज्यादा कहीं कर लेते, वहां ट्रांसफर ना हुई होती तो शायद मैं और हो जाता, या नहीं मैं तो ठीक चल रहा हूं. Whatever way you view your inner self, are you satisfied with your personality today? How you have developed it? Are you satisfied, or you have some reflections कि मैं कुछ और भी हो सकता था? Which is my next question. Do you think you could have been better? Do you think जो आज मैं हूं, क्या मैं satisfied हूं? उसके साथ ही मेरा next question आता है, do you think you could have been better? I'm using too much Hindi. Does everybody understand Hindi here? I can change back into English, please. Yes, we are very comfortable in both the languages as well. Both the languages. I read some names, Mohan. So आप South से हो तो मुझे बिल्कुल बोल देना. Stop me when you can't understand me. I'm here for you, not for myself. So do you think you could have been better? Answer that.
with the question, if so, if you could have been better, how would you have been better? You could reflect, give some example. उस समय मैं ये ना करता तो मैं ये करता, शायद मैं better होता. Reflect in your inner self, because no one else is going to read your letter, your paper, your diary. No one. This is a confession to your own self. Who would you attribute the responsibility? That means, next step, what stopped you with your growth as a better leader? What stopped you? Could be my own health, could be worry about the family's health, so you were not able to grow better. You were always working with a worry behind your mind, or your boss was a terrible guy, or he didn't bother about you, he abused you a lot, whatever. This is your personal letter, this is your personal paper. What you want to remember, recall, try to pen that down. Nobody is going to read it. I repeat it again and again. And look at my last sentence of this slide. Who has been your role model within BSF or outside BSF? Could be the armed forces, could be someone in your family, could be someone from Bollywood, could be someone, a movie that you may have seen, could be one of your teachers, I don't know. Who have been your role models and why? Why have they been your role models and no one else? Maybe someone influenced you, maybe whatever you want to say. Why have those people been your role models and no one else? Can I have the next slide, please? So, what difficulties did you face? What difficulties do you face while taking decisions? Could it be while you're taking decisions, while you're giving commands? What difficulties do you face as a leader? Is voice delivery very important? I think for a leader, voice delivery is very important. How you tone your voice while giving a command. I don't want to name anyone. I have been doing personality development with BSF Commandants. And I have had BSF Commandants tell me, my voice goes for a toss when I have to command. Either I tremble, either I get softer. There is no sense of determination in my voice. Therefore, I'm not able to speak effectively. What does that mean? What does that convey to you? Are you stammering? Is your voice not firm? Or is it because you're not sure what to say? That means you're not sure of your decision. That means you're always doubting your decision. Though you're not telling anybody, but it is inside your heart. क्या पता कोई इंक्वायरी बिठा दे मेरे अगेंस्ट, क्या पता ये डिसीजन गलत हो, क्या पता मेरे को रिटायर ही कर दें, क्या पता क्या कर दें. There is anxiety in you because you're not sure what to say. These are personal reflections. I am guiding you. Think in this way, think in that way, think in this way, think in that way, so that you can rule out
no, this never happened to me, then why was I ineffective? Then why was I in a conflict? Then why was there a little softness in my voice? Why was there not determination in my voice? Think about it and write. Ma'am, I have one question about it. Please do. Please identify yourself first. I'm Gurinder, ma'am. Hanji. Ma'am, my doubt is, my not Hanji. doubt, ma'am, I just seek a clarification from you. Hanji That Gurinder ji. all those points जो आपने बताए हैं, ma'am, बिल्कुल. if you have a clear thought process, if you have given some time to think over before passing an instruction, an order, I don't think all those factors which you have mentioned will be there, ma'am. First thing, ma'am. मैं react कर लूं इसको? So second, ma'am, मेरा ये है कि as a commander, when there are people who are looking up to me for orders, and once I pass an order which I feel is okay, fine, then do you feel and what do you suggest that if your staff officers and other persons come, sir, if we do it this way, that would be better? And what do you say about this? Should I stick on to my orders which I passed, or should I change it? Don't you think if I change it, then they will feel that they can influence me at any time? सही बोल रहे हो. What do you say about it? सर, पहले तो मैं आपको मुबारक दूं. अगर आप बिलीव ही नहीं करते कि वॉइस डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप खुश नसीब हैं. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं आपके बीएसएफ से, इवन फ्रॉम अदर आर्म्ड फोर्सेस, जो कहते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग है, हमें दिमाग में पता है कि हम ठीक सजेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, हम ठीक डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन कहीं सेल्फ डाउट है. और आप नहीं समझे कि मैं साइकोलॉजिस्ट क्यों हूं, क्योंकि जो पहले मैंने आपको स्लाइड दिखाई डेवलपमेंटल हिस्ट्री, तो एज ए चाइल्ड यू वुड हैव बीन स्कोल्डेड. ऐसा थोड़ी करते हैं, तू तो बुद्धू है, तू तो बेवकूफ है. वो घर करती रहती हैं बातें, मैं बुद्धू हूं, मैं बेवकूफ हूं. बन गए हो कमांडेंट, लेकिन कहीं बिलीव नहीं होता कि मैं गुड कमांडेंट हूं, मैं कमांड कर सकता हूं, तो मैं कमांडेंट हूं. तो आपका जो पहला हिस्सा था कि मैंने डिसीजन ले लिया, फिर ये बातें दिमाग में क्यों आएंगी? गुरिंदर जी, आती हैं लोगों में. Nee, I agree, ma'am, because you are specialist in that thing, and people do come seeking advice from you. But I would categorize those, if those are the cases, then I would categorize them in bad parenting, ma'am. Means that can be a case, bad parenting, ma'am. आपको लगता है कि जितने पेरेंट्स हैं सब गुड पेरेंटिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल. I am not being a good parent. मेरे में भी कमियां हैं. Though I am a clinical psychologist, मेरे में भी कमियां हैं. कई बार मैं गलत डिसीजन बच्चों को देती थी. Parenting styles have changed over the time. Comment pass करना कितना easy है. He is a bad parent. हाँ, he is a bad parent. Why is he a bad parent? Parent का पहला ही मतलब होता है प्यार करना. लेकिन अगर आप डांट के प्यार कर रहे हो, that shows your personality as a parent. हो सकता है आपको mild depression हो सकता है this is how you have been parented, and now as a parent you think this is the best technique. So मैं comment नहीं दे रही गुरिंदर जी, मैं ये कह रही हूँ, those who take effective decisions as commandants, even they inside their heart can have self-doubt. Am I right? Am I wrong? Am I correct? वो इसी शशोपंच में पड़े रहते हैं, डाउट में. So that is why the developmental history को मैंने जरा सा टच ही किया था कि look how you grew up, who encouraged you, who discouraged you. Very often fathers, mothers, grandparents say तेरे बस की नहीं है, रहने दे, मैं कर देता हूँ. Why do you say तेरे बस की नहीं है? आगे चल के ये होगा, मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे बस की नहीं है, पर मेरे जॉब प्रोफाइल में डिसीजन लेना है, तो मैं लेता हूं, तो मेरी वॉइस ही नहीं इफेक्टिव रहती. That's the first thing that I want to emphasize. Otherwise, आपको क्या फायदा मेरे को सुनने का अगर मैं आपको चाइल्डहुड हिस्ट्री में पॉइंट आउट ना करूं? It is always good listening and learning, ma'am. नहीं सर. Another thing is that leadership
should also introspect, because he react to a situation which is many a times flexible. And when flexible is the situation, then sometimes that point of time, some decisions may have to be reviewed. And if some corner, there are suggestions, and leadership should welcome those suggestions and review it on positive manner to get Right. more But results. as Gurinderji said, if someone comes and tells you, you could have done it this way, I think this is my suggestion. And then you start changing your decision, not even modifying it, but changing your decision. That will have a very bad impact on the battalion. That's what I'm saying, sir. That's what I'm saying, ma'am. Once a decision is Have a taken, very bad effect on the Yes. battalion. they will But start. yes, They will start. If you start listening just to the first two persons with you and your cadre at the similar position, then it's okay. But you can't go on changing your decisions. Yes. Yes. That's And why, if you madam, change your decisions, it depends on your parenting style, how your personality has been developed. The topic is leadership and personality, personality and leadership. They interact. What kind of decisions are you going to take depends on your personality. How you have grown up with BSF, but prior to BSF, how have you grown up with your confidence level, with your conflict management, with your decision making? Are you an influencer or someone else is an influencer? You let others influence you so easily that you get carried away. That is why when you give a decision as a commandant, you're not sure whether you're going to be followed, heard, or if you're going to be followed, heard, you still reflect inside, yeah, was I correct? Was I correct? Right? So I think that we need to reflect on these issues. May I have the next slide, please? That's why I said that decision making is the most toughest job. And once a Absolutely, decision has it been is a arrived tough at, job. It then is a tough job, पर करना तो है ना. That इसीलिए is why these training programs कि हम कितना अच्छा और कर सकते हैं, I was saying कितना that logically और develop कर सकते हैं अपने आप को. that if we change our decision, then that shows that perhaps it was not thought of very thought of decision, or it was not appreciated absolutely. Absolutely. So therefore, there are certain things which have to be stuck onto for better command and Okay. also So bringing it. I'm going to ask you to use a fresh piece of paper and identify your personality. This is a developmental history that I am taking, and I am going to use a self-concept probe. And the probe is, please give the title, please write that down. Who am I? What am I? Who am I? What am I? For 5 minutes, try to write who am I, what am I, till the age of 10 years, till the age of 15 years, till the entry of college, BSF entry, commandant new, when I was a new commandant, and commandant now. Can you write two sentences as a developmental history? Who am I? What am I? And your time starts now. 5 minutes. It's 10:10. Put segments with you till the age of 10 years. Who am I? What am I? Now you're 15 years. Who am I? What am I? Till the entry of the college. In commandant, it is DANT. Okay. Sorry, forgive me. BSF entry karte, then commandant new jab bane, and commandant now. Who am I? What am I? Nobody is going to read this paper. It's all yours. Right far away from your place of work, from your family. You are only to your own inner self. You can reflect
what you went through, how you grew, your self-concept. Who am I? What am I? Reflect in your inner mind, a historical sketch. What was I till the age of 10? What was I till the age of 15? What was I till the entry of a college? What was I at the entry of BSF? What was I when I became a commandant for the first time? And who am I now? What am I as a commandant now? Continue to write. If you stop to think, then you're censoring your mind. Don't censor your mind. Write spontaneously. Who am I? What am I? 5 minutes. If you stop to think and then write, then I will say you're censoring your mind. If you write spontaneously, then you're writing uncensored. Then 5 minutes are too much if we don't have to think. Yes, I have done it, ma'am. This is a standardized book. I have to take 5 minutes. Continue to write. Please do not talk. Continue to write, because this is a process when you are within your own self. You are with your own self. You're not with me. Total silence is required. Who am I? What am I? Nobody is going to read this paper. Shant ho jao. Nobody is going to read this paper. Shant ho jao. Likhte raho. Socho nahi. Let it be spontaneous. Continue to write. If you're still writing, then let this be your last sentence. Who am I? What am I? Okay, take a fresh page and please write what I am not. What I am not. Without thinking of 10 years of age, 15 years of age, entry of college, at the moment, what I am not. Your time starts now. 3 minutes. What I am not. Don't think, write spontaneously. You are sitting only with your own inner self. Nobody is going to see these papers. What I am not. इतनी तेज रफ्तार जिंदगी की. आज मौका मिला है अपने को हेलो कहने का, अपने को पहचानने का और सोचने का. पहले था मैं क्या हूं, मैं कौन हूं. अब मौका है मैं क्या नहीं हूं. मुझ में क्या नहीं है. What I am not. Personal diary. कभी टाइम ही नहीं मिला ऐसा सोचने का. जिंदगी भागती रही.
Okay, we can stop and go to the last new page. Give the title. What I want to be. What I want to be. And your time starts now. 3 minutes. What I want to be. मैं क्या बनना चाहता हूं. मैं कहां पहुंचना चाहता. What I want to be. Personal diary. Only for you. No one else. A review of your inner self. A review of your inner feelings. A review where I was, where I am, where I want to be. If you write continuously, then you're writing uncensoredly and spontaneously. What I want to be. Those who are still writing can be using this as your last sentence. And we can have the next slide, please, Tanvi. Finished? Everybody finished? Everybody finished? Finished. Good, good, good. Now, if you look into what you wrote, could be that you have been having problems resolving issues within the family, outside the family, work situation, and you're unable to decide what line of action I can take or I should take. Have you witnessed such things in your own inner self? If you put that this has been very important for you, you need counseling. Also study your personality and see, do I always take decisions that will get me approval from others? These are exactly the issues you all have been raising over here. Changing decisions, changing because of the other versus my own self. That means others are more important, what they say about you, about your decisions, about your lines of action.
Are they more important than your own inner voice, inner self, inner decisions? You still need more counseling. You still need to have a firmer self-confidence. That is a reflection you could make when you were writing the self-concept probe. Who am I? What am I? What I am not? What I want to be? What has been my journey like? Has this been painful taking decisions? Has this been painful, a very strong need in myself to get everybody else's approval? And therefore you change your own decisions. Or vice versa, you're unable to manage your emotions. You display emotions on your face, your body language very easily. So what happens? You lose your temper very easily. Anger management is required. Or you can rephrase your anger beautifully, that you give your note of dissent strongly without offending the other person. But stick to your decision if you think you are right. If you think you are right. Do you have issues in fear management? Dar lagta hai. Phobia for height. Phobia of narrow spaces. I don't know if there is enough time, but I want to share something with you, those of you who have been to Pahalgam. And there is a Liddar Nadi there, and there are BSF tents over there, and we happened to stay there about what, 35, 40, 35, 37 years back. So one of the commandants said, Adu dekh ke aao. I said, what is adu? I thought, oh, khane ki cheez hai, it's a fruit. Adu dekh ke aao. Aru, man. Aru Valley. Aru, acha, theek hai. Aru Valley. All right. So, bhai, wahan kya hai jo hum jaएं? So, well, scene is beautiful. The mountains, all that surrounding is just gorgeous. We have never been to such places. So, हमने कह दिया हाँ ठीक है. So, हम 1 ton में गए. Hum means my husband and me and my little son. I had 1 child at that time. Same, maybe 35, 40 years back. So, अब वो 1 ton चला तो कोई सड़क ही नहीं है. वो चली जा रहा है and you can fall. And these are the, हम एक बार गए हैं तो हम प्रार्थना करने लग गए कि हे भगवान वापस भेज दो, सही सलामत हम गिरे नहीं. There was a fear. And आप लोग तो दिन रात ऐसी challenging situations में होते हैं. And look at the decisions that you will take. पूरा battalion जाएगा, नहीं जाएगा, half जाएगा, वहाँ क्या रोल क्या होगा, communication role क्या होगा, food intake क्या होगी, rations हैं कि नहीं. You have to pre-plan everything, whatever. So we have lots of fears in us, which we have never had the opportunity to express. Because we think if we express our fear, probably people will think kamzor hai, weak personality hai. Isko to डर ही लगा रहता है. We overgeneralize. But how have we forgotten that we also have fears? How are we judging others? But we judge. Therefore, I say that very often you can have a psychologist who can do fear management to teach you how to not have claustrophobia, not have agoraphobia, not have phobia for heights, and so many other things, which is this process: conflict management, need for approval,
changing my own self because of the others. This is developing an emotional balance. I think every commandant has to command his emotions in such a way that there is an EQ balance. In life, it is not just that you need an IQ to grow up, to comprehend, to be with others, to study arithmetic, to study geometry, or in your case, to study geography. So many things you have to study. मैडम वो तो मैडम वो जो But you need an EQ. जी सर. ये जो आप गई थी ना आरू वैली में, वो Yeah. आरू वैली जो है वो तो केवल एक सैंपल है. वही तो सैंपल से मैं काम. मैं सारी बातें तो आपसे 10-10:30 बजे तक नहीं कर पाऊंगी सर. तो वो बिल्कुल है. ऐसी सिचुएशन में हमारे ट्रूप्स और ऑफिसर्स जवान सब एक साथ चलते हैं और रहते हैं. कुपवाड़ा का भी रीजन इससे भी ज्यादा यस डेंजरस, बिल्कुल. highly dangerous, or movement is very difficult there, and particularly during the snow weather. तो मैं तो केवल एक बता रहा हूं कि ये तो केवल एक छोटा सा वो नमूना था वहां जो देखा आपने. बहुत बता सकती हूँ ना सर. जी हाँ, बिल्कुल 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 आप सही हैं. वो मैं गया हूँ और हम लोगों ने देखा भी है, फायरिंग भी कराई वहां जाके. तो ड्यूटी में हमारे सारे अफसर वहीं मोस्टली इसमें जो है वो कर चुके हैं उस एरिया में ड्यूटी. और कई अफसर जो हैं आपके, जी वो हाँ, आपको कभी बताएंगे नहीं. वो बता नहीं पाएंगे कि उन्होंने कितना डर एक्सपीरियंस किया, कितनी पैल्पिटेशंस एक्सपीरियंस करी डर करके, कितने बेसिकली ये जो है उनकी हैबिट में हो करके जाता है. रखा. ये उनकी हैबिट में हो जाता है कि दे आर ऑलवेज फेसिंग सच डेंजरस सिचुएशन ऑलवेज इन द लाइफ ऑफ द बीएसएफ. सो दे डोंट गिव प्रायोरिटी टू. कब बनता है? आफ्टर सफरिंग तब जाके उनको हैबिट पड़ती है. लुक एट द ब्रेन लॉस एट दैट टाइम. Even that can influence your decision making when you become a commandant from a junior person. This is what I'm trying to tell you, that agar aap young age in your career anger management, fear management, emotion management nahi karayenge, to emotional balance nahi rahega. Agar aap apne ko express nahi karenge, to what will happen? Your brain will be over consumed. Your nerves and your veins and your muscles are tight when you're traveling in serious situations under serious conditions. And ultimately what happens, the brain ages faster. And we want to preserve the brain till we reach the top of the ranks. And therefore I say, that it is important to go through counseling. It is important to make such confessions that yes, I have fears. Yes, I have an anger management problem. And then you will feel much lighter. May I have the next slide, please? Madam, here is a something just about anger management. If by our as Mahabharata or Ramayana, our that it has been told that Bhishmapitama is known to have done only one blunder in life. He didn't get angry at that right moment when Draupadi was being disrobed. Yes. But at the other instance, Jatayu is known for one virtue of his life. He got angry at that right time when Sita was being kidnapped by Ravana. And he tried to save her. And when time came, both died. So anger is not bad, sir. Yes, ma'am. That's why anger is also required at a certain point of time. When the anger outburst is inappropriate and overly exaggerated, that is the need for anger management. And there are people who have it. A, those with high blood pressure, B, with low blood pressure, C, which as a psychological problem. And may I be allowed to say in the open public
Also people with sexual dysfunctions. We need to look into ourselves and go through medical, psychological, socio-psychological, counselings, so that we go through these checkups. Now, how to improve the inner self? You must find time to write a personal diary. Put down your thoughts. आज क्या हुआ? मुझे क्या बुरा लगा? अगले ने क्या बुरा कहा? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने टेबल तोड़ दिया, या मैंने उसको गाली दे दी, नहीं देनी चाहिए थी, whatever. अभी आपके प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप योग भी कर रहे थे. So I think pranayam twice a day should have been done. But what is important is shavasana. Shavasana, अगर हमारी शिखा मैम 5 मिनट मुझे कहीं कोई आज नहीं किसी और वर्कशॉप में दें तो मैं आपको उसका डेमो दे के आपको छोड़ दूं, मुझे कोई लेक्चर नहीं देना, तो आप खुश हो जाएंगे कि मैं अपने डेली रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट करूं शवासन को. सो उसमें इनर सेल्फ की इमोशनल इम्बैलेंस भी टेक केयर होता है. ऑलवेज राइट डाउन a realistic self praise. इसका क्या मतलब? Praise yourself. आज मैंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया. 5 बार उस पे concentrate करो. Is this realistic or is it not realistic? ये बहुत important है. Next slide, please. What do you think is the takeaway? Can I improve my personality? If so, how can I improve my personality? That is, I must learn to address issues rather than put issues under the carpet. I must face threatening members of my unit. कई लोग होते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, दहाड़ के बोलते हैं अगले को डराने के लिए. Lot of people dramatize, their viewpoint. कि मैं ऊंचा बोलूंगा तो ये डर जाएगा मेरे से. This is where you need to work. Decision making, confidence, wavering mind है, उस पे work करो. Do you have feelings of inadequacy, inferiority, vice versa, superiority? You must write this down every day as your diary. Tear it up if you're not confident कि कोई पढ़ लेगा. Tear it if this is what you feel. But ये होना चाहिए. मेरा टाइम तो खत्म हो गया है, but I will still say, मेरा मन नहीं है चुप करने को, बस करने को, पर इतना ही मुझे अलॉट हुआ है. मैम मैं थोड़ा सा अलाउ करें आप तो मैं बोलूं थोड़ा सा. प्रमोद जी प्लीज. आपने जो लीडरशिप का ये इसका बताया हुआ था, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और एरोगेंट. हाँ जी. तो मैं जो हम लोग जो जैसे एनवायरनमेंट में सर्विस कर रहे हैं, वो इतना कहूंगा कि वी आर एंजॉयिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी with least or without power. But some leaders who are deployed in very responsible posts, they are enjoying power without responsibility. So it is very dangerous thing of the world as per Pooja Bapuji. Cool. और second one था very hard work. अच्छा बोला गया. तो इस एनवायरनमेंट में हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करते हैं. तो ये टाइप में जो है अब एक लीडर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो वो किस फ्रेमवर्क में आएगा ये? क्योंकि लीडर के पास में तो एक अथॉरिटी होती है, उसके पास में एक पावर होती है. सर आपको एक एग्जाम्पल दो. हाँ दीजिए. आप बुरा नहीं मनाएंगे मेरी बात का. मैम क्या बात कर रही हैं, ऑलवेज वेलकम. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए कि आई मे बी ट्वाइस योर एज, राइट?
तो क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, पर मैं देखिए बीएसएफ का सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकती, लेकिन ये तुलना करनी बहुत गलत है कि बीएसएफ में रह के बापूजी को याद करो। बापूजी नॉन वायलेंट एंड बीएसएफ का मतलब है जोर डबट जो कुछ भी है एट ए लॉजिकल लेवल काम करना है। मैंने नहीं कहा कि इनह्यूमन रहना है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नॉन वायलेंट का क्या मतलब है? आपके सामने कोई चीनी जापानी आएगा, कुछ करोगे नहीं? क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इन सेल्फ डिफेंस। एग्जैक्टली लेकिन बापूजी तो सेल्फ डिफेंस में भी कुछ नहीं करते थे। मैं पब्लिक में ज्यादा नहीं बोलूंगी, मेरे को अभी कोट करके पता नहीं कहाँ आप मरवा दे मुझे, छोड़ दीजिए। बट सर आई वांट टू से मैम बापूजी ने भी नहीं सर, जो लीडर होता है वो कभी डेमोक्रेसी से अपने डिसीजंस आगे लेता है, कभी ऑटोक्रेसी से लेता है, उसको काम निकलवाना आता है। ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि मैं डेमोक्रेटिक हूं तो मैं डेमोक्रेटिक ही रहूंगा। चल ली आपकी नौकरी, फिर तो संभाल लिया आपने, क्योंकि आप कई ऐसे आप डेमोक्रेसी में लोगों को बोलने दोगे तो कोई डिसीजन ही नहीं लेने का टाइम मिलेगा आपको, आप सुनते ही रह जाओगे। सवाल ये है कॉकटेल टाइप ऑफ जो है एग्जैक्टली। तो अरुण जी मैं गलत कह रही थी, आप हंस रहे थे, मैं आप यू आर एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर ट्रू, क्योंकि आपको मिक्सचर रखना पड़ेगा। यस कब मेरे पास टाइम है कि मैं इसकी सुनूं और कब मेरे पास टाइम नहीं है। इस समय एक्शन अभी लेना है, अभी जाना है, अभी एलोकेट करनी है ड्यूटीज, न्यूअर ड्यूटीज हैं। ये डेमोक्रेसी का हर तरह का एक मिक्सचर है, ठीक है ना। लेकिन मैं, हाँ जी सर अजय जी, मैंने इसीलिए जो है शुरुआती तौर पे मैं बोला था रिगार्डिंग की जो डिसीजन है, ओपिनियन और जो व्यू जो लेने के लिए अंडर कमांड से, इट डजंट मैटर कि हम जो ओपिनियन व्यू ले रहे हैं तो उनको कमांड दे रहे हैं, कलेक्टिव कमांड कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं, बट डिसीजन तो मेरा ही होगा। ओपिनियन व्यू हम ले रहे हैं बट डिसीजन तो मेरा ही होगा। खुश नसीब हैं आप कि अड़ गए हैं कि मैं सुन लूंगा लेकिन डिसीजन मेरा ही होगा। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अच्छा ये भी बात ठीक है, अच्छा ये भी बात ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं। अच्छा ऐसे करते अभी डिस्बर्स कर लेते, 15 मिनट में मिलते हैं दोबारा। तो क्या हुआ, डिसीजन पेंडिंग हो गया। तीसरा, आप दूसरे से इन्फ्लुएंस हो गए। चौथा, जो इन्फ्लुएंस हुए हैं इसलिए हुए हैं कि वो लॉजिकली डिफरेंट है या वो आपके ऊपर बुली करना चाहता है आपको। सो यू हैव टू थिंक कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, क्या मैं बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाता हूं या मैं लॉजिकल हूं, मैं दृढ़ हूं पर मैं ढीठ नहीं हूं। सो यू हैव टू बी वाइज इमोशनली, यू हैव टू बी वाइज इमोशनली। अरुण जी मैं ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, बताइए। मैम आई हैव समथिंग टू ऐड ओवर हियर। सर हाँ जी ऐड करिए। मैं कहता हूँ मैडम, ये जो है डिसीजन जो है आप सबकी सुने, एकदम सही बोल, सबकी सुन लें और उसके बाद जो वाइज डिसीजन हो सकता है, जो लॉजिकल डिसीजन हो सकता है, यू कैन गिव द लॉजिकल डिसीजन। सबकी नहीं सुन सकते, बटालियन बहुत बड़ा है, सब वर्ड मत यूज करिए। आपके 2-3 जो कॉलीग्स हैं उस लेवल के, आप सिर्फ उनको सुनेंगे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये नहीं कि अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि हर एक के व्यूज मिलते नहीं है। एंड हर एक मीन्स दोस 2-3 इन कमांड हायरार्किकली डिस्टिंक्ट। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुरेश जी, कैसे हो? मैम एक बात मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, 2 बोलिए। ये बीएसएफ में मैम काम कितना भी हो, कोई काम से परेशान नहीं है जी, लोग कमांड से परेशान है, ये सीधी सीधी बात। तो तभी तो ये सेशन हो रहा है।
हाँ, काम से कोई कमांड नहीं से परेशान है, परेशान कमांड से क्यों परेशान हैं? है। वो आप कमांड कमांड, में चाहे मेरे ऊपर हो चाहे मेरे नीचे हो। सर आप कमांड से परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपका कमांड जो है वो ह्यूमैनिटी से सीरियसली कमांड नहीं कर पाता, तभी यस आप मैम, परेशान हैं। लेकिन यस एक मैम, और भी वजह हो सकती है, कमांडेंट जो है आपका वो इनह्यूमन है, यस। या ये मेरे या आपकी पर्सनालिटी एंटी अथॉरिटी है, नहीं, ये आप ह्यूमन तो उसको नहीं एक्सेप्ट कहेंगे नहीं करते। मैम। आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट कीजिए, आप कहाँ हैं? आप उसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं लॉजिकली, या उसके साथ इसलिए डिसएग्री कर रहे हैं क्योंकि आप एंटी अथॉरिटी हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मान जी, हाँ जी। मैम इट डिपेंड्स कि जो आप कुर्सी के उस साइड बैठे हैं इस साइड बैठे हैं, जब आप दूसरी साइड बैठे होते हैं तो आप सोचते हैं कि हर कोई आपको सुने, आपकी बात को इम्पोर्टेंस दें, आपके हिसाब से जो है चले। लेकिन जब आप ऑपोजिट साइड बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि जो है कि नहीं नहीं, आई एम द राइट, आई एम राइट। तो और जब दिस इज मान द जी, कंसेप्ट अगर ओनली। आप सामने बैठे हैं ऑन द अदर साइड तो आप कमांड कर ही नहीं सकते। आप सही, कमांड वो है जो इस तरफ बैठा है, बिल्कुल तो मैम, जो लेकिन कमांडेंट है उसके डिसीजंस क्या ठीक आ रहे लेकिन हैं? जब हम अपने से जैसे कि अभी बात कर रहे हैं मिस्टर सोमकर कि जो कमांड है, कमांड हमसे भी ऊपर कमांड है, जब हम दूसरी साइड बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, वो सामने वाला गलत है, वो मेरी सुन नहीं लेकिन रहा। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एंगर से करते हैं, गाली गलौज से करते हैं, एंटी अथॉरिटी बन के करते हैं, रिबेल करके बनते हैं। आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस जो सुने चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे अगर हैं सारे ये हमारी इलॉजिकल है तो पर्सनैलिटी क्या के पार्ट्स हैं, करोगे? हर एक की पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, जिसको जहां मौका मिलता है वो उस तरह से तो एक्सप्रेस कर आपको देता है। इम्प्रूव करना है ना आपको, यस तभी तो आप सर। कमांडेंट से और ऊपर जाएंगे ना। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगर मैं, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, रमेश जी। हाँ जी, एक दो शब्द बोलूं मैम? बोलिए सर। मैम, बीइंग ए कमांडर, we every rather we all everyone know कि what is my area of strength and what is my area of weakness, श्योर। and what we have to give more prioritize and how we can tackle it. तो जैसे आपने बताया कि कमांडेंट ठीक है, अपने जगह पर अपने कमांडर हैं, सब कुछ है, हम पूरे बटालियन के सुनते हैं, तो बटालियन का मतलब उसमें 2-3 ही लोग होते हैं जो कि हम उनसे अपने व्यू को शेयर करके उनसे बोलते हैं कि क्या हो सही हो सकता है, क्या गलत है। अल्टीमेटली उन्हीं का ही सुनते हैं, और बहुत कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जो कि हमें इमीडिएट क्विक सेल्फ डिसीजन ही लेना पड़ता है, उसमें किसी का नहीं सुनना होता है। और बहुत कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर हमें एक लॉन्ग टर्म में होता है या कुछ और इस तरह की बातें होती है, तो उसमें हम एक व्यू लेते हैं, तो उसमें सो कमांडेंट सर, जब आप ही को व्यू लेना है और आप ही को डिसीजन लेना है, आशा करती हूँ कि ह्यूमन डिसीजंस, वर्क रिलेटेड डिसीजंस, taking the organization and its role into account. Thank you very much. God bless you. And Tanvi ji, thank you for your support. Without you, I couldn't have managed anything today. And Pramod ji, क्षमा करना अगर आप नाराज हैं किसी बात पे, पर मैं सारे कमांडेंट से एक क्षमा जरूर करूंगी, अगर आपके थॉट्स में मैं खरी नहीं उतरी, क्षमा करना, यही मैं हूँ। Thank you very much for this opportunity. Thank you. God bless you. welcome. Thank you so much, Aruna ma'am. God bless you. God bless you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful session. AITD team has taken note. We'll try incorporate to give you more time and space to interact with our commandants. Thank you so much. Thank you so much. I'm fine. Thank you. God bless you. God Thank you bless for you. the wonderful session. Yes. To our commandants, sirs, we'll now take a short break, 10-minute tea break. We'll come back for our next session on understanding self. Like Aruna ma'am has built up such a great foundation कि हमको अपने खुद के personalities, खुद के self reflection करना important है.
आज के next पूरे आप काम session करो आप यार। understanding self is on that. So we'll take a short 10-minute break. I think we can resume at 10:58. Tanvi, I think that is okay. 11. Yes. So we'll come back at 10:58. 10:58. Very sorry. I was really enjoying your discussion, but we have to move forward with our session. नहीं वो करेंगे वो कोई इशू नहीं है, ये तो हमारा टाइम चलता रहता है कोई। Yes. I'm sorry to interject you. Yes. Hamara, welcome back everyone. I hope you got some time to I see that एक तो हम बहुत ही अच्छा लगता है when we see that the discussions regarding whether you agree with a subject or not, whether you disagree, everything gets carried over and you are already discussing on things that we have explored together. So that is something that we are always very happy about, and I'm sure we will see this throughout in our 12-day journey as well. अभी हमारा जो सेशन है सर, ये on understanding self बहुत reflective है. It's very exploratory. We'll explore ourselves through little psychological and behavioral insights, share our individual narratives. थोड़े psychometrics भी करेंगे, इसलिए कल आप लोगों को बुलाता है. I hope you have the handbook with you, and we will deliberate on the idea of self. हमारे हम पे थोड़ा it's a bit reflective. Hoping that ये जो takeaways हम लेते हैं इस site से, we learn something about ourselves, even if it is the minutest. Whether we want to act on it or not, it's not important. But if we get to know something about ourselves as well, it's that we haven't explored thorough deeply. Even if it was known, then we can say that it's a very fruitful and fun session for us. Is session ko lene ke liye, to facilitate it, we have with us Dr. Sonali. Dr. Sonali has 18 years of experience. Academy, ma'am has taught management, education, organizational behavior, exploring themes of emotional intelligence, stress management, team building. Ma'am is currently working as an assistant professor at Rick School of Built Environment in Amity, Mumbai. And she has been associated with AITD BSF interventions for quite some time now. So, ma'am, welcome to the program. I'd like to hand over the proceedings to you. Thank you so much, Somide, for that wonderful introduction. Aur sabhi ko namaskar. Good morning. Namaste. आपका मैंने इंट्रोडक्शन सुना, वंडरफुल. और इसके पहले जो मैम ने लिया था, was there, and उन्होंने बहुत बढ़िया एक ग्राउंड सेट कर दिया है हमारे लिए to carry forward. And I really मान सिंह जी, गुरिंदर सिंह जी, प्रमोद जी, आपका मैंने जो conversation सुना, it was really exciting, and I think this session will help us to answer few of the questions. But these are hardships, ma'am, which we are facing or boys are facing. Conversation in house. I got to know, Gurinder ji, what you're trying to communicate, what message you're trying to transmit. I'm not from forces, but yeah, do understand. But I would like to tell one thing, wherever you are, whoever you are, every person on this earth have their own struggles. Everybody is fighting their own battle. You all have different battles. People have different battles, and some surge and they become victorious over it. Some cannot fight back. And battlefield wala jo hota hai na, physical warfare, it is very easy. Haar jeet samajh jati hai. What is the outcome you can understand, but the person who is having a internal conflict, personal dealing with their own anxieties, it is very difficult to understand what is the outcome of that particular situation. And many a times you become instrumental. आप एक channel हो जाते हो जहाँ से आप किसी को शायद you pull them out of that battle and make them realize sometimes it's not easy, क्योंकि India में अभी भी mental illness is having a stigma even today. It's not taken in a right way कि mental sickness यानी हम लोग पागल बोल देते. But it is not all about being pagal. It is also sometimes making decisions. We make thousands of decisions in one day. Right from the time we get up, when you open our eyes, should I get up from my bed or not? वहाँ से decision making शुरू हो जाता है till we lie down on our beds. So decision making is a very important aspect of a human life every day. And plus, if I am not knowing myself, then it's difficult to make decisions. So with this,
we will start our session, which is called as Knowing Yourself. I'll just open this. I'll share my screen. Understanding self. Okay, this is the thing, and I would really want all of you all. I'm aware you all are very participative and a very interactive audience, and that is a wonderful thing. Ma'am, here I would interrupt you. We can be more participative if we are not online. If it is an offline course, you can see the enthusiasm in all the officers over here, ma'am. So we would be suggesting it as an offline course so that the participation when we are physically present over there would be much more higher. Soumya Dev, please take this as a suggestion from the participants that yes, our audience wants to have a physical interaction. And one more thing, ma'am. Sorry interrupting you, ma'am. Sorry interrupting you, but one more thing I would like to have, if possible, another session from Mrs. Aruna, ma'am. Because there are certain things which we would like to clarify regarding human behavior, psychology about our men. Because that thing wasn't covered, so we would like to cover those also. Okay. So if it is possible, then kindly add that. Sure. Govinda sir, noted. Thank you so much. We always, I know you reiterate, we want to have this offline session. Trust me, we try very much. We try every year, but it's difficult at times, and we have taken note of your request, Aruna ma'am. We'll try our best and see what can happen with that. For now, Sonali ma'am, please go ahead. Thank you, Soumya Dev. Thank you, Gurinder ji. Your advice, I mean, मैंने direct कर दिया, channelize कर दिया आपकी suggestion or request को. Hopefully, it will be fruitful in the days to come. So, to begin with, understanding self. I don't remember once there was one author when उनकी book पढ़ रही थी. He says, he did a journey of Ganges, river Ganges, and he said that journey was much more easier than the journey within myself. हमारा खुद को जानना एक ऐसा सफर है जो हमेशा हमको चौंका देता है. अरे, can I be like this? And it happens with me on many occasions. It has happened that every time हमारा जीवन जो है, our life is it takes twists and turns at various situations. जैसे कि let me take an anecdote of an onion. जब onion खोलते हो तो उसके जो कई layers होते, परत होती है. We keep opening and still there's a new layer, which is more soft, more tender, more fresh, more juicy. And what I was at a certain age and what I'm today is completely different. So that's a journey. वो सफर मैंने आज तक तय किया मेरे जीवन के इस पड़ाव तक. हमारा हर पड़ाव जो होता है जीवन का, एक नया सेल्फ हम लोग खुद को पाते हैं. It could be because of environment, situation, new learnings that we have in our life. Life-changing experiences that we go through, okay, but there are certain things that remain constant. So आज का जो पूरा session होगा, today's interaction, it would be more upon pondering upon our self introspection. आत्म परीक्षण बोल सकते हो आप एक तरीके से, या तो फिर खुद को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि as a person what Sonali is, or as a person what Gurinder ji hai ya Pramod ji hai. So we are going to start understanding self, and I request all the participants to please switch on your camera on your laptop, and you please participate. And if you're comfortable with the chat, definitely you can also chat with me. So we begin with a journey called as understanding self. इसमें I would request you all to have your handbook ready, because यहाँ पे कई psychometric tests है जो हम करने वाले हैं, और वो सारे के सारे एक दूसरे से connected है. Okay? At the end of the day, when हम वो पूरा एक हमारा प्रोफाइल बनेगा, तो आपको पता चलेगा, और आने वाले दिनों में जो आपके ट्रेनिंग्स होने वाले हैं, you have to keep that profile with you. So ऐसा नहीं कि ये प्रोफाइल आज के लिए खत्म हो जाएगा. No, as we go through this training, this workshop, you are going to explore many other facets of your own personality, of your own self, and you will have to keep adding over there. Okay, and at the end of this training, you will be able to see your profile. Again, ये जो profile है, it will help us. It's not to show our weakness. आप इस गलतफहमी मत रहिए कि कोई weakness दिखाएगा या हमारी कमजोरी होगी. बिल्कुल नहीं.
हमारा जो लाइफ होता है एक व्हील है, जो कई उसके जो पड़ाव होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, कई बार लाइट हो जाते हैं, तो हमें बैलेंस करना है। एक बार हम समझ जाए कि ये मेरा जीवन किस तरफ चल रहा है और हाउ डू आई वांट माय लाइफ टू बी एंड हाउ डू आई बैलेंस इट आउट ऑफ different facets. When I understand about myself, I'll in a better position to balance out all the life aspects of my life and lead a life which is very purposeful and meaningful. और जो हमारे लाइफ का उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो पर्पस है, जो लक्ष्य है, वो हम लोग अचीव कर पाएंगे at the end of it. Okay, so this is all. So please keep your pen, pencil and the handbook handy. जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे, we'll start doing these activities, and you need not share the results with any one of us. It is only for yourself. And one thing, ये once आपने ये result कर लिया तो ये नहीं हो जाता है कि this is what I am. No, human brain is so advanced. It is one of the most complex organ in the world. शायद AI भी बीट नहीं कर पाएगा ह्यूमन ब्रेन को, बट आवर ब्रेन इज सो कॉम्प्लेक्स दैट जब हमको हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है हमें क्या चाहिए, आवर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी अचीव दैट. And that is the beauty of a human brain, because human brain is not just cognitive skills, not just emotional, not just logical reasoning. It is a wonderful wiring which creator has made, and we can cope with any difficulty, we can overcome any kind of obstacles in our life. So it is just an awareness. Understanding self is हम खुद को aware करेंगे हमारे नेचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ट्रेट्स के बारे में, so that we can work on these areas and overcome all the difficulties, obstacles that could be having negative impact on our life, negative impact on a professional or a personal or a family or a social life. So let's begin with this journey. So this is what we are going to do now. What I wanted to be, what is I, who am I, then moves to what are my values in my life. So any person, every person has a set of values, will identify in who am I. My values impact my attitude, and that attitude converts into behavior. And then we're going to see locus of control. There are some psychometric tests over here. Efficacy, how if what is my personal efficacy in which area. And then we move on to something called as quality of life. And we're going to check about our quality of life and how we are going to go ahead. How do we look forward in achieving myself? And your profile will be generated. And your profile over here will be only for today's session, but you continue to keep adding. There's a profile wheel. You keep adding things as the workshops goes on. And then those will help you to achieve better results. So let's begin. And now this is a question context. I'm setting a context. Visualize that you are settled in life. You are happy, cheerful, satisfied with how your personal and professional life has shaped. So describe what your life looks like and how do you feel about it. Now this is something आप लोगों को share करना है कि how do you feel about yourself today, right now, at this moment? I'm not talking about past, currently, be in the current situation. Happy and feel confident. Arunji, you're confident. Okay, great. And now when you look back, आप जब अपने लाइफ के जर्नी में देखते हो तो क्या लगता है? नहीं, पहले उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे और डिसीजन लेने में हमें दिक्कत होती थी. जी. So your decision making has gone wonderful. You become confident. Anybody else? Satisfying. Feel good and happy. मैडम डिसीजन वही जो सर ने बोला है कि कॉन्फिडेंस लेने में अभी थोड़ा सा इजी हो गया है, अब लेते हैं. और दूसरा फाइनेंशियली हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है, फाइनेंशियली भी है. स्टेबिलिटी आई है. वंडरफुल. अजय कुमार जी सिंह स्टेबिलिटी. यहाँ पर चैट बॉक्स पे लिखा है वीरेंद्र पाल सिंह जी ने सैटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट. जब सैटिस्फैक्शन लगता है, हाउ डू यू फील? सुरेश जी कह रहे लाइफ इज मूविंग स्मूथली.
Guys, Good morning, Mahendra Singh ji. I confess something. गिरी सर एंड मिस्टर मैथिल, Yes, sir. मैं चाहूंगा कि इस मैडम जो क्वेश्चन है मैडम, इस पर थोड़ा फोकस करें आप लोग प्लीज। हमारा बिल्कुल सही बात है फोकस सर। हमारा फोकस अभी तुम्हारे में रखा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन है कि हाउ यू आर फीलिंग एंड डिस्क्राइब व्हाट योर लाइफ प्रेजेंटली and after having the 20 years 27 years of the service. I will describe in one word: contented. Okay, Giriji, contented. Okay, but that is you understand the meaning of contented. अगर हमको समझना है what kind of contentment you have, तो आप describe करिए please. Widen. Widen. 30 years Yes, of service. Neeraj ji, you can And, go ahead. Yeah, ma'am. Thank you. I'm settled. I'm happy, but still I'm worried. Worries are a lot many. I worry about my son. Worried about my family. I worry about my undercommand. These are the worries, despite of my being settled in life and being happy also. I'm satisfied otherwise. I don't have any professional problem. Neither Okay, any personal professionally you problem. are satisfied. In Yeah. personal life, you do have a bit of concerns. No, personally also, in personal life, I am settled in a sense. I'm not that, but still I have worries. That is life. I can't be without worries. That is what I feel. You need to have a bit amount of stress. Stress keeps you growing and going ahead. True. Let me put it in that way, ma'am. Ji. Personally, I'm feeling very satisfied as far as Okay. status is concerned. But there are situations which will be arising in future. That will be a cause of worry. And having a satisfied professional life, I lost many things in my personal life. Being connected to the organization, there are things. Personal life travels in different way for the different people. But the time which I have spent for the professional life has taken some time. Some toll on your personal life. Toll on my personal life. And there are issues in that, especially with the kids. Especially also these kind of things at right now, which are quite worrisome. Yeah, that's we'll look at it today. Madam, what I feel that it was challenging, it is still challenging, and I expect challenges. So challenges always comes, and we are ready to face it. So we are with challenges, ma'am. Well said. I have few responses in the chat box, which says T. Mohanji is telling feel happy and satisfied. Ghanshyamji is stated happy and satisfied. Uday Chauhanji has mentioned surrounded with positive people. Well, Rajesh Kumar Yadav ji ne kaha hai happy, contented and at peace. Okay, that's wonderful. Confident in taking decisions by Ramesh Ramji. Maheshwarji saying in position where I can take decisions at my own. Oh, that's wonderful, Mr. Maheshwar. And Antaryami Kumar ji ne kaha hai, so far contended a lot. However, to grow, sky is the boundary. Absolutely, I agree with you. Well said. Mansingh ji is saying satisfying and widened horizon of looking to things. Oh, wow, that's a new perspective. So as you grow in experience, as you grow up in life, आपका जो नजरिया है वो बढ़ जाता है. So how many of you agree with that? With every life का एक पड़ाव जब पार होता है, हमारा horizon, हमारा नजरिया जो है जीवन के प्रति वो बढ़ता जाता है. हम किस तरह से चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह सिचुएशन को डील करते हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है या उसका जो नजरिया है या जो तरीका है वो हमारा वाइडेंड हो जाता है. यस मान सिंह जी. देन अशोक सिंह जी ने कहा है वंडरफुल एट दिस स्टेज आई कैन टेक एनी चैलेंज. नाउ दैट शोज दैट यू आर ऑल सेट टू टेक एनी काइंड ऑफ चैलेंज. दैट्स अ ग्रोथ. ग्रोइंग is a sign of living, live and ticking. GR Singh ने कहा है
happy and contented on the personal front and more matured person on the professional front. Absolutely. Narendra Singh ji ne kaha hai, overall satisfied but still dealing with unpredicted and predictable problems coming out in personal and professional life, but that does not make me less satisfied. Okay, so yes, that is so very true that we are all settled in life, we are happy, we are contented. तो इसका जो conclusion मैं निकाल सकती हूँ ये है कि हम सब खुश हैं, समाधानी है जीवन में, परंतु जीवन सरल नहीं है. Today also I may have some challenges, but I am better equipped to deal with them. And yes, so इसी आधार पे we move on to the next slide, which is it frozen? Yeah. Now this is a question I really want you all to take a pause and think about it. If tomorrow is the end of the world, what regrets you would die with in your personal as well as your professional? Imagine, let me give you a scenario which, one of my seniors, हमारे deputy pro vice chancellor कई बार कहते हैं कि सोचिए कि बहुत बड़ा asteroid is going to hit our world and our world is going to come to an end और हमारे पास कुछ ही समय है. So अगर हमको लगता है कि कल दुनिया खत्म होने वाली है forever and everybody is going to die including me, so what regrets will I die with in my personal and professional life? अगर आप थोड़ा सा jot down करें, you can take few seconds, maybe 15 to 16 odd seconds, and we can start discussing about it. अगर कोई तैयार है, so you can start sharing your thoughts on this. Imagine कल दुनिया खत्म होने वाली है, बहुत बड़ा उल्कापात होने वाली है. जी, Ashwini ji, you were saying something? Would I have given more time to my family? I can't hear you. Could you please be louder? Could have given more time to my family. Okay, that's a regret at a personal end. Professional? Yes. Nothing. Okay. Nothing. Satisfied. Ma'am. जी हाँ, बताइए सर जी. No regrets. I will wait for the another life. Oh, wonderful. Ajay Kumar ji is saying, now I'm taking decision very effectively, having confidence, financial stability to take decisions to under my command and better. Okay, no. वो पहले वाला था. I missed out on that. Sorry जी. Virendra Giri ji ने कहा है no regrets. Narendra Singh ji कह रहे हैं nothing in personal. Professional also nothing except some of the cases of personal I have dismissed from service, which I think they themselves forced upon me. Okay. But to do for the personal, I do more to my family and my children, and professional nothing. Okay, professionally you're completely satisfied. You've given 100% to your professional life, so no regrets. But personally, you would like to give more time to your family. Ma'am, I would like to say something other, sir. जी हाँ, बोलिए sir. In personal, I think I will pray for God not to happen so. And professional, I will tell everyone to pray for God कि ऐसा ना हो. ओके, ऐसा ना हो. मैं भी दुआ करती, मुझे भी जीना है, ऐसा तो नहीं है, बट एक कई बार हमको पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए अगर कल ये दुनिया का अंत है तो मेरा जीवन में क्या मैंने पाया है, क्या खोया है. ये थोड़ा ना इन्वेंटरी स्टॉक लेना जरूरी है कभी कभी. From my side, I may not able to see the happiness of next generation, what I foresee, and also I could miss travel
And in professional front, ma'am, there are many compartmental that I have made in my mind that should be implemented in present form, and that will not be get implemented, and I could not deliver in other positions or in some higher positions in my professional Okay, life. so that you did not grow in your hierarchy, or maybe you could have been better at delivering or serving your force in a very different way. Ma'am, हाँ जी, मान सिंह जी. I'm personal front, not able to contribute to the society in any way. Could you repeat that once again, please? Not able to contribute to the society in any way. Okay, you have that kind of a regret in your personal life that you wanted to contribute to the society. However, अभी कल खत्म होने वाला है दुनिया, तो नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. I can see नीरज जी ने हाथ ऊपर किया था for a Secondly, long ma'am, time. professional. हाँ, एक मिनट, मान सिंह जी आप पूरा कीजिए, फिर नीरज सर बोल देंगे. I have a regret that I have not implemented my ideas when I came into position to work, to implement them effectively for the troops, Okay. for my battalion. Okay, wonderful. और कुछ है मान सिंह जी? No, thank you very much. Okay, thank you sir for your sharing your thoughts on this point. नीरज जी आप बताइए. या मैम, मैं बोलना चाह रहा था, आपका जो प्रश्न था मैम कि जी सारी हाँ. दुनिया ही खत्म हो रही है, तो मेरा कोई रिग्रेट नहीं है. रिग्रेट मेरा रिलेटिव होता. अगर सिर्फ अकेला मैं मरता तो ऊपर जाके शायद लगता कि हाँ बाकियों के लिए कुछ नहीं कर पाया. जब सारे ही मर रहे हैं तो सारे ऊपर चलेंगे साथ में, तो कोई रिलेटिव कोई मेरे को रिग्रेट नहीं करेगा. Okay, that's a very nice perspective. सभी चल रहे तो साथ ही में चलो, but I don't know what is there after my death, But एक point बताया था. हाँ जी. Thought of unity. Thought of unity, yes, well said. प्रोफेशनली इंडिया पाकिस्तान नहीं रहेगा मैम, इंडिया बांग्लादेश नहीं रहेगा, तो प्रोफेशनली भी ऐसा कुछ कोई No border issues, huh? No border issues. True. यहाँ पे कुछ comments आए हैं, जैसे वीरेंद्र पाल सिंह जी ने कहा है, on personal front few tasks yet to accomplish, however professionally I have done whatever expected from me, means I am satisfied. महेश्वर जी कह रहे हैं professional could not provide basic amenities to my troops. Okay. और उसको thumbs up दिया है नीरज जी ने. राजेश कुमार is also जी कह रहे हैं I wish I had spent more time with people I love. Professional, no regrets. Pramod ji, happy and satisfied with professional life and little bit worried about the professional. Secondly, in personal life, worried about people and settlement in society. Antaryamini ji फिर से कहा, personal, I could have traveled more and explored more on the earth. Professional, nothing. True. GR Singh ji ने कहा है, personal, to have seen my daughters well settled in their lives. Professional, miles and miles to go before I sleep. True. Personal, no regrets, I'm satisfied. Professional front, nothing. Ashok Singh ji ने कहा है ये. And Neeraj ji ने फिर कहा, since entire world is going to end, no one to relate for any regrets. I feel it is relative. Okay. Sanjay Kumar ji कह रहे हैं, could give more time to parents and want to play golf with Tiger Woods. Oh, that's a wonderful. क्या घनश्याम जी? मैं कुछ कहना चाहता हूँ. जी कहिए सर. के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो खत्म होने वाली है. और प्रोफेशनल लाइफ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन जवानों का मेरे हाथ से नुकसान हुआ, सजा हुई है, जो उनके परिवार को नुकसान हुआ है, मैं उस दुख को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ. So that is a regret you have. Okay. Ashwini Maithili ji कह रहे, could have given more time for. जी बताइए सर. एक क्वेरी ये है कि जैसे once I think जो आपने क्वेश्चन प्रोजेक्ट किया है and then once I start visualizing the thing, और वो मैं नीरज लखनपाल के थॉट प्रोसेस में जाता हूँ कि in case I die, not the entire world goes ends there. तो पर्सनल लेवल पे मुझे कोई ऐसा नहीं है कि रिग्रेट है कि आई शुड हैव डन दिस और मुझे ऐसा करना चाहिए था या फिनिश टास्क रह गए हैं मेरे, इवन दो मेरे बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, सेटल नहीं है, बट मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो कुछ करना है कर लेंगे. बट
मेरे हो सकता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरे जो बच्चे हैं हो सकता है उनके मन में हो कि फादर ने मुझे हमें इतना टाइम नहीं दिया। वाइफ या पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है कि माय फादर हैज नॉट गिवन मी, या मेरे माय सन हैज नॉट गिवन मी सफिशिएंट टाइम, जो टाइम देना चाहिए था। हो सकता है उनका कंसर्न हो, बट मेरा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्योंकि जब मैं विजुलाइज करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, कोई रिग्रेट नहीं है मेरा, मैंने जो किया ठीक किया, जो भी किया था, जब कोई प्रॉब्लम आई सॉल्व किया, हुआ नहीं हुआ अनदर मैटर, बट एज ऑन डेट, आज की डेट में अगर कल दुनिया खत्म होती है तो मुझे रिग्रेट नहीं है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे परिवार को रिग्रेट हो सकता है कि इनको और टाइम देना चाहिए था। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो एम्बिग्विटी सी आ रही है थॉट प्रोसेस में। नरेंद्र सिंह जी, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप एक बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है। हम लोग मेरा स्पेशलाइजेशन इमोशनल इंटेलिजेंस में है, एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ EQ, इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस, इज being empathetic, getting into somebody else's shoe and understanding how they feel. तो नरेंद्र सिंह जी, आपने बाजी ऑलरेडी मार ली है जब आपने सोचा कि ये तो मेरा नजरिया हो गया। What about my wife? What about my children? How they look at it? आपने ऑलरेडी उनके लिए सोच लिया है, and I'm sure your wife and your children do understand what kind of a person you are. So you don't have to regret about it, because you are an empathetic person. One of the construct to be a person with high EQ is to have empathy. Empathy का मतलब होता है not showing sympathy, अरे बेचारा, not that kind of thing. Empathy is getting into their shoe, understanding how they feel. और already आप अपने पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए feel कर रहे हैं, और ये जो फीलिंग्स होती है छिपती नहीं है ना, फैमिली और स्पेशली फैमिली से कभी नहीं छिपती है। सो नो, प्लीज डोंट हैव द रिग्रेट्स, दैट इज व्हाट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। सो वेरी वेल डन, एंड यू आर अ पर्सन हु इज योर EQ इज प्रीटी हाई, बिकॉज आप दूसरे के नजरिए से, दूसरे के जगह पे जाके सोचते हो। सो डोंट वरी, इसके लिए कोई ये नहीं है, आपकी फैमिली समझ लेगी। राजेश कुमार जी, आपने हाथ रेज किया है। यस मैम। जी सर, बोलिए। Once man the world is going to its end, then what is personal, what is professional? ट्रू, यू आर यू, आप ही हो। आप ही के अंदर जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सब एक हो जाता है, सब आप ही का है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो पर्सनल और प्रोफेशनल क्या, कोई फैमिली, बीवी, डिपार्टमेंट, ये वो, हाँ, ना वो रहेगा ना हम रहेंगे। सही बात है सर, ये भी एक बढ़िया, बट देखिए कितने सारे पर्सपेक्टिव निकल कर आए हैं। जस्ट वन स्टेटमेंट, हर एक का अपना अपना नजरिया है, हर एक अपने तरीके से दुनिया को देखता है, सिचुएशन को देखता है। आपका, जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये तो मैं तो कंटेंट हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट माय फैमिली? ओके, ये उनका वे ऑफ थिंकिंग है। सो वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आवरसेल्फ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हम लोग किस, और एंड इट इज नथिंग बैड। प्लीज ऐसा मत सोचिए कि एक ने अच्छा किया तो मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दैट इज द वे वी आर, दैट इज हाउ वी आर अप्रोचिंग द सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर हम समझ में आ रहा है कि कल अंत होने वाला है। इमीडिएटली वी आर टेकिंग स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ आवर लाइफ। क्या किया मैंने आज तक, बचपन से लेके आज तक, कहाँ तक मैंने जर्नी किया, एंड हाउ एम आई। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ सैटिस्फाइड आर यू? ओके, सो यस, देयर वाज अ सैटिस्फैक्शन, बट इमीडिएटली व्हेन मैंने ये क्वेश्चन कहा, कल दुनिया का अंत है, हम सभी जाने मरने वाले हैं, इमीडिएटली आप लोग के थॉट प्रोसेस इज डाइवर्टेड, एंड यू कैन सी हाउ यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। तो यहाँ तक हम लोग का वी हैड अ डीप डिस्कशन इंडीड। और यहाँ पे कुछ और भी आई कैन रीड सम ऑन द चैट। डॉक्टर सुरेश सोनकर कह रहे हैं, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड विथ माई कमांड, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड विथ माई, ओके, सेम थिंग रिपीटेड। आपने कहा नथिंग, ओके, सो यस, पर्सनल यू नीड टू टेक अ स्टॉक। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कल वाकई में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली वी नीड टू थिंक अबाउट इट एंड टेक अ स्टॉक अबाउट योरसेल्फ। जैसे कई बार कुछ लोगों ने कहा है कि शायद मैंने किसी के साथ गलत किया है एंड आई हैव रिग्रेट अबाउट इट, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दैट? इट्स अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन process or an exercise to understand what regrets we have, and accordingly we can take corrective
measures. I'll just give a small anecdote. हम लोग जब college में बच्चों को MBA especially, we prepare them for interviews. So I ask them, what is your weakness? मैं strength नहीं पूछती. Tell me your weakness. वो बता देते हैं. फिर मैं बोलती हूँ कि what did you do with your weakness? You sat down with it? Then they have no answer. फिर बताना पड़ता है. अगर आपको बुखार आ गया, if you're fallen sick, क्या करोगे आप? If you have got a fever, तो कहते हैं मैम कोई टैबलेट ले लेंगे. अगर बुखार परसिस्ट रहा तो विल गो टू डॉक्टर एंड टेक मेडिकेशन. आई सेड राइट. तो वीकनेस भी जो है हमारा अबनॉर्मल थिंग है लाइक बॉडी में. अगर वीकनेस आइडेंटिफाई किया है तो वीकनेस को लेके बैठना नहीं है. वी हैव टू वर्क ऑन दैट वीकनेस सो दैट वी कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ. So जब भी कोई हम लोग, now this is a time when we are understanding ourselves and we see there are certain lacuna, there are certain, I won't say failures, they're not failures, they're always experiences, and how we can work towards making it positive and better. So this leads us to the next question. If tomorrow is the end of the world, then what immense satisfaction you would leave this world with? If tomorrow is the end of the world, पहले हमने regrets के बारे में बात किया. अब हम satisfaction, immense satisfaction, एकदम पूरी तरह से भरपूर समाधानी जीवन जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं. So, what will be that? What will that be? If tomorrow is the end of the world, then what immense satisfaction you would leave this world with? मैं बताऊं मैडम? जी सर. अपने मेरे नेटवर्क में इश्यू है या सर का स्क्रीन फ्रीज हो गया? अरुण जी, कैन यू हियर मी? मैडम यस. हाँ बोलिए सर. मैं कह रहा था कि मैं एक सिक्योर लाइफ अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाऊंगा. That's your personal satisfaction. हाँ, ये पर्सनल लेवल पे है. प्रोफेशनली जो जहाँ मुझे पहुंचना था वहां तक मैं पहुंच गया. So you're satisfied completely? Yeah, satisfied. Anybody else? मैम पर्सनल फ्रंट पे ये रिग्रेट रहेगा कि I could not be able to give sufficient time to my family. Okay. प्रोफेशनल फ्रंट पे I have given my best. कोई रिग्रेट नहीं रहेगा. प्रोफेशनल फ्रंट पे मैंने बहुत कुछ कर लिया. Oh great. Fantastic. और किसी को ऐड करना है? करना चाहता हूँ. Nothing matters. तो काफी चैलेंजेस हैं अभी सेटल होना बाकी है. बच्चे का फ्यूचर है, उसमें काफी चिंताएं हैं. सोसाइटी में रिटायरमेंट के बाद में सोसाइटी में भी जो है एडजस्ट होना है, वो एक चैलेंज है. बाकी प्रोफेशनली जरूर है. ऑर्गेनाइजेशनल जिस टाइप की सोच है, DR जो है मेंबर ऑफ ये जो है प्रेस्टिजियस फोर्स एंड फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. डिफेंस जो है सिक्योरिटी हम लोग ऑन कर रहे हैं कंट्री की, लेकिन जिस हिसाब से डिसीजन होते हैं कि जो है किसी तरह की कॉन्क्रीट है ही नहीं. काफी डिलेमा है. पॉलिसी जो है क्लियर नहीं है. पॉलिसी के ऊपर जो है फौरी इलाज के तौर पे इंस्ट्रक्शन पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंटल फायर हो गया, अब फायर की कोई भी जो है उसमें नहीं जाएगा डेप्थ में. इंक्वायरी ऑर्डर होगी, लेकिन इंक्वायरी होने के पहले ही जो है एक जो है ऑर्डर पास हो जाएगा. इस तरह के जो है काफी एम्बिगुइटी जो है इंस्ट्रक्शंस में है. इंस्ट्रक्शन सुपरसीड नहीं होते हैं. इंस्ट्रक्शन सुपरसीड नहीं होते हैं. तो ऐसे जो है वेक इंस्ट्रक्शन के एटमॉस्फेयर में कंट्री की सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है. जी. तो इस मामले में थोड़ा सा चिंतित है कि हमारे इतने कमांडर हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं, और एक डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट
और जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव रोल में आ गए हैं। जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव रोल में आ चुके हैं जी। तो ऐसे में कमांड जो है इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इसको जो है, जो चीज जो है पावरफुल होना चाहिए, उसे डे बाय डे जो है कमजोर किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा चिंता रहती है कि हाँ Madam, regarding this issue, जी as सर। a professional, whatever I wanted, I achieved. जी सर। And as a personal, whatever I want to do my family, I did. So you are going to be satisfied, immensely So satisfied. I'm very much satisfied. Madam, in personal Ji. front, what I feel that we availed a good quality of life with whatever we have. And another thing that I am very proud that I made many contacts of my school friends and still maintaining it. And I also made contact with my all relatives and able to maintain it. And in professional front, the satisfaction level is that till date I made my footprint strongly. So that is there. So I am satisfied in professional front also. True. मैम मेरा ये है, the question is कि what gives me immense satisfaction in case tomorrow I leave the world. तो मैडम इसमें मेरा अपना मानना ये कि I have tried to make my family, particularly my kids and my wife, independent of me because of the kind of service we are living in. For example, I will quote, जैसे मेरी daughter है, तो जब छोटी थी तो कहीं मार्केट में जाना है, कहीं भी जाना है, तो माय वाइफ और माय हर ग्रैंड मदर वुड से कि भाई को ले जा। तो आई ट्राइड कि नहीं, वो अकेली चली जाएगी। स्मॉल थिंग्स, सपोज दे वांट टू गो फॉर प्लेइंग इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, मैंने कहा ठीक है, अगर साल भर नहीं पढ़ा तो अभी एक दिन का 2 दिन में पढ़ के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारेंगे, बट लेट देम हैव दैट डू व्हाट दे वांट टू डू। Similarly, once my son was in 12th class, so during leave, when my wife approached me कि छुट्टी आ जाओ और इसको पढ़ाना है, कुछ करना है, तो छुट्टी में गया मैं, तो वो बैडमिंटन खेलने का शौक चढ़ा था उसको। तो हम दोनों ने जो है जाके एक नजदीक क्लब था, उसमें मेंबरशिप ले ली 1 महीने की। तो माय वाइफ सेड कि लोग आकाश में और अलग अलग इंस्टीट्यूट में बच्चों को एनरोल करा रहे हैं और आप जो है बैडमिंटन खिलवा रहे बच्चे को। तो मैंने कहा उसमें फोर्स करके करा के कोई फायदा नहीं है, अनलेस एंड बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। तो गेम खेला, फाइनली जो अभी बीटेक कर रहा है वो इट्स अ डिफरेंट मैटर। वाइफ के केस में जैसे था, तो इनिशियली जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू लीव, मतलब हमारा एज, बच्चे बड़े हो गए हैं, आई हैव टू लिव सेपरेटली, तो हम एनएसजी में थे, तो आई स्टार्टेड, मैंने कहा ड्राइव करना शुरू कर दो। तो गाड़ी ड्राइव करना सीखा, फर्स्ट डे ही उसने एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मार दी सामने दीवार पे। तो उसने हथियार छोड़ दिए कि नहीं, मैं नहीं, अब नहीं ड्राइव करूंगी, खराब होगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं करा, भी छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भर नहीं सीखोगी। एंड सब्सिक्वेंटली आज की डेट में ये है कि वो कहीं भी अपनी गाड़ी लेके जा सकती है, और उसका एडवांटेज ये हुआ है, मुझे इसलिए सेटिस्फेक्शन है कि आज की डेट में अगर मेरे पेरेंट्स पीछे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली उनको हॉस्पिटल ले जाती है, बच्चों को कहीं ट्यूशन ले जाना तो ले जा सकती है। और इनफैक्ट दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर मेरी बेटी ने जैसे बीडीएस में एडमिशन लिया, तो आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ माई सर्टेन कमिटमेंट, मैं उसके एडमिशन के लिए मैंगलोर नहीं जा पाया था, तो मेरा बेटा अकेले जाकर के उसका एडमिशन करा दिया। That's a achievement, I must say, Mr. नरेंद्र जी, कि आपने आपकी फैमिली को स्वावलंबी बना दिया है। They are not depending anybody, independent हो गए हैं। They can face the world, they can deal with the situation, and that satisfaction is really good. And trust me, आपकी बातें सुनते हुए मुझे मेरे डैडी की याद आ गई। हालांकि अभी वो है नहीं, but हमेशा कहते थे कि don't depend on people, independent बनो। And I remember he saying this time, sharing about how my father's thought process was. My grandmother was a widow, and she took care of 3 children by becoming a headmistress, teacher ban gayi,
and she took care of her children. So जब डैडी का मैरिज का एज आ गया, he says I want a working wife. उस वक्त लोगों को चाहिए था कि घर बैठे भाई. And after many years we were born, हम लोग पढ़ रहे थे. मैंने डैडी से पूछा, डैडी आपने मम्मी से क्यों शादी किया? कि इतने सारे लोग हैं, they expect a housewife, you wanted a working woman, that to a nurse. He said, you know what, Sonali, like I saw my mother. जब my father died, we were not at somebody's mercies. My mother was capable to take care of us. And tomorrow something happens to me, I'll go, with no regrets from this world, because I know my wife is working and my children will be taken care of and they will do well in the life. So yes, that's also a satisfaction, not necessarily कि हमेशा हमें career में मुकाम ही पाना है, but it's a combination, personal, professional, कि हम लोग कैसे satisfied हो सकते हैं. And it's a time of introspection, thinking कि हम क्या कर रहे हैं and what is our purpose, where are we heading. यहाँ पे कुछ और चैट में मैसेजेस आए हैं. महेश्वर प्रसाद जी कह रहे हैं, पर्सनल आई प्लेड माय रोल वेरी वेल एज एन आइडियल सन, फादर, सिटीजन, वंडरफुल. एंड प्रोफेशनल आई वाज ऑन राइट ट्रैक एंड कुड अचीव सम टारगेट्स which he had set for himself. Ashwini ji कह रहे हैं, good friends, responsible son, brothers, fulfilled also maximum desire. So, and at professional front, very satisfied, career at all stages till now. Wonderful. Mansingh ji, absolutely satisfied, as my family is my world and I'm not leaving them as at destroyed ruins of world as world is ending. Okay. Rajesh ji keh rahe, I'm satisfied on both fronts. Wonderful. So yes, we need to take a stock. So we saw regrets, we saw what can satisfy. हाँ जी बोलिए. मैम कुछ कहना चाहूंगा. कहिए. पर्सनल में मैं बहुत खुश हूँ जो भी बीएसएफ से मिला है. इसके अलावा बीएसएफ से पर्सनल से इसलिए भी खुश हूँ, ये प्रोफेशनल से इसलिए खुश हूँ. 6.5 साल के बाद एसी से असिस्टेंट कमांडेंट से डीसी बने और डीसी डिप्टी कमांडेंट में 8.5 साल रहे, तो भी सेटिस्फेक्शन रहा. और 13 साल के बाद ट्वाइसी से कमांडेंट बने और अभी 8-9 महीने से कमांडेंट हैं. कमांडेंट की जो यात्रा है काफी अच्छी चली हुई है. इस सेक्टर में और फ्रंटियर में बटालियन का काम, हमारी बटालियन का काम काफी अच्छा चल रहा है. तो दोनों फ्रंट में मैं सेटिस्फाई हूँ. इसलिए सेटिस्फाई हूँ हमारे सेक्टर में हमारी बटालियन का काम सबसे टॉप का चल रहा है हर फील्ड में. थैंक यू. Thank you so much for sharing that. Virender ji keh rahe, health and happiness, I'm happy. Ashok ji keh rahe, I'm satisfied, there is no end of requirements. Very true. Human wants and desires are unlimited. I am satisfied both front. Yes, sir. I can't see who's speaking. आपका आवाज चला गया है. कोई कुछ कह रहा है? I can't hear you. यहाँ पे personally, I think, yeah, no one is speaking right now. Okay, Virendra Pal Singh ji ने कहा है, on both front I have always come forward to help others and try to solve their problems. So yes, serving the community, serving your friends, helping your near and dear ones. So आपने other people बोला, I assume it's a society. घनश्याम जी कह रहे, I'm satisfied on both the fronts. Great. And yes, प्रमोद जी आपने एक बहुत concern share किया था, उसके बारे में we are going to deal with it. It is not that I have ignored by listening, but अभी वो relevant नहीं है. But जैसे हम locus of control में आ जाएंगे तो आपका concern भी resolve हो जाएगा, जो आपकी बहुत ज़्यादा concern है. You're worried about the security and how the things are going to move forward in the force. तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. It is not unattended. We will attend to it. Pramod ji, okay? So now we're moving on to the next slide. हम लोग definitely attend करेंगे उससे, okay? What I wanted to be now as a kid, मैंने यहाँ पे प्रयास जारी है, चल रहा है प्रयास. जी हाँ, आपको इसमें आप definitely सवालों के जवाब मिलेंगे.
और कैसे डील करना है उसे। देखिए हर एक का जीवन अलग होता है, सिचुएशन अलग होते हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, एंड पीपल टेक डिसीजन based on the environment, circumstances, what constraints they have. कॉन्क्रीट एक्शन होना जरूरी है। जी हाँ, और उसके लिए आप कैसे इंस्ट्रूमेंटल खुद को कर सकते हैं अपने लिए। जी हाँ, so we'll see that in the locus of control। आपका लेवल पे मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कर रहा हूँ जी। टाइम टू टाइम मैं प्रपोजल भी भेजता हूँ जी, अपने सजेशन भी देता हूँ। It will work out. It is just that how your approach is. हम लोग देखेंगे locus of control में देखेंगे उसे, how to deal with it. Okay. Now coming to this slide, हम देखते एक छोटा बच्चा है, पानी में खेल रहा है, और बचपन में हर किसी को कुछ ना कुछ बनना था। I wanted to be, बचपन में मुझे मुझसे शुरुआत करें, if I want to say something, मैं सच बताऊं तो मुझे एक आर्मी पर्सनल बनना था। When I was a kid, I was fascinated with the army uniform. I come from a small town, Lonavala. तो लोनावला खंडाला सुना होगा मूवीज में नाम ये, तो वहां पर ना नेवल बेस है, एक तो नेवी वाले। बट आई एम एक्सीडेंटल बीएसएफ इन बीएसएफ। Really? So I wanted to be into some army forces, some force. और मैं लोनावला में थी तो officer is like that. I try my best to quit the BSF. But एक बुक लिख दे, एक्सीडेंटल कमांडेंट। No, but what you wanted, ये तो आज की बात है। प्रमोद जी, नरेंद्र जी, ये आज की बात है, एक्सीडेंटल। बट बचपन में आप क्या करना चाहते थे ये बताइए, मुझे ये सुनना है आपसे। जैसे मैंने कहा मुझे आर्मी फोर्सेस में होना था, बिकॉज मैं नेवी वालों को देखती थी। हमारे यहाँ पुलिस ट्रेनिंग का सेंटर है, लोनावला में काफी सेंटर्स है। सो मुझे ऐसे उनको यूनिफॉर्म में देख के बहुत प्राइड आता था, आई वांटेड टू बी दैट। था, लेकिन मैं जाना चाहता सिविल सर्विसेज में। एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे? मैं बनना चाहता था, आईपीएस बनना चाहता था, एक्चुअली में एसपी बनना चाहता था। लेकिन हमने जो है जो गोल सेट किया था ना, गोल सेट किया था जी जी, वो 25 इयर्स का किया था जी, कि मैं अपना पढ़ाई करूंगा तो 25 इयर्स तक। और 25 इयर्स जब हमारे हो गए हमारी उम्र के, तो मैंने फिर सब छोड़ दिया और मैं दूसरे फील्ड में आ गया। तो बचपन में आपको एसपी सिविल एग्जाम्स किए थे, मैंने एसपी बनना था, राइट? मुझे एसपी बनना था जी। ओके, अरुण जी, आप क्या बनना चाहते थे? मैं मैडम डिप्टी कलेक्टर, मैं कलेक्टर बनना चाहता था। कलेक्टर बनना चाहते थे बचपन में? Good morning. I wanted to become engineer and as a good human being. Engineer in what trade? Civil engineer. Civil engineer, wonderful. You wanted to build something. Okay, जी मैडम। Creation, you believed in creating, being creative. Okay. और किसको क्या बनना था? मैंने जैसे कहा आर्मी वाली बनना चाहती थी, we'll see क्यों नहीं बन पाई मैं। Morning, ma'am. Good morning. I want to become a historian. As a historian. Yes. Excavation वगैरह करना? Yeah, ma'am. Excavation वगैरह जैसे करते हैं वो वाला historian की बुक वाला? बुक वाला। अच्छा, क्योंकि मैं not archaeologist but historian. आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, बिकॉज आई सॉ दैट मूवी, कौन सा था, एंजेलिना जोली, टॉम राइडर्स, एंड बचपन में बट नहीं बन पाए। वैसे और किसी का कोई ड्रीम था? आई वांटेड टू बी व्हेन आई वाज अ किड। Yes, madam. As a child, I never had any plan to become anything. You never had a plan to become anything? हाँ मैडम। हाँ जी। मैं तो जो बनना चाहता था वही बन गया। आपका नाम, आई कांट सी योर नेम सर जी। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनकर। हाँ जी, सुरेश कुमार जी, बोलिए। जो मैं बचपन में बनना चाहता था वही बन गया। ये सबसे अच्छी बात है। यस डॉक्टर, आपने जो ड्रीम किया वो अचीव किया लाइफ में। बीएसएफ में कमांडेंट है, बताइए। और मैडम हमको कमांड से मतलब आसान कोई चीज ही नहीं लगता है। सबसे आसान। लेकिन डॉक्टर बनना चाहते थे कि नहीं, ये बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर बनना चाहते थे कि नहीं? नहीं, जो हूँ वही बनना चाहता था। डॉक्टरेट तो किया है, वो भी करना चाहता था, वो भी कर लिया। आप कौन से डॉक्टर हो? सुरेश जी?
मैडम मैंने इकोनॉमिक्स में, रूरल इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया है। आई डिड माय PhD फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। So you are a commandant. Along with that, you did a PhD in economics. Yes, yes, ma'am. So you achieved both the dreams. You always dreamt to be that way. Yes. और मैंने नेट और JRF क्वालिफाई करके किया PhD। Very good, भाई। Fellowship. So wonderful. That's an achievement. Wonderful. Anybody else? मैडम फ्रॉम माय साइड आल्सो रेस्पेक्ट फॉर डॉक्टर सोनकर, एंड मेरा ड्रीम रहा मैडम चाइल्डहुड का कि एक ग्रेट ट्रैवलर बने। ग्रेट ट्रैवलर, ओके। हाँ, जो कुछ स्टोरी बुक्स जो है वो मुझे इस डायरेक्शन में प्रेरित करती रही, बट इन BSF आल्सो वी ट्रैवल अ लॉट मैडम, दैट्स व्हाई समहाउ इट। सो आपका ड्रीम इन अ वे इज बीइंग अचीव्ड बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग। यस मैम। वंडरफुल। अंतर्यामी जी आप कुछ कहिए, संजय कुमार जी आप कुछ कहिए, जो बात नहीं करे प्लीज शेयर योर ड्रीम, व्हाट यू वांटेड टू बी। मैडम ये डॉक्टर सोनकर जो है ये पॉलिटिशियन भी बनना चाहते थे। अब वो पॉलिटिशियन नहीं बने तो उनकी वाइफ को बनवा दिए हैं, तो दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट फॉर हिम। तो फैमिली गोल बन अचीव हो चुका है। हाँ मैम, ये पूरा सैटिस्फाइड कंटेंट है। आप क्लियर कट बताइए कि मैडम जो है मिसेज सोनकर इज अ मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ द उत्तर प्रदेश। मूर्ति सर आप अपना बताइए ना, सोनकर साहब का व्याख्यान कर रहे हैं आप अपना गोल बताइए ना मूर्ति सर। डॉक्टर सोनकर का बायोग्राफी लिखेंगे मिस्टर मूर्ति, क्योंकि वहाँ मैडम वन थिंग आई वांट टू से, मैंने अपने बैचमेट्स को मोटिवेट करके उनको जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। दैट रोल आई हैड प्लेड, so all the happy faces which you are seeing, it is because of me. Okay, so that is something I would say previous slide में जो था, you're satisfied, immense satisfaction that आपने आपके colleagues और आपके friends को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दिया। I could say that. सही है? हाँ मैम, हमारी जिम्मेदारी थी इनको हंसते खेलते देखना। So they are all happy they achieved their aim, ma'am. And ma'am, you asked about me, regarding me. I wanted to become a class 1 tested officer, wearing a uniform, which I have got, and I achieved that. So congratulations. So that your childhood dream or fantasy that you always wanted, you have achieved that. Fantastic. और किसी Mr. Srinivasan sir जी? Good morning, ma'am. Good morning, sir. I am Maheshwar Prasad. महेश्वर जी बताइए। मैं तो यूनिफॉर्म फोर्सेज में ही जाना चाहता था, तो BSF भी ठीक ही था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 26 साल के बाद मैं कमांडेंट के रैंक नहीं आऊंगा, तो यहाँ पे मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हुआ। ओह, बट आपका ड्रीम क्या था पहले बचपन में? यूनिफॉर्म फोर्सेज में ही जाने का था, तो यूनिफॉर्म तो मैं पहन लिया था, BSF में आ गया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 26 साल की सर्विस के बाद भी मैं कमांडेंट रैंक तक ही रहूंगा, ये मुझे शुरुआत में पता नहीं था। तो ये तो बात की बात है, फिर बचपन का ड्रीम हम लोग सोच रहे हैं। आगे वाले स्लाइड्स जब हम देखेंगे तब we will always will talk about it. But I think you are into the BSF, that is your childhood dream is achieved, I believe. Hello? Yes, ma'am. Okay, wonderful. And then what stopped you from making the childhood dream reality? अभी कुछ लोग हैं जैसे अभी महेश्वर जी ने कहा, बिकॉज महेश्वर जी ने बोला कि यहाँ तक तो मैं आ गया बट आगे मेरा ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, तो जो आपने बचपन में सोचा था क्या, किस चीज ने रोका? What were the things in your life that stopped you? Before that, there are certain people who have given. Ma'am, I want to say something. हाँ बोलिए सर जी। ये जो दोनों चीजें जो प्रीवियस स्लाइड थे और इसमें भी बेसिकली आई वांट टू बिकम इन एज स्टेशन मास्टर, रेलवे में जाना चाह रहा था एज स्टेशन मास्टर। अच्छा। और मेरा हो भी गया था जी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉल लेटर जो है लेट आया और मैं जो है इसमें BSF में आ गया। हाँ, तो इसको क्या कहोगे? आपको TC बनना था लेकिन आप BSF में आ गए, तो क्या
what stopped you from becoming a TC? नहीं, उसमें मेरा ये सपना था, ट्रेन वगैरह जो है ना, जो लोग बाग को जो है मतलब आई मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग जो हैपनिंग होती थी, और बड़ा अच्छा लगता था कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे नहीं होना चाहिए, रेलवे में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना ऐसा कुछ करें कि ये ऐसा ना हो। कुछ ऐसा सपना था मेरा कि रेलवे में ही जाऊंगा। जी जी, फिर क्या हो गया सर, रेलवे में क्यों नहीं गया? मेरा हो गया था, मैं बॉम्बे से हो गया था, बट मेरा कॉल लेटर लेट आया, और वो भी आया तो गलत जगह पहुंच गया, जिसकी वजह से वो फिर डिले हो गया। और इन द मीन टाइम मेरा बीएसएफ में कॉल लेटर आ गया, तो मैं इधर आ गया। अच्छा, तो आप इसको क्या कहोगे, इस चीज को क्या कहोगे? आपको कॉल लेटर लेट आया, इसमें ये बोलूंगा, ये तो बहुत बड़ी डेस्टिनी हो गई रमेश राम। ये तो हाँ जी महेंद्र सर जी, मैं यही इसमें वेट कर रही थी सुनने के लिए। डेस्टिनी था ये, डेस्टिनी पेट में था, जो और था। हाँ, इसको और किसी को इसमें कोई रोल नहीं है, डेस्टिनी है, और क्या बोला जाए। यहाँ पे मैंने कुछ मैसेजेस, चैट मैसेजेस मिस कर लिए हैं। मैडम गुड मॉर्निंग मैम, मैं एक्चुअली बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहता था, बट नहीं बना ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजन। Actually, I was not able to concentrate study after the ISC due to my father was feeling very he was काफी बीमार हो गए थे, so I unable to spare time for the study. That is why I'm फिर मैंने BA किया, then selected in BSF. अच्छा, तो इसको आप क्या कहोगे? What stopped you from being an engineer? Actually, my main aim to become engineer. Actually, मेरे जितने मतलब रिश्तेदार हैं, relatives हैं, mostly they are engineer. And that is what, so you could say circumstances, people. मतलब मेरा जो ड्रीम था बचपन का वो नहीं हुआ। हाँ, but मैंने सवाल ये है, what stopped you? What stopped you from achieving your childhood dream? बन पाया due to some domestic reason. Domestic reasons, okay, great. यहाँ पे मैंने chat miss कर लिया है. I'll just read those chats over here. अशोक जी कह रहे नहीं, it's not visible. अच्छा, is it visible? नीरज जी, नीरज सर जी? Yeah, ma'am, it's visible now. Okay. Ashwini ji keh rahe, to become professional in uniform, yes, still fulfilling all the childhood fantasies and dreams. Wonderful. Nagendra ji keh rahe, I wanted to join forces only. Virendra ji keh rahe, I am what I wanted to be. Wonderful. Rajesh ji keh rahe, I wanted to be in uniform services as an officer, and I'm there. Somedev, okay, Somedev is congratulating Sonkar sir. Pramod ji keh rahe, I wanted to be an IPS. Okay, we spoke. So yes, we wanted to be something, but something stopped us from achieving our childhood dreams, and there were different reasons. मैम इसमें मैं एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी। कि whatever I want to become, जो मैं नहीं कर पाया, अपने बच्चों को मैं कोशिश किया कि वो अपना बने। मेरी बेटी थी जो कि उसकी एक ड्रीम था कि मैं MBBS बनूं, और जॉन डेट जो है अपने MBBS में लास्ट ईयर उसका सिलेक्शन हो गया था, और अभी एट प्रेजेंट वो अभी अपना MBBS कर रही है। Wonderful, congratulations to you and your daughter. एंड मेरा बेटा जो था वो, उसका एक ड्रीम है कि हम अपना JEE एडवांस में निकालें, तो JEE मेन में उन्होंने 98% सिक्योर किया है, और आई होप कि उसका जो एक ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा। Congratulations, आपके दोनों बच्चों की प्रगति के लिए, अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। और इसमें जो है, जो मैं नहीं कर पाया अपने, उसमें जो है अपने बच्चों को इंश्योर कि हर चीज वो जो चाह रहे हैं वो मिल जाए, तो हो भी रहा है मैम। That is the Indian parenting way, no? Indian parenting way of life. True, true. Your children are blessed, और उन्होंने आपके हार्ड वर्क को भी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। यहाँ पे संजय कुमार मिश्रा कह रहे हैं, I always wanted to be a fighter pilot but could not make it and finally joined BSF. So संजय कुमार जी, जानना चाहूंगी आपको फाइटर पायलट बनने से किसने रोका? संजय कुमार जी, संजय कुमार मिश्रा जी। I appeared for the test and failed in that. That's why I joined BSF, ma'am. Okay, so maybe you could not achieve requirements, और फिर आपने सोचा, आपने गिव अप किया, मुझे लग रहा है। Was it so?
No, I was got a chance to join BSF after that, so I joined that. Okay, so you had a choice. आपने choice था आपके पास. Yes, ma'am. You had a choice either to go and reappear for exam, or you had a choice to go for No, BSF. I didn't try again, ma'am. Joined BSF and I'm satisfied here. Wonderful. मैं कुछ कहना चाहूंगा. हाँ जी, कहिए. हाँ, ये पहला था कि चाइल्डहुड में क्या करना चाहते हो. हमारे गांव के अंदर सबसे बड़े जो अपॉइंटमेंट होल्डर थे उस समय बहन जी बोलते थे और मास्टर जी बोलते थे, वही होते थे हमारे गांव में. घर वालों ने जो सिस्टर पढ़ने के लिए आती थी बोले ये बहन जी बनेगी, बहन जी में टीचर बनेगी, टीचर, लेडी टीचर. हाँ, और जो हम पढ़ने जाते थे बड़े गांव आसपास के जो नहीं पढ़ने जाते तो बोला ये बड़ा मास्टर बनेगा. अच्छा. तो करते करते मास्टर भी नहीं बन पाए और सिस्टर टीचर भी नहीं बन पाई, उससे आगे बन पाए हैं. फिर उसके बाद जो है बीएड में एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि बीएड में एडमिशन के लिए 55% नंबर चाहिए थे. हमारा ये 50% उस समय बीए में. सेकेंड डिवीजन आ गई थी उस समय, बहुत कम आती थी, लेकिन इसलिए टीचर भी नहीं बन पाए. तो ये कम नंबरों की वजह से एडमिशन नहीं हुआ, टीचर नहीं बन पाए. कंपटीशन मास्टर ये एग्जाम दिए तो बीएसएफ में आ गए. तो हमारे इलाके में सबसे बड़ा मास्टर ही माना जाता था. और बहन जी में टीचर, लेडी टीचर. तो टीचर बनने से ये नंबरों की वजह से हम बीएड नहीं कर पाए, इसलिए टीचर नहीं बने. तो अच्छा ही हो गया. तो इसे आप क्या कहोगे? What stopped you from being your teacher, मास्टर जी? हाँ, उससे बेटर हुआ. उससे बेहतर ही हुआ, लेकिन कुछ किसी चीज ने रोका आपको. किस चीज ने रोका मतलब ये है कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए 55% नंबर चाहिए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस ने रोका आपको, हम ऐसा कह सकते हैं. नियम, जो नियम है उसके वजह से आप नहीं कर पाए. यहाँ पे एक और आया है. आई हैव वांटेड टू बी इन फोर्स पर्सन एंड आई अचीव्ड इट. वीरेंद्र जी कह रहे हैं गुड. और किसी को कुछ कहना है? आप बचपन में कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं अचीव कर पाए. यस मैम जी. मैं जैसा कि बताया कि मैं आईएएस ऑफिसर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता था जी. एंड आई हैव अपीयर्ड थ्राइस इन मेंस एग्जामिनेशंस. जी हाँ. मुख्य परीक्षा में मैं 3 बार अपीयर हुआ लेकिन आई कुड नॉट मेक इट. And I think due to lack of financial support, after three attempts I could not try for next attempt due to lack of financial support of my family. So क्योंकि मैं 6 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, तो मुझे बताया गया कि अब कोई जॉब कर लो. तो then I have joined the BSF. Wonderful. But you are, wherever you are happy with that and satisfied. Yes. ये जो सवाल हम कर रहे हैं, we are exploring a lot. हम बहुत इस पर discussion कर रहे हैं because very soon. Yes. मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ. यदि आप अलाउ करें, हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ. आप अलाउ करें तो बचपन से लेके और अभी तक की क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए. बचपन में बड़ा फ्लक्चुएशन था. जिसकी कॉमिक्स पढ़ी वही बनना चाहते थे. अभी फैंटम की कॉमिक्स पढ़ी तो फैंटम बनना चाहते थे. कभी चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी तो साबू की बनना चाहते थे. जब सेंसस आए तब उसके बाद फौजी बनना चाहते थे. बड़ी फ्लक्चुएटिंग सी रही लाइफ डिसाइड करने में. अर्ली स्टेजेस में जैसे जैसे कॉमिक्स पढ़ते गए वही बनना, जो पिक्चर देख ली उसके हीरो की तरीके से बनना चाहते थे. जी हाँ. फाइनली डिसाइडेड कि यूनिफॉर्म पहननी है एंड यूनिफॉर्म पहननी है. उसके लिए फिर चैलेंजेस कई थे. जैसे आपने लिखा कि क्या which stops you to fulfilling your childhood desires. Oh, there's a competition we had, everybody has gone through those competitions, and those competitions were challenges. Those was overcome, and in respect of me, I had finally achieved what I wanted to be. And BSF, I want to become an officer in uniform, and I am an officer in uniform. Regarding the childhood fantasies, there are many childhood fantasies, which are generally surrounding the what I want to become as a soldier. Like बारिश में भीग के चलते जाना है, ठीक है नहीं, जहां पे परेशानी होनी है वहां पे सबसे पहले पहुंचना है. And this job is providing all those things day and day night.
every time it's providing that. We will the first responder to all that kind of things with our childhood fantasies. So that's why it's a very satisfying career, professional. So आपने बचपन का एक तो ये तो कविता लग रही है मुझे, और फिलॉसफी, लाइफ की एक फिलॉसफी लग रही है, बट वेल पुट, वेल आर्टिकुलेटेड, आई मस्ट से। आपने बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ते थे, बस वही बनना चाहते थे, बट जिंदगी के ऐसे थपेड़े पड़ गए कि हम लोग कुछ और चूज कर लिए, और कई बार हम डेस्टिनी कहते हैं, कई बार हम सर्कमस्टेंसेस कहते हैं, कई बार पर्सनल चॉइसेस कहते हैं। देखिए, ये जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम लोग एक वी आर गोइंग टू, देयर इज अ रीजन, और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट इनटू साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। हाँ प्रमोद जी बोलिए। लाइटर वे में आप अलाउ करें तो थोड़ा सा एक डेस्टिनी के ऊपर बोले हैं वाक्य। जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। जब छोटा था, जो है हमारे ख्याल से 6-7 7वीं में पढ़ता रहूंगा, उस समय पढ़ते होंगे, तो ये साधु आते हैं ना, जो मांगने के लिए, वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा के लिए आते हैं वो। तो एक साधु बाबा हमारे घर पे आए हुए थे, हम बच्चे सब मोहल्ले के खेल रहे थे, तो वो ऐसी सीढ़ियों पे बैठ गए, घर के जो स्टेप होते हैं ना, वहां पे बैठ गया वो। आओ बच्चों, हम लोगों को सबको बुला लिया, और हाथ देखने के लिए लग गया वो। जब जो है दिमाग में कोई चीज आई भी नहीं थी कि क्या क्या होता है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, बस खेलो खाओ पढ़ो लिखो अपना, उसी में जो है दिन गुजरते थे। उस बाबा देख रहा था, तो उसने बोला मेरे से कि बेटा तुम क्लास में अफसर बनोगे। तो हम सारे के सारे हंसने लगे, क्लास में बोल रहा है, जबकि हम लोगों के यहाँ जो है ये चलता था कि लोग इंजीनियर और डॉक्टर के बारे में ही सोचते थे आमतौर पर, ज्यादा से ज्यादा यदि सोचेंगे भी तो डॉक्टर इंजीनियर के बारे में। और बाद में बोलता है कि क्लास में अफसर बनोगे, लेकिन तुम कुछ टाइम के बाद में छोड़ दोगे उसको। तो बड़ा हास्यास्पद लगा कि एक तो क्लास में अफसर और फिर छोड़ भी दोगे। तो कहीं ना कहीं जब देखा तो ऊपर वाले ने क्लास में अफसर भी बना दिया जी, और कहीं ना कहीं दिमाग में वो रहा कि छोड़ना भी है, लेकिन स्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं हो पाई कि जाकर के जो छोड़ा जा सके। लेकिन उसने जो बात बोली एक साधु ने, वो पूरी की पूरी सही निकली हमारी लाइफ में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी है कि कहीं ना कहीं लिखा है। जैसे जो है वो बता देते हैं नहीं आपका जो है विदेश का दौरा होना है, आप विदेश जाएंगे, विदेश में नौकरी करेंगे, तो कहीं ना कहीं लिखा है कि किसको क्या बनना है, कहाँ। यस, डेस्टिनी है। डेस्टिनी भी कई बार हमारा ये वाक्य जो है हुआ है, जो हमारे स्मरण में रहता है हमेशा। अभी बागेश्वर बाबा भी इस समय बोल रहे हैं, देख लेना क्या कुछ के लिए हो जाए। सही बात है। वेल, बागेश्वर बाबा की बातों में नहीं जाएंगे, विल स्टे व्हाट स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। लंबा हो जाएगा केसरिया छेड़। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें आई है, और मुझे एक हिंट दिया गया कि विल टेक अ 10 minutes break. Yes. Break time, okay? Dr. Sanani will take a 10-minute break time now, and I think we can resume. We'll resume, let's say around 12:25. Does that work? I think that is okay with everyone. 12:25 we can resume. Yes. Yeah, sure. Okay. See you after 10 minutes break. Okay, thank you. प्रमोद। हाँ जी। ये बाग बजा रहा है सर, वो नाराबेट में है वो। भाई वो भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये नहीं बोलते जो होता सब अच्छा होता है। उसी को डेवलप करना चाहिए था, उसी स्थान को डेवलप करना चाहिए था। नहीं हो सकता ना, वहाँ स्पेस नहीं है। अरे यार जितना भी 25,000 आदमी आते हैं, उसमें 500 वाली जगह में हो जाएंगे क्या 25,000 आदमी? वीपी सर एक सजेशन है सर। बोलो। एक साथ में थोड़ी घुसाना होता है यार। अग्रवाल सर 1 मिनट सर। वीपी सर
हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ सर आपके ये मंदिर तो सर अपने टाइम से बनेगा, अभी भूमि पूजन हो गया सर, वहां पे ना अभी आप क्योंकि उस चेयर पे बैठे हो जहाँ से चीजें हिलती हैं सर, वहां पे ना सर टॉयलेट का सर जरा शुल्क शौचालय की वाले एक्सिस के लाइक पे एक सर वो वहां पे सर टॉयलेट्स बनवाओ सर, अच्छे से टॉयलेट कंडीशन अभी जो ना जैसे ये होगा तो 2-4 टूट करके और नए 10 टॉयलेट और बनेंगे अभी। वीपी सर सर, 10 नहीं सर, सर 10 नहीं, वहां पे तो कम से कम 25-30 टॉयलेट और 25-30 बेदिंग पॉइंट चाहिए सर मंदिर में, सर संख्या बहुत है सर। मैं बताता हूँ आपको, अभी 20 टॉयलेट अभी हैं, 10 आएंगे सीमा दर्शन में और 20 के करीब और बनेंगे क्योंकि सर but the cleanliness thing should be handed over to some civilians sir, not BSF sir, they don't clean it sir, hello लगाए हुए हैं। VP sir, Gurinder sir, very sorry to intercept. Please do continue this discussion. I would like to proceed with the session. Sonali ma'am, I would like to hand over the session to you. Thank you so much. Okay, so here we proceed further. I hope अब तक आप लोगों ने ये जो पूरा डिस्कशन था आप नोट भी कर रहे हो, and you are also, I'm happy that all are engaging. गुरिंदर जी, आपने नहीं बताया आपका childhood dream क्या था और what stopped you from achieving your childhood dream? Means ma'am, I had a very tough childhood. It's okay if you don't want to share, that's absolutely fine. No. I also, as somebody shared, that I always wanted to be a fighter pilot in Air Force. I couldn't join it. Ahead. आपका शायद, is there a problem with my, am I audible to all? Yes, Sonali madam, you are audible. Hello. We are audible, ma'am. You are audible. Sonali madam, you are audible. I can't hear your voice. 1 second. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Madam, you are audible. Actually, I was not able to hear your voice. Something happened and it switched. You know, I'm putting a earbud. So from earbud, it went to the system, I believe. Anyway, so till now we understood, like, you know, what our regrets, what our satisfactions are in life, and what childhood dreams we had, what stopped us from achieving them. We have discussed this at a length. Now we come to ourselves. Very important. Okay. And this is, what is I or me? What is I or me? What do you think? What is I? Mahinder ji? Good afternoon, madam. Good afternoon, sir ji. What is I or me? Me. Madam, what is I and me? Same. Same. Okay. Madam, what is I or me? Nahi, we. Filhal we are understanding self. So in that context, we are understanding self. खुद की हम लोग, we are having, मैंने जैसे कहा था when we started the training, it's a journey within myself. Madam, my journey started from the village of the Uttar Pradesh. Ji. And I went for the graduation in the University of Allahabad. Then I Banaras Hindu University and went for post graduation and my doctoral research program in the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Achha. Meantime, I appeared twice in the UPSC civil service exam, but I could not get through. And after that, I joined. और आप ज्वाइन करने के बाद BSF में जो हमारी एकेडमी टेकनपुर है वो बहुत ही अच्छी जगह पर है कि हमारे जो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं वो दोनों को एक ग्रिड पर ला देती है ट्रेनिंग में। और ये ट्रेनिंग जो एकेडमी टेकनपुर की है वो हमको इतना मजबूत और दुरुस्त बना देती है कि वो बहुत ही हम लोग किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। बचपन लेकिन हमारा बहुत गांव का था और बहुत अच्छा था, ये इसमें कोई दुरा नहीं है। बट मैं आई वांटेड टू बी ए सिविल सर्वेंट, बट अब मैं क्या बनना चाहता हूं, नाउ आई वांट टू बिकम ए ग्रेट पॉलिटिशियन इन फ्यूचर। थैंक यू। Okay, you want to be a politician.
So thank you. आपने ये पहले वाले questions का सवालों का जवाब दे दिया है महेंद्र जी. You have set a tone. Now we come to the. You can see on the slide what is I or me. So हम लोग इस पर थोड़ा सा ponder करेंगे and then we are going to start with our psychometric testing tools use करके हम लोग खुद की we'll try to identify our own selves, our own traits. So what is I according to I am thinking about me. Right now you are thinking about yourself. So I am thinking. आप ये statement पढ़ लीजिएगा एक बार. मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ. I am thinking about me. Yes, Ashwini ji. Well, this initially it has confused me. You want to differentiate between I. What is I? Yes, I do. I do want to differentiate that. I do want to start the. Am I correct? You are absolutely bang on spot. You're right. Just want to let us differentiate between what is I or me, and then that question comes. And then this is the exact you want to. Exactly. Exactly. Okay. Ma'am, when I say I, well, it says what I am myself. Okay. Without and me includes all those things which made me like that. This is the differentiation between I and me for me. So I is an action. Yes, I Ashwini, who I am, okay? And me is what I am with the influence of others. That's me. Okay, you're getting there somewhere. So we can think, now this statement will help you to understand more clearly. I am thinking. So I is the person, or I am taking action. I am the actor. Yes, I am that. Bilkul, exactly. About me. What I am. I'm the object. Me is the object then. Me is the object. Exactly. Me, ma'am, I want to add something. Yes, Antaryami ji, boliye. Me is certainly the object. I is the pronoun subject. Yes. And me is what others have done to me. What others have influence upon me in my life. Absolutely bang on, Antaryami ji. आपने एकदम bullseye spot on किया है कि I is a person who's I am taking action. So I am doing something, and me is how something happened to me. Yeah. Influence, जैसे आपने बोला, environment, जैसे आपने बोला, right? So I am thinking about me is something that it's about me, if I have to talk about a personality trait, अगर आपको मुझे divide करना है अलग-अलग स्तरों पे, तो कैसे होगा? एक होगा about, when I'm thinking about myself, what do you think? Let's start. I will not get into that. Let's have a discussion. I am thinking about me. So what are you? What are you thinking about yourself? What are you? Who are you? Ma'am, it's I will explain it like that. I myself assessing me, how I'm looking like. Absolutely. Yes, Ashwini. I am analyzing my own actions, my own behaviors, my own traits, my own actions and reactions as an individual. So within my mind, I have got ability, my mind has got ability to see, analyzing myself, whether how I'm behaving in physical world. So that's, yeah, and what influences I have on me. And how I am influenced by others, like from you, I'm influenced by you, how I'm influenced by some personalities, how I'm influenced by the circumstances around me, how I'm going to influence by the people, my friends, my families, and environments, weather, experience that I have, exactly, culture that I have been brought up into, my previous knowledge also, my fears also, your learnings also, my expectations also, how I will be behaving. I am analyzing myself.
So that is, I am doing analysis of myself, how I will be behaving and how I will be reacting from the surroundings around me. Absolutely, Ashwini ji, aapne ekdam se, appropriately you have a set tone for who am I? So my question is like, this is what I am thinking. I'm an actor and the object is me. That object has certain influences, जैसे आपने कहा कि experience है, education है, past life है, मतलब what happened, experiences in your life, what circumstances you went through, what kind of family, environment, your education that has been imposed on you. All that is upon you. You're influenced. Your thought process is influenced from where we derive a lot of things in our life. If I am, even the culture has a very strong influence. I'm sitting in Pune, in Maharashtra. So Maharashtra, Pune culture is a completely different culture. When I go to Mumbai, Mumbai is a different culture. And people can immediately make out, you're not from Pune, Mumbai. They look at, the moment they hear my accent or even if I'm speaking in Marathi, you're not from Mumbai, are you from Pune? Or they'll immediately point out the city, whichever city I belong to in Maharashtra. So yes, it's the influence that I have in my on my behaviors, on my thought process, on my value system, on my belief system, on my conscious thoughts that I hold on to. That is me, and I is an actor. So this is a very important thing to understand, that I am the one who's going to act upon certain things. And how do I act? I act because of the object that is me, which has got influence of the outer environment. I hope this is clear. If anybody wants to put more light on this, किसी को और कुछ कहना है? Yes, ma'am. It is quite clear. We, as a collective BSF officers, as commandant, because before joining the BSF, we were civilians, raw civilians, and the influence of BSF, which has cast upon us in these 27 years or 26 years or whatsoever, there is variety of tenure. So the BSF, being a heterogeneous force, being a multitude of various cultures, it has cast upon a huge influence upon us. The way we behave, the way we have learned so many cultures, the way we have learned how to manage so many people from different regions, different ethos, different regions. So these are the things which have spelled out our journey in 27 years of life, and this can be related to this, what you are talking about now. Yes, anybody else? I can hear somebody wants to say something. एक chat में भी कुछ आया है response. Isn't it self-assessing me as a persona? Absolutely. Self-persona, self-schema जिसे कहते हैं, एक personal हमारा जो image है, हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में. You are right, J.R. Singh ji. Anybody else? My strength and my weaknesses लिखा है Virendra Pal Singh ji ने. My strength and my weaknesses, yes. Absolutely. और किसी को कुछ कहना है? Add more on to this. देखिए मैं तो बोलते रहूंगी, बट अगर आपसे ये बात आए तो इस पे ज्यादा क्लैरिटी होगा, गहराई से क्लैरिटी आएगी कि आई एम थिंकिंग अबाउट मी, आई एम एन एक्टर एंड ऑब्जेक्ट इज मी. Madam, I denotes selfishness. You can call it as self. नहीं, वो तो बात सेल्फिशनेस इज थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा मोहन जी. आई एम थिंकिंग अबाउट मी. हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मोड में है. उस बैकग्राउंड में आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम थिंकिंग अबाउट मी. Self, you think about self. Me denotes social aspect. What society gives you. Yes. Your attitude. There you are, society. You learn from the surroundings. That is me. जी हाँ. And मेरा सेशन शुरू होने से पहले I overheard your conversation with regards to
मान सिंह जी कह रहे थे somebody in the forces shot himself, committed suicide. Okay, so आपने थोड़ी देर पहले अंतर्यामी जी ने कहा कि the way BSF has groomed us, the way the influence it has impacted on our minds, on our personality, we are saying so. So एक exceptional case थोड़ी देर पहले I overheard saying that if somebody can because see every person has a different struggle in their life. We cannot सबको एक parameter में नहीं तोल सकते. We cannot judge or measure at with the same yardstick, isn't it? So यहाँ पर what happened, sometimes even that I am thinking about me, people sometimes ignore, try to push away from situation, and certain unwanted emotions hijack your logical reasoning, and untoward situations take place, and tragedy happens. So it's very important, sometimes to have a self-introspection space, a time for yourself, and think about yourself. Think about me. I'm thinking about me. So yes, I am an actor, the one who takes action. Madam, on lighter side, it is very difficult for commander in BSF for giving time, a valuable time for introspection, as that task and work pouring in again and again, and it is very difficult to think on that line. Though it is important, very important, it should be there. And that is the purpose of having this workshop, sir. So Priyaji, that is the very purpose of having this workshop. Yeah, that is the that's very true. reason. That's true. Okay, it's really time to be many a times हम लोग बाहरी चीजों में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट अंदर क्या हो रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, उसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, and its outpour at times can be very, very negative. Okay, so I am thinking about me is something which talks about I am an actor, I will take action, I am the one who's doing it. Object is me, that is having influence from others. So moving forward, what is I or me? So what are my ideas when I'm thinking about I? Okay, so my ideas, what kind of ideas do I need? First of all, why should I know myself is my question. Why should I know myself? Thoda sa, it's becoming bit, is it overwhelming session? No, not at all, ma'am. One should know oneself because all men are unique. All human beings are unique in their capacity. And one should analyze firstly oneself because one has a vast amount of ideas, energy, anything, knowledge, wisdom. But what happens कि one gets influenced by the external factors so much. लोग क्या कहेंगे, society क्या कहेगी, मेरा क्या होगा, so many fears, so many apprehensions, so many contradictions in the society. That's why one needs to look within the self, जिसको बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में शुरू से बोला जा रहा है आत्मज्ञान. आत्मज्ञान होना जरूरी है. आत्म परीक्षण भी कहते हैं. हाँ, आत्म परीक्षण, आत्मज्ञान, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. तो अगर आदमी खुद को जानेगा, खुद को एनालाइज करेगा, खुद को एसेस करते रहेगा, तो चर्निंग जो है, दिस प्रोसेस ऑफ चर्निंग विल कीप अप गिविंग हिम ए स्ट्रेंथ, पावर एंड मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड. दैट्स माय टेक. ट्रू, एब्सोल्युटली. एक्चुअली मैडम, जो एवोल्यूशन होती है हम हमेशा अपने सामने वालों को करते हैं, और अपने को जब एवोल्यूट करना होता है तब हम जो आप वो कर नहीं पाते. ये वही चीज हो गई कि शवासन में जा करके अपने आप को देखना कैसे शरीर पड़ा हुआ है. लाइक दैट व्हाट आई बिलीव. आईने में देखना. मैं जहां तक समझता हूँ मैडम, ये हम अपने बारे में जो सोचते हैं, ये लाइफ जीवन यात्रा को मतलब कि सफल तरीके से जीने के लिए जो है
हम अपने आपको सेल्फ मतलब कि एनालाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है, और ये थॉट प्रोसेस जो है नेचुरल होता है, इट्स गोज ऑन and it is a continuous process. Continuous It's not process. one time Yes. process. Yes, it is It's a continuous continuous process. हम खुद को evaluate करें, assess करें, खुद के बारे में जाने, क्योंकि हर I won't say failure, but definitely जब हम लोग ऐसे बोलते नाकाम हो जाते हैं किसी चीज में, उसमें से हम पूरी तरह से नाकाम नहीं थे, हमको कुछ सीखने मिलता है। Yes. कुछ बदलाव आ जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारे इमोशंस में, और वो जो बदलाव है वो आने वाले एक्सपीरियंस को या आने वाले चैलेंज को बेहतरीन तरीके से हैंडल करने के लिए हमें तैयार करते हैं। So yes, what are my ideas? Okay, what thoughts that are going through in my brain? So since I am a person from EQ, emotional intelligence, it's more of थोड़ा सा मैं आपको बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकती बिकॉज मैं खुद भी बायोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मेरा एरिया इसमें था, EQ में था. सो आई लर्न अ लॉट अबाउट ब्रेन एंड बाइफर्केशन ऑफ ब्रेन. ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू. दिस इज योर स्टेम. ये जो गर्दन के नीचे स्टेम होता है, दिस इज इतना ही होता है, और इसके ऊपर आपका ब्रेन होता है. ओके, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, जस्ट अबव द स्टेम, वहां पर एक बादाम जितना, यू नो आलमंड कितना छोटा होता है, आलमंड जितना छोटा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इज कवर्ड बाय एंटायर ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यू नो ये सब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. उसके बीच में स्टेम से लगा हुआ एमिगडाला होता है, उसके अगल बगल हिपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस, ये सब ऑर्गन्स होते हैं. बट एमिगडाला जो है उसमें हमारे सारे इमोशंस, थॉट्स जनरेट होते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस, एंड ये जो है एमिगडाला का जो इमोशंस जहां जनरेट होता है, दैट इज कनेक्टेड विथ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, जहां हम बहुत सोचते हैं. कई बार हमें जब स्ट्रेस आ जाता है, हम बहुत सोचने लगते हैं, हमें यहाँ पे दर्द होता है, द पेन इज ओवर हियर, द रीजन इज यहाँ पे हमारा मशीन चल रहा है, जोरों से चलता है, that's why we have that pain. So yes, आपके जो emotions हैं, they're very important. Your feelings are very, very important because they help you to make a lot of decisions in life. Before I proceed further, there are few comments in the chat box. I'll just read them out. Mansingh ji keh rahe, assess self strength and weakness, limitations, plus points. Okay, Soumya Dev ने कहा, okay, sorry, GR Singh ji keh rahe, to know oneself will help in evolving as a better person. Absolutely. Rajesh ji keh rahe, evaluating oneself will make him understand his strength, weakness, so that he can enhance his strength further and overcome his weakness. Absolutely. आपने एकदम सही कहा है. And to continue with, I was talking about your emotions and your decision making. एक बहुत famous, I just share a small story. एक एनेक्डोट है. यूएस में एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे. ही वाज रिनाउंड, वेरी सक्सेसफुल, रिच मैन, हैविंग अ सेटल्ड लाइफ, हैविंग एम्प्लॉइज, 25-30 एम्प्लॉइज थे बंदे के पास, एंड ही हैड अ फैमिली, चिल्ड्रन, एवरीथिंग वाज फाइन. वन फाइन डे इनका रोड एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज हिट ऑन हिज हेड, बट ही वाज इन 6 months हॉस्पिटल में थे. सर्जरी हुआ, इट वाज अ सक्सेसफुल सर्जरी, ही वाज ऑल नॉर्मल, ही केम बैक to normal life. Unfortunately, there was a gradual decrease in his client base. Employees छोड़ के जाने लगे. बाद में धीरे धीरे करके हालत इस तरह खराब हो गई कि उनका बिजनेस बहुत खराब हो गया. एंड फाइनली द ब्लो केम व्हेन हिज वाइफ डिवोर्स्ड हिम. ये बंदे को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे. सो ही अप्रोच्ड अ सजेशन दिया बाय वन ऑफ हिज डॉक्टर कि व्हाई डोंट यू गो एंड मीट अ काउंसलर और कोच. तो he started taking sessions with a counselor. तो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया. yes, नहीं आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा. 2 हफ्ता हो गया. 3rd हफ्ते में हुआ ये कि काउंसलर ने कहा, मिस्टर बैरिस्टर, नेक्स्ट वीक हमारा ट्यूसडे को अपॉइंटमेंट होता है. सो ट्यूसडे मुझे कुछ और अपॉइंटमेंट है, पर्सनल काम है, आप मुझे कोई और दिन दीजिए ऑन विच आई कैन हैव द सेशन फॉर यू. तो बैरिस्टर लुक्ड एट हिम, उसने बोला ठीक है,
संडे का मेरा ये टाइम टेबल है, मंडे का मेरा ये टाइम टेबल है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक आ गया। तो काउंसलर लुक एट हिम, अच्छा फिर आप कब फ्री हो बताइए, मैं कब दूं आपको टाइम। अगेन उन्होंने वैसे ही शुरू कर दिया, फ्रॉम संडे टू सैटरडे। देन ही सेज नो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप बताओ मुझे कौन से दिन आप टाइम दे सकते हो। एंड ही वाज अनेबल टू गिव दैट। देन that was a eureka moment for the counselor. He said let's go to doctor immediately. बाकी सब अपॉइंटमेंट छोड़ दिया, उनका फिर से स्कैनिंग किया एंड थरो स्कैनिंग करने के बाद पता चला there's a single nerve which travels from your amygdala to your prefrontal cortex, decision making, वो कट चुका था इन द सर्जरी। उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया उसका, I mean, was it resolved? Because मेरा रिसर्च वो था EQ, emotions are very important. So basically his emotions and cognitive skills were not connected. So your emotions are very important, your feelings are very important. So what ideas are generated, what thoughts go in your mind, how they make how they make you feel. Okay, your feelings and emotions are very important. Do they make you happy? Do they make you sad? Do they make you excited? Do they make you overwhelmed? Do they cause stress? कई बार होता है ना कि अरे यार ये काम करना है, स्ट्रेसफुल है, कैसे करेंगे, और उसका रिएक्शन होता है आपका। अगर आप खुश हो, खुशी खुशी कोई करना चाहते हैं काम, तो आपका एटीट्यूड उसके प्रति पॉजिटिव होगा। बट कोई चीज आपके फीलिंग्स और इमोशंस को हर्ट कर रहा है, एनी आइडिया दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर एटीट्यूड अकॉर्डिंगली विल बी इम्पैक्टेड। हाँ प्रमोद जी, आप कुछ कह रहे थे? मैम थोड़ा सा लाइटर वे में भी है जी बताइए। हमारे जो इथोज है जी हाँ जी, weapon, once a weapon issued and deposit your mind, दिमाग जमा करिए और वेपन इशू करवाइए। दूसरा है ट्रूप्स आर बिजी, कमांडर इज इजी। व्हाट इज फिर से बोलिए। ट्रूप्स आर बिजी, यदि ट्रूप्स आर बिजी तो कमांडर इज इजी। कमांडर के लिए थोड़ा ठीक हो जाता है वो। थर्ड वन इज बिजी विदाउट वर्क, बिजी रखना है लेकिन वर्क कोई नहीं है, बिजी फॉर नथिंग। और चौथा एंड हमारे ख्याल से आपके जो है अभी इस संदर्भ में इंट्रोस्पेक्शन इज प्रोहिबिटेड। हाँ, जिस दिन दूसरे को सोचने का अधिकार इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं है। लिया तो हमारे ख्याल से 4 दीवारी के अंदर फिर कैद होना बड़ा मुश्किल है। Okay, well taken. On the lighter note, Pramodji, thank you for giving those quotes, or I could say phrases to keep thinking about. But thank you. तो यहाँ पर मुझे कुछ और चैट में मैसेज रमेश जी कह रहे हैं कि इंटरनल मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली। आप इंटरनली मोटिवेटेड कब रहते हो रमेश जी, बताओ क्या? नेवर। नहीं, रमेश जी ने लिखा इंटरनल मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। मैम इसमें कभी कभी हमारे बीएसएफ में क्या होता है कि अंडर प्रेशर काम करना होता है। जैसे अभी अग्रवाल जी ने बोला कि अगर ट्रूप्स को हम बिजी रखेंगे तो कमांडर इजी रहेगा, और बाकी और जो चीज है, तो ये क्या है कि बिजी विदाउट वर्क भी होता है। तो ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें सिचुएशन डेवलप होती है कि हम लोग जो है उसमें इतना अपने आप को एंगेज कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ये टेंशन सिर्फ अपने ऊपर है कि हम उसको किस रूप में ले रहे हैं, इंटरनल कितना हम उसको सही कर पा रहे हैं। इंटरनल इन द सेंस कि हमें अपने इमोशंस को, अपने जो है प्रैक्टिकल लाइफ को, और अपने जो इंटरनल जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हमारी जो अंदर की है, उसको हम हिलने ना दें, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है, हमें और दूसरे काम करना है, उनको एक्सिक्यूट करना है, ऑन ग्राउंड एक्सिक्यूट कराना है। तो ये सब चीज को अगर देखते हुए हम अपने जैसे कि इसके लिए योगा, प्राणायाम और बाकी चीज भी करते हैं, तो इससे क्या है कि हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन और इंटरनल लाइफ की जो है हमारी जो खुद की जो होती है, वो हमें अगर हम स्टेबल रहेंगे तो वी कैन अचीव एनीथिंग।
तो इसमें क्या हो कि हम जो है अपने सबसे जड़ी जो एक्सटर्नल है, जो हमारी जो बाहर की जो दबाव है, जैसे फैमिली है, सीनियर अफसर है या जो भी है, तो उससे हम सुनते सबका है बट हम सुनते भी नहीं है किसी का। दोनों बात है, क्योंकि अगर हम ज्यादा सुनेंगे तो हमारे इंटरनल लाइफ को जो इफेक्ट करता है, हम उतना ही सुनेंगे जो हमारे काम की चीज है, अदरवाइज हमें नो नीड टू लिसन एनीथिंग। तो इसमें अगर हम वेल एस्टेब्लिश रहेंगे तभी हम आगे की जो फर्दर अपनी सेल्फ की भी लाइफ सही रखेंगे और फैमिली की भी, इवेंट ग्रुप्स का, अपने बटालियन का भी और सोसाइटी का भी हम इवन जो है उसको हम कुछ बोल सकते हैं। इफ आई एम स्टेबल देन आई विल एबल टू से समथिंग कि हाउ एंड विच टाइम हम ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। तो इंटरनल जो है, जो अपने जो है उसको रखना स्टेबल बहुत जरूरी है। That's why ग्रेट, yeah. वेरी ट्रू, आपने एकदम सही कहा कि इंटरनल मोटिवेशन, सो मोटिवेशन इज आल्सो वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो जो पिलर्स है इमोशनल, डैनियल गोलमैन जो थे, जिन्होंने, वैसे तो इसके पहले दूसरे लोगों ने भी कहा था सोशल इंटेलिजेंस, बट डैनियल गोलमैन ने कॉइन किया था इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड, और उसमें उन्होंने कहा सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, नोइंग अदर्स, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन, 5 कॉन्स्ट्रक्ट। तो आपने सही हिट किया है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड व्हाट इज इंटरनल मोटिवेशन फॉर यू, और आपने सही जवाब, आई मीन यू एक्सप्लेन्ड इट, यू टॉक्ड अबाउट योर ओन, टेकिंग प्रमोद जी के फ्रेजेस लेकर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन किया, थैंक यू फॉर दैट। और अजय कुमार जी कह रहे टू नो योरसेल्फ एंड योर वीकनेस, इट गिव्स यू टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। डेफिनेटली जब हम लोग अपने आप को अपने भीतर जब देखते हैं। मैम अनफॉर्चुनेटली my training syllabus is also designed on the basis of this ethos. Okay. Why unfortunately? आप इतने unfortunately वर्ड क्यों कह रहे हो? अब वो सोचने वाला विषय है ना ये, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा। तो पॉजिटिवली देखिए, आपके डोंट, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से, जैसे आइडियाज आपके अगर नेगेटिव हो तो आपके फीलिंग्स भी नेगेटिव हो जाते हैं, देन आपका एटीट्यूड भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करता है। डेवलपमेंट के लिए गुंजाइश नेगेटिविटी से भी है कहीं कहीं पे। आप यदि हो जाएंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा आपका। सही बात है। चीज को यदि आप पॉजिटिव लेने लगे तो जो है सैचुरेशन की पोजीशन आ जाएगी, फिर सही है, ऐसे नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी मतलब उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं आप जी, नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसको, आप उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश देख रहे हैं है, जैसे हमारी टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी सिलेबस होना चाहिए टास्क ओरिएंटेड, लेकिन वो टाइम ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड। भाई 2 घंटे रख दिए, अब मान लीजिए कोई चीज दे दी, अब 2 घंटे की नहीं है लेकिन लोग बैठे हैं फ्रीली, अब भाई उसमें ये रख दो कि भाई टास्क ओरिएंटेड, जो भी कर देगा ही इज फ्री, लेकिन वहां पे बाइंडिंग है कि नहीं 2 घंटा रहना ही है। तो ये चीज जो है मैं उस संदर्भ में ले रहा हूं, सही है, मत लीजिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। नहीं, आई गॉट इट नाउ, आपने जब समझाया तब मेरे समझ में आया, एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया तब मुझे समझ में आया। आई एम ट्राइंग टू नाउ, आई एम इन लाइन विथ योर थॉट्स, थैंक यू फॉर दैट। सुरेश जी और मनीष जी, आप कुछ कहोगे? सुरेश जी और मनीष जी, सुरेश जी, मनीष जी, आप हो यहाँ पर? Would you like to add few more points, your thoughts about what your ideas are and how they make you feel, feelings, and then your attitude is accordingly? Yes, ma'am. जी बोलिए। मैडम, लाइफ में आदमी को जो ड्यूटी मिलती है उसको बड़ी ऑनेस्टली और मतलब आपको ऐसा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपका ऐसा मतलब मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, ऐसा लोगों को कंट्रोल करके रखना ताकि आपको अंडर कमांड जितने हैं इतने अच्छे से काम करें कि आपको दोबारा उनका सोचना ना पड़े। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मोटिवेशन आपका लेवल इतना हो, वेलफेयर का पॉइंट आप देखिए, तो कुल मिला करके इससे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होती। मेरा तो ऐसा मानना है।
command. सही है सर, सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश, you are absolutely right about it. So what makes you, what am I, my ideas, मैडम एक my चीज और हम thoughts? ऐड करेंगे इसमें, वो फिर हम आगे के लेक्चर में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। मोटिवेशन के लिए जो की फैक्टर है ना मैम, वो कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव है। आप देखें, जितने भी बार उठा के देखें, जितने भी बार हुए हैं, उसमें सब में जो एक इंसेंटिव था जो लोगों को मिला है। विदाउट इंसेंटिव आप जो है मोरल को हाई नहीं रख सकते हैं। कपोल बातों से, केवल गाल बजाने से मोटिवेशन नहीं हो जाता। गाल बजाते रहो और मोटिवेट करते रहो, हाँ मोटिवेशन है। मतलब आप कहें कि जोश है कि नहीं है, आवाज आपने बुलंद करवा दी तो जोश है। इंसेंटिव बहुत जरूरी है। आपके यहाँ भी आप देखें, आपके पास में यदि इंसेंटिव नहीं होंगे तो आपकी इफिशियंसी में कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाएगा। Absolutely, sir. Absolutely. अगर आपका motivation, one of the way to motivate is through incentives. This incentive, we are acute lacking of this incentive. Without any incentive, we are operating on border with full strength, with full synergy, with full strength. तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं इफिशियंसी वो और अच्छा जो है बढ़ाने के लिए कारगर होता है वो। और अभी तक के आप इतिहास में देखे हैं, टाइप्स ऑफ जो है इंसेंटिव्स have been given to the troops who are जो है ज्वाइनिंग या द फाइट। आप कोई भी देख लें, अंग्रेजों के अंडर में जब फौजें लड़ती थी तो उनके क्या इंसेंटिव थे, आक्रांताओं की जो फौजें आती थी उनके क्या इंसेंटिव थे। तो वो चीज जो है नहीं है। या अदर फोर्सेस देख लें, उनके क्या इंसेंटिव हैं, जो काम करते हैं वो उनके क्या इंसेंटिव है, कितना उनका ध्यान रखा जाता है, कैसे उनको बाइंड करके रखा जाता है। तो ये चीज जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें कंसिडरेशन में ले लें सर। हाँ हाँ जी। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल। देखिए, दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो मैंने अभी आपसे जो करवाया अभी थोड़ी देर पहले, सिंस मॉर्निंग, व्हाट हियर आपका लाइक यू नो इट्स अ लास्ट डे, what regrets you have, what satisfaction you have. Then we said what you wanted to be in your childhood, what stopped you from being there. तो जब आप बचपन में बोलते हो मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तो वो आपका वो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, वो अंदरूनी होता है, बाहर के फैक्टर्स उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपने जो बोला इंसेंटिवाइजिंग, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं। बट कई बार यहाँ पे जो हम बात करें व्हाट इज आई और मी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन। मुझे बाहर की एनवायरनमेंट से कोई मोटिवेशन नहीं, मैं खुद ही इतनी मोटिवेटेड हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे बूट कैंप में जाके एवरेस्ट चढ़ना, ये मेरा गोल है लाइफ का, मुझे अचीव करना है, ये मेरा अंदरूनी है इसलिए। बट हाँ, कोई मुझे बोलेगा कि नो अगर आप बूट कैंप में जाओगी सोनाली, आई विल गिव यू इंसेंटिव ऑफ 1 CR, तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया। गोल तक पहुंचने के लिए जब आप गोल पे पहुंचेंगे तो वहां कहीं ना कहीं इंसेंटिव होगा। ऑफ कोर्स होगा, आई एम नॉट डिनाइंग। आप जो कह रहे हैं आपको मैं सेकंड कर रही हूँ प्रमोद जी, आपके जो थॉट्स है ना, आप सही है, मैं उसको नेगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके थॉट्स को बैकअप दे रही हूँ ये कह के कि दो तरह के इंसेंटिव मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आप जो बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना पीपल कैन नॉट बी मोटिवेटेड equally. I would tend to disagree with this, Sonali ji, because motivation is only inner urge which keeps you going. Sir, extrinsic bhi hota hai, there are two types of motivation. I don't think so, because you see, live example, if we quote, you must have also heard of Kargil war. Ji haan sir. The elite regiments of Indian Army were inducted without acclimatization. Oh. And they did wonders. There was no external motivation. It was only
intrinsic urge to win. So that is what, that was मेरे देश पर attack किया है. How dare the like that? Because we are talking of totally different dynamics and different dimensions when we talk of national security. Yes, sir. The dimensions totally change. Corporate dimensions are different, and when we talk of national security, the dynamics also are different. Absolutely. So are the ways and means of dealing with those. Absolutely. So the corporate world, of course, that is more materialistic. But here we rely on emotions rather than material. True. I agree. There's an intrinsic that is what I'm harping on. Intrinsic motivation होता है कि मुझे कर दिखाना है, कर गुजरना है. That is what makes us different from the others. Absolutely, sir. मैं मेरे कोई दो राय नहीं आपके विचारों के बारे में. वीरेंद्र जी, आपने जो कहा एकदम सही कहा. जब आप इस प्रकार की जो सेवा होती है, you cannot compare your service with any other corporate, because here it is a selfless and जैसे कि कई बार हम लोग भी न्यूज सुनते हैं, देखते, तो हमारा भी खून खोलता है कि भाई how dare कोई enemy enters into our country. And even if I really have to give an example, जब हम लोग ने we had seen 9/11 attack जब हुआ था ताज पे, and do you think ये जो तुकाराम कोलंबिया small constable, was he really equipped with the gadget to encounter a fully loaded terrorist? 26/11, I'm so sorry. Apologies for that. तो ये जो तुकाराम जी थे, he was, हाथ में सिर्फ लाठी था उनके, but यही था दिल में कि how dare you enter into my country and kill my countrymen. It is not the salary machine that fights the war, it is the man behind the machine that fights the war. And that is why even our enemy with the patent tanks could not do 1.5 kg करते हैं. what we could do. 1.5 kg करते हैं. With the old vintage tanks. Thank you. थैंक यू गिरी जी. मैं आपसे सहमत हूँ. मेरा कोई दो राय नहीं है इस पर, इसलिए मैंने तुकाराम, कांस्टेबल तुकाराम का मैंने एग्जांपल दिया, बिकॉज उस वक्त मैं बॉम्बे में थी. वो जब हो रहा था जो अटैक, एंड दे वर मूविंग अराउंड फ्रीली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, उस वक्त आई सॉ दिस मैन ओनली विथ लाठी. उसका जो ही वाज द पोटेंशियल, एंड उसने बोला कि मारना नहीं उसे, डोंट किल हिम. उन्होंने जाके खुद को उसके ऊपर डाल दिया, एंड ही गॉट होल्ड ऑफ हिम, ही डाइड, बट उन्होंने छोड़ा नहीं उस आदमी को. वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा. वो किसी से कंपेयर नहीं हो सकता. वो परिस्थिति जन्म होता है मैम, वो परिस्थिति जन्म होता है. हाँ सर, वही इंट्रिंसिक, उसी की बात कर रहे हैं गिरी जी, उसी की बात कर रहे हैं. हाँ, ये एटमॉस्फेयर जो सर ने बताया हुआ है, थोड़ा सा उसमें इज द प्रॉब्लम विथ माय, can you all hear me? Yes ma'am. Sorry, बीच में स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, तो मुझे लगता है नेटवर्क का कोई इश्यू है. वो परिस्थिति जन्म होता है, परिस्थिति जन्म होता है, वो ऑलवेज नहीं चलता, हमेशा नहीं चलता है वो. सर प्रमोद जी, आपसे ये भी कहना है कि मुझे कि देखिए, कोई भी भाई, वी से नो टू पर्सन्स आर सेम. हर एक का पर्सनालिटी अलग होता है, विचारधारा अलग होती है. पर्टिकुलर काल और समय के लिए तो ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, लेकिन ये होल लाइफ, होल कैरियर, ठीक है ना, तो ये नहीं चल सकता. और परिस्थितियां नहीं है वैसी. जिस सामाजिक परिवेश में हम रह रहे हैं, वहां पे ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं है. वहां पे सारी की सारी मोटिवेशन जो आ रही है, वो इंसेंटिव से आ रही है, पद प्रतिष्ठा से आ रही है, सोसाइटी से आ रही है. ऐसे समय में विदाउट एनी जो है इंसेंटिव, मोटिवेट रखना और कमांड को मोटिवेट करना, ये जो है इट इज, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. बट पॉसिबल है सर, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके जो आइडियाज, थॉट्स होते हैं, आपका जो नजरिया होता है, आप टेक ऑन अ सिचुएशन, इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. यस, इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है कि जो है वो है, सब जो है प्रमोद भाई, ये आपका नजरिया है,
नहीं वो फिजिकल है, वो आ सकता है, लेकिन प्रयास की आवश्यकता है किसी ना किसी लेवल पे। सर वही तो कह रही हूँ कि ना हम लोग जनरलाइज ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना, behavioral science is not, you cannot generalize things. That is the main take, you know. No two people can have a similar thought process. No two people can have a similar take on a situation. And moreover, दो अगर भाई बहन, दो भाई हो या बहनें हो, same family हो, still they will have a different take on a situation. Behavioral science is not, you cannot generalize it. Right. So like-minded people can come together. Okay, I can say BSF में all like-minded people are coming together, but हो सकता है in that like-minded also there will be someone who will have a different opinion, different take on a situation. जैसे आप कह रहे हो कि incentive जरूरी है, but किसी को लगता है नहीं जरूरी है. नहीं ऐसा तो कोई नहीं होगा. किसी को लगता है नहीं जरूरी है. It depends. It really depends on the person to person. Depend upon the individual to individual. Absolutely, because every person holds different belief system. इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है. इंडिविजुअल हो सकता है, ऐसे आपको 10% लोग भी मिल जाएंगे, ये भी काफी मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं, उसमें और आप उसकी एफिशिएंसी और इफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आप यदि सेटिस्फेक्शन लाना चाहते हैं अंडर कमांड के अंडर में, तो ये जरूरी है. इंडिविजुअल नहीं है, ये बात इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूं मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूं. हाँ, तो वही ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपेंड करता है आपका विजन मिशन किस तरह से डिसेमिनेट हुआ है थ्रू आउट द ट्रूप्स. और ये लीडर्स की जिम्मेदारी है, ये लीडर्स की जिम्मेदारी है ये इंसेंटिव क्रिएट करना. It is the responsibility of a leader. Okay. Incentive could be anything. It is not just the monetary gain. Is that right? To create revenues. ये कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का. सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वो तो कमांडर की जिम्मेदारी है सर. बिल्कुल हाँ, कमांडर की जिम्मेदारी है. कैसे तरह का इंटेंसिव क्रिएट कर सकता है वो, कैसे इंसेंटिव क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन यू आर द मतलब यू आर द कमांडेंट या यू आर द लीडर. You can create the incentive to no. Somehow Mr. Pramod is saying on right direction. It is the organization who is so responsible. We are doing at our best. But just please hold on sir. इसके लिए जिम्मेवारी नहीं ले सकता है ना. वो तो आप अपने जिस चेयर पे बैठे हैं उस पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं इंसेंटिव. ये बहुत छोटी चीज और ये हमें जो ट्रेनिंग में सिखाया गया रोटी पट्टी और सिखाई गई है, भी तो है ना एक इंसेंटिव है वो उसके लिए. अरुण सर जस्ट एक एग्जांपल कोट करूंगा प्लीज मिस्टर प्रमोद. अरुण सर जस्ट ए मिनट. सर मैं बिफोर ज्वाइनिंग बीएसएफ सर मैं टिस्को में काम करता था एंड मैं सुपरवाइजर में था, लेकिन मुझे स्टील मेकिंग में था. तो हमारी 1 मिलियन स्टील मेकिंग की जो प्लांट थी उसमें 1.3 फॉर स्टील मेकिंग हम लोग करते थे. तो जापान से निपन स्टील के जो टीम आए और देखे कि हमारे काम करने का तरीका, और जो 8 हीट मतलब 8 बार स्टील प्रोड्यूस किया जाता था पर शिफ्ट में, उसको 10 या 12 बार हम करते थे. तो हमारी तरीका और प्रोसीजर देख करके उन्होंने कहा कि वो अगर इसका कुछ भी करने के लिए बताए अपने वर्कर को, देन दे विल रिवोल्ट एंड दे विल जस्ट रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी. तो ये हमें इसको किस तरह से हमें बेनिफिट करती थी, उनका टिस्को का बेनिफिट का तरीका था कि 8 हिट से 8 बार से ज्यादा प्रोड्यूस जितना करोगे उतना आपको इंसेंटिव बोनस देंगे. दैट इज कॉल्ड आईबी. तो इंसेंटिव बोनस मिलता था और हम उसी के अनुसार सेफ्टी के अनुसार काम करते थे. सो इट इज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रिस्पांसिबिलिटी टू गिव सम इनपुट्स, सम बेनिफिट्स फॉर दिस थिंग्स. व्हाट आई बिलीव. नहीं, यू आर करेक्ट, लेकिन कुछ इंसेंटिव जो है कमांडर द्वारा भी क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट कर सकते हैं. वो बातें जो है उनको ऊपर भी पहुंचनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिसीजन मेकर्स हैं. That is the organizational structure. I'll interrupt over here. Structure कैसा होता है उसके हिसाब से होता है. So yes, your ideas, your thoughts, your initiatives, they affect your feelings, and your feelings will come into action through your attitudes and behavior. मैम इफ यू परमिट तो मैं एक चीज इसमें. हाँ बोलिए रमेश जी. मैम
एज यू नो कि हम लोग बीएसएफ में तो हैं एज ए कमांडर, बट 2014 में क्या हुआ था कि हमारा सुसाइड इतने ज्यादा होने लगे थे कि हमारे जो है कमांडर बोले सभी कमांडेंट को कि आप लोग अपने अपने फील्ड में और अपने अपने बटालियन में बॉर्डर पर या जहाँ भी आप डिप्लॉयड हैं वहाँ जाएं और उसको जो है मोटिवेट करें कि इस तरह के केसेज जो है उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। एज ए कमांडर जैसे अग्रवाल ने बोला कि ये जो है एक लीडर की जिम्मेदारी है, इफ एनीथिंग हैपन इन आवर बटालियन, तो इट एज ए कमांडर एज ए लीडर जो है यू विल हैव टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू आवर बेस्ट लेवल कि उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग जो है एट दैट टाइम आई वाज जो है वैसे, तो उस समय ऑफिसर कमांडेंट की ड्यूटी कर रहा था, तो मैं भी बॉर्डर पर गया था और वो जो है इस चीज को मैंने एक एक कंपनी में जाके यही चीज मोटिवेट किया था, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बात उसने किया था कि देखिए ऐसा है कि लाइफ जो है एक बार मिलती है। अगर चलिए ठीक है आप जो भी सुसाइड किए हैं 99% केसेज में फैमिली डिस्प्यूट होता है या तो उनके मतलब बीएसएफ से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं आता है, ज्यादातर मैक्सिमम मैटर जो है वो रिलेटेड टू जो है फैमिली से होती है या तो उनके और दूसरे जो है डिस्प्यूट होते हैं। तो उसमें यही उसमें बताया गया कि देखिए ऐसा है कि जो भी मैटर है अगर फैमिली में मैटर है तो किसने क्रिएट किया है, आपने शादी किया है तो आपने मर्जी से किया है। मैक्सिमम लोग बाग जो है दे आर अपना जो मैरिज वगैरह जो है अपने मतलब अपने पेरेंट्स से सजेशन ना लेकर के खुद ही शादी करते हैं और खुद ही फिर अपने एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हमारे वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी चीज को लेकर के, और वहां पर जो है ज्वाइंट फैमिली ना होकर के जो है वो एकांकी टाइप की फैमिली हो जाती है, सिंगल फैमिली हो जाती है और उसमें कोई उनको बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला। तो इन दैट केस जो है वो बॉर्डर पर आकर के या किसी और जगह जब सिंगल होते हैं तो सिर्फ उन्हीं से ही अटैच होते हैं और वो जो है किसी कुछ ऐसे जगह हो जाते हैं कि वो सुसाइडल एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हमें हमारी लाइफ क्या है। इवन जो है कभी कभी डिजर्टर भी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो सब कुछ बताने के बावजूद भी एक चीज यही उनको बताया गया कि देखिए अगर इन केस अगर आप सुसाइड कर भी लेते हैं तो व्हाट यू विल अचीव, आप दोबारा जन्म लेके वापस आएंगे देखने के लिए कि हमारी बीवी कैसी है, हमारे बच्चे कैसे, हमारे परिवार कैसी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप एक बार चलेगा तो चलेगा, ये सब क्या है आपको उठा करके और जय हिंद बोल देंगे, इसके बाद आपकी जो चीज फाइनेंशियल असिस्टेंस उठा के दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए बेटर ये है कि आप उस अपने लाइफ को जो है अपने फैमिली लाइफ के या कुछ भी है उसको आप सेटल डाउन करो। आप अपने जो प्रॉब्लम है वो अपने सीनियर से या जूनियर से जो ट्रस्टी है उससे शेयर करें, सबसे मत शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि आपने तो एक गुड फेथ में शेयर कर दिया बट उसको एक वीक पॉइंट समझ करके जब तक बनती है बात तब तक वो आपकी बात रखेंगे अपने पास, और जब नहीं बनते तो उसी बात को सभी लोग के सामने उजागर कर देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी एक और सुसाइड का कारण बन जाता है। तो अपने ट्रस्टी पर्सन से जो है बात करें और इवन जो है अगर आपको लगता है कि ये सही सजेशन दे रहा है तो आप उसको जो है अपने इम्प्लीमेंट करिए और उसको ट्राई टू सॉल्व आउट, क्योंकि एज ए कमांडर हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम उनके घर नहीं जा सकते हैं या उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते हैं। हम एकदम सही कहा आपने रमेश कमांडर जी। हम उनको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं आप उनको, और आप जो है इसको सॉर्ट आउट करिए। मैं छुट्टी दे सकता हूँ और बाकी आपको जो है दूसरे फाइनेंशियल जो हो सकता है वो उसको मैं आपको असिस्ट कर सकते हैं, बट आपके घर जाकर के और आपके परिवार को जो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो 99% केसेज में सुसाइड जो होता थोड़ा सा रुका भी था। हमारे पलटन में जो है 21 बटालियन में जो है एक साल में 4 सुसाइड केस हुए थे। तो दूसरे साल में जो है फिर सिर्फ दूसरे साल में क्या तीसरे साल में सिंगल एक सुसाइड हुआ था, बस इस टाइप का सिचुएशन डेवलप हुआ था। तो उसके बाद फिर बंदी हो गया, लोगों को समझ में आया कि नहीं ये तो बात तो सही है कि मरने के बाद कौन देखने आता है, जब जी रहे हैं तभी तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज मरने के बाद प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो हम जी करके थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट करा, अगर नहीं बन रही तो छोड़ दीजिए, अपने फैमिली को छोड़ दीजिए, डाइवोर्स दे दीजिए, जो भी करना कीजिए, बट उसको जो है लेकर के खुद क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
सुसाइड तो जिसको प्रॉब्लम है वो करे। आप अब देखिए मैम, इसमें मैं यही चीज बताया था कि हमारी समस्या क्या है, हम लोग 100 में 90% जो है जो कमा रहे हैं अपने लिए नहीं खर्च करते हैं, हमने लाइबिलिटी के ऊपर खर्च करते हैं। लाइबिलिटी क्या है, मतलब हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बाकी अपने रिश्तेदार हैं, और 10% हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने मतलब कि हम खुद के ऊपर, जिसे हमें अगर कट गया यहाँ पर मैम, तो ये जो क्या है कि ये हमें भुगतना है, ये क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये मेरा जगह यहाँ कटा है, इसको हमें कोई नहीं, कि कोई किसी को परेशानी नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, वो झेलना हमको है। ये हमारी फैमिली नहीं झेलेगी, हमारे रिलेटिव नहीं झेलेंगे, ये हमारे कोई और दूसरा नहीं झेलेगा। तो ये खुद की प्रॉब्लम है, इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है, हम क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है। तो हम लोग अपने को भूल जाते हैं और उसकी जगह जो है हम लायबिलिटी को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि हम यहाँ 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम जिस चीज को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए उस चीज को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, और इस लेवल पर एकदम बैंग ऑन कहा आपने रमेश जी, यही थॉट्स है, these are your thoughts and that thoughts influence your feelings। लेवल पर चले जाते हैं जो कि सही नहीं है किसी भी हालत में। तो यही चीज बताया कि पहले अपने 30 सेकंड रमेश आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, 30 सेकंड लूंगा ओनली, 30 सेकंड ओनली। मैं कह रहा हूँ रमेश जी जो कह रहे हैं ना वो 100% सही है। बीइंग कमांडेंट हमारे पास में इंसेंटिव के नाम पे यही है कि हम उनको जाकर के बता दें भाई ये तुम्हारी लाइफ है, भाई कैसे जीना चाहते हो, कोई आगे आकर के देखने वाला नहीं है। इंसेंटिव के नाम पे हमारे पास में बीइंग कमांडेंट यही है, बिल्कुल बिल्कुल रिवॉर्ड दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके सारे बातों का मैं सारांश बना रही हूँ। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। क्या कंप्रोमाइज्ड पर्सन मोटिवेटेड हो सकता है? कंप्रोमाइज्ड सही तरीके से काउंसलिंग करे और अगर ही गोस थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस। रमेश जी ने बोला है कि भाई झेलना है या ये करना है, तो कंप्रोमाइज्ड पर्सन क्या जो है मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड हो सकता है? थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा है, काउंसलिंग का क्या मतलब हुआ? काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कब काउंसलिंग का, वो तो जो है वो तो कहना चाहिए ये कि एप्रोप्रिएट वर्ड जो है नहीं आ रहा है, वो तो मतलब बीएसएफ की कंडीशंस है, वो कंडीशंस है, प्रेजेंट कंडीशंस। प्रमोद जी बात ये है, ये जो वर्कशॉप है उसी के लिए है कि हम खुद को समझे, खुद को जाने, खुद what is my thought process, ये what are my ideas, वो thought process how they're impacting my feelings, my emotions, और उसी का रिजल्ट मेरा एटीट्यूड आता है। Okay, so this is the process of having self introspection, आत्म परीक्षण बोलो, आत्म ज्ञान बोलो, उसी के लिए कर रहे हैं हम लोग। So if I have to sum up everything together, what kind of thoughts process go in my mind? They are impacted by the environment on me. Self motivation in BSF is very high. There is no at par with BSF, और especially in leaders जो commanders हैं, उनमें सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी हाई। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ। विदाउट एनी इंसेंटिव। So here it is not, see देखिए प्रमोद जी, सिर्फ हम लोग मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे, we are talking about overall personality of a person. मोटिवेशन एक भाग है उसमें, one of the construct is motivation, but there are other factors also जो कंसिडर करना है, जिससे मेरे फीलिंग्स अफेक्ट होते, जिससे मेरा एटीट्यूड आता है। और आगे वाला जो बात है कि why do we need to know ourselves? ओके ये अब ये तो पता चल गया मेरे आइडियाज क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, फीलिंग्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, एंड यू हैव ऑलरेडी गिवन मी द आंसर्स कि व्हाई डू वी नीड टू नो आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन बेटर परफॉर्म, बेटर एफिशिएंसी बी देयर। ओके, व्हेन वी नो आवरसेल्व्स, व्हेन वी नो आवर वीकनेसेस, आवर स्ट्रेंथ, our motivation level, our emotional stability, all those things help us to do better in our life. So here it is, we need to know ourselves, to know my self-image. What is my self-image? How do I look at myself? अब ये सब हमने देख लिया है, आप लोगों ने भी इसको सिर्फ मोटिवेशन को ही हम लोगों ने पकड़ के रखा था। मोटिवेशन इज वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट,
मेरा अगर सेल्फ इमेज, मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, आप सॉरी कर्नल प्रमोद अग्रवाल, आपका क्या है सेल्फ इमेज? इफ आई हैव टू आस्क यू, व्हाट इज सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज जो हम अपना जो है जो कार्य कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से वो कार्य कर रहे हैं, कितने कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, ओवरऑल उसका जो सक्सेस है उसके द्वारा एक इमेज बनती है, वो सेल्फ इमेज है। जी हाँ, तो क्या है आपका, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज अब उसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग होगा, मैं एनीबॉडी कैन, नॉट ओनली प्रमोद जी, एनीबॉडी। इसमें सेल्फ इमेज का तो जिसने प्रमोद बोल रहे हैं, तो सेल्फ इमेज जो है हम अगर अपने मुख से बोलें कुछ भी तो दैट विल बी समथिंग रॉन्ग। ये जो भी एज ए कमांडर व्हाट एवर आई वांट टू डू एनीथिंग, एब्सोल्युटली, देयर यू आर रमेश जी, आपने बोला एज अ कमांडेंट एक मेरा खुद का छवि है, आई हैव माय ओन सेल्फ इमेज, मेरा खुद का सेल्फ इमेज। बाहर लोग कैसे परसीव करते वो बात अलग है, वो बात अलग है। जी हाँ, मैं आप कैसे परसीव करते हो खुद को ये जानना चाहते हैं। हाउ डू यू लुक एट योरसेल्फ एज अ सेल्फ इमेज? व्हाट इज योर सेल्फ इमेज? यस, एनीवन? मैडम मैं इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। ये हाँ? जो सेल्फ इमेजेस है, मैं शायद एक फ्रेज के तौर पे मैं बताऊंगा, जियो और जीने दो। आपकी इमेज ऐसी हो कि जो सामने वाला वो समझे कि भाई ये साहब जो है या जो एज ए कमांडर जो है ये हमें हमारे समस्याओं का हमें समाधान दे सकता है या हमारे समस्याओं को अच्छा से सुनता है, तो दैट इज एनफ फॉर हिम। तो वो जियो और जीने दो, मतलब कि हमें भी उस लेवल पर ना ले जाए कि एज ए कमांडर के तौर पे हम उनके प्रति जो है मतलब कि वो इमेज क्रिएट करें कि एज ए कमांडर जो है ये हमारी मतलब कि बातें नहीं सुनते हैं या हमें अंडर प्रेशर रखते हैं या अंडर स्ट्रेस रखते हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, या इस टाइप से कुछ जो इमेजेज होती है वो ना होके एक जियो और जीनो दे की भावना होनी चाहिए। जी हाँ, वो हमारा सेल्फ, मैं अपने आप को जो समझता हूँ कि वो सेल्फ इमेजेस जो है वो सामने वाले के मन में क्रिएट किया हुआ है। सही है। सेल्फ इमेज एक्चुअली आपका खुद का एक मेंटल पिक्चर होता है, एक मेरा खुद का व्यू, मैं खुद को क्या समझता हूँ, वेयर एम आई, ओके, हाउ डू, व्हाट इज माय इमेज फॉर माई सेल्फ। अब किसी ने कहा था कि बीएसएफ का जब ट्रेनिंग मिला हमें, इट हैड वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन आवर सेल्फ, इट चेंज्ड अस। एक सिविलियन से यू केम इनटू बीएसएफ एंड देयर वाज अ कंप्लीट चेंज। तो आज आपका सेल्फ इमेज, you know, we started with a journey, right? अगर फिर से मैं थोड़ा recap कर रही हूँ कि what you were thinking about yourself as a child, when you grew up, what you took up, and now you have a certain self image. But ये self image यहीं पर नहीं रुकता है, we want to progress. तो एक ideal self image होता है, ideal self process. हाँ, तो आइडियल सेल्फ है कि मैं आज फॉर इंस्टेंस अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय सेल्फ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से मैं 1 2 3 4 थिंग्स करती हूँ। माय स्टूडेंट्स लुक एट मी लाइक दिस, व्हेन आई टेक अप अ ट्रेनिंग द ट्रेनिंग ऑडियंस लुक एट मी इन सच अ वे। तो एक मेरा आइडियल सेल्फ है कि आज यू नो टुडे आई एम एन असिस्टेंट, टुमारो आई वांट टू बी एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड आई वांट टू गेट इनटू रिसर्च राइटिंग पेपर्स or you know conducting some research conference. So I want to in academics मुझे एक वो ideal self image हो जाता है मेरा, I want to achieve that, okay, and in the process of achieving that, madam, regarding self image, as a commander, as a commandant, your conduct, your discipline, your decision and trust of the troops, it play very major role. yes, it plays a major role as self image. How do I perceive myself? What do I think about my image? Ma'am, I perceive myself as a performer. And what is your ideal self, where you want to be? Like, you know, I am a performer but I want to have an ideal self now. I want to evolve as a consummate performer.
a consistent performer, that's your ideal self, and you thrive to be there. और जब आप ये कोशिश करते हो, that is where your self-esteem comes. Very high self-esteem. High self-esteem boosts confidence in you, isn't it? Of course, of course. Okay, Sonali so madam. this is जी हाँ sir. जी, Sonali Break madam, time? Soumya here. हाँ जी. Yes, I am so sorry to interject. I think the participants, commandants would require a break, and so do you. So we'll go for lunch. We'll come back, sirs, again at 3 o'clock, and we'll, again resume from wherever we have, stopped here. We'll resume from here. Yes, ma'am. So I think we'll come back at 3. So thank you so much, Sonali ma'am. Yes. Mr. Soumya Dev Banerjee. Ji. Time 3:30. I think maybe the convenient so maybe discuss with the house. Sir, 1:30 to 3:90 minutes lunch break is a mandated. Yes, it's already BSF mentioned in the instructions. Yes. Yeah, Sir, 1:30 yes. to 3. We are resuming at 3 o'clock, right? We'll resume at 3 o'clock, sir. Mahindra, sir. Okay. Yes. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Great to see such energies after lunch as well. This only happens in BSF. We have not seen this in any other batch. So very true. Yeah. That is the essence of the BSF training and life. True. Okay. So we'll continue the session and from the morning, and Dr. Sonali is back here again. Over to you, ma'am. Thank you, Tanvi. Thank you so much. Yes, I can see everybody. I would really request all of you all to switch on the camera. I do understand post-lunch sessions are a bit sluggish, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि you are engaged all through, and we had a very interactive session in the first half of the training program, and we'll continue. We'll try and keep, or rather we'll keep this similar tempo for the remaining training program. And this is going to be more interesting because now we are going to start with the psychometric test, and you all need to be really attentive at this point of time. Okay, so हम लोगों ने देखा है self image, ideal self esteem, and we had a discussion also with regards to who am I? कौन हूँ मैं? So that is what is self-image all about. Who am I? And what makes me or I as a person? So Gurinder ji, I would like to hear from you. You were very active in the very first session in the morning. After that, I saw Gurinder ji, Manish ji, Vijendra ji, ekdam shant ho gaye. So can I have some input from you? Are you there, Gurinder ji? मानसिंह जी भी है, मनीष भी है, मनीष जी भी है. In continuation with what we had done in the first half of the session, understanding, okay, I'll just give a quick recap. We started with what if it is the end of the world? What are the regrets we have? And what satisfaction do we have? Then what I wanted to be as a child. And further, what stopped me from achieving what I dreamt as a child? Then we moved on to who are I and me. Okay, the actor and the object. Post that, we also understood self-esteem and what are the different constructs of my personality traits. And we had I would say more than enough. We spoke about motivation, different kinds of motivation. But now we come to who am I? So far, I'm just, if we spoke about I or me, ideas, feelings, attitude, how our attitude results into action. Whatever action we take, it's because it reflects our attitude in our actions. And we need to know ourselves very well. So far, we have done that. And we understood our self-image, ideal self-esteem, and we took a break from here. So who am I? Question. So if anybody wants to share, we have another couple of minutes. We can share and then we can move on to, I would request all of you all to keep your handbook that was provided. आपके पास handbook है ना? Everyone? Yes. हाँ, pencil या pen, you can keep it ready for yourself. क्योंकि बहुत हमको काम करना है अभी.
and lot of introspection. So before we move, who am I? I'll give you instructions. Madam, just think, just what stopped from making childhood dream into reality? Just as I was I earlier stated that I used to be a great traveler at the childhood days. It was my the target, but in subsequent time, I find out that situation around me does not permit, and it's a finance as well as then subsequent I found that it requires sponsorship, and then I found that opportunity. Actually, I born and brought up in Midtown, and in some portion from Jharkhand. So later on, after doing studies, my focus also shifted on other directions. So that's why that childhood dream vanishes in own course. So yeah, we are going to see this very soon, because now हम लोग psychometric test में जा रहे हैं. We are seeing the psychometric test, and you'll understand how things we perceive, what things we have, and how we can overcome all these things. So the question was, who am I? तो वीरेंद्र गिरी जी ने कहा simple and straight, I believe, and then मान सिंह जी कह रहे simple human being. Okay, so human being. What makes you human being? मान सिंह जी. Thoughtful person, kind to everybody. Okay, so you're talking about kindness, you're talking about thoughtfulness. So what are these? Kindness, thoughtfulness. Caring others. Caring for others, okay. So ये कहाँ से आया आपने sir? Being thoughtful, being kind, being careful for others. Okay, so Prabhagat ji kare it's one eye. From society, is it? From society, looking towards others. In your Surroundings, yes. Okay, anybody else? Gurvinder ji, aap aaye hai? Yes, of course, it is the society, and society is the first rather than other things. And child is the born in the society and learn from each and every thing in the society. So what is that we derive from society, or so-called? The society, if I have to really talk about it, comes to the smallest unit is the family. So where did that come from? What do we call that? Usko hum log terminology kya kahenge uski? It is the eternal call of the human being. Okay, we are going on to a different level now. So let's थोड़ा सा एक level नीचे आते हैं. Okay. वो तो हम लोग वो तो है ही, उस वक्त हमको हमारा सारा पर्सनालिटी सब कुछ छोड़ देना होता है और निर्वाणा प्राप्त करना होता है, मोक्ष हो जाता है. But when we are human beings, there's a way, you know. Of course, I did write a paper on spiritual intelligence. What is spirituality? So it's a how do we reach over there? So it comes through our own self, our own personality. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून. बड़ा तगड़ा आपने टाइगर लगा रखा है ये स्क्रीन पे. हाँ जी, एकदम सबकी नींद उड़ जानी चाहिए ना पोस्ट लंच है. Who am I? तो क्या है टाइगर? आप भी एक टाइगर हो? हाँ बिल्कुल टाइगर है, लेकिन टाइगर इसमें टाइगर में हम में अंतर है. हम जू वाले टाइगर हैं, जू वाले. क्या बात बोली आपने अपने अग्रवाल सर. Tiger in the limits. But tiger is tiger when it roars, it roars. बात सही है एकदम. गुरिंदर जी, I agree with you. Tiger is tiger. So what is it according to you? Is in jungle is different. Tiger in zoo is different. I got your view, Mr. Pramod. Let me hear from Mr. Gurinder. Sorry, Colonel Gurinder ji से मुझे सुनना है. Let me hear from Gurinder ji. No, you can call him Mr. Gurinder. That's fine. Miss, regarding what, ma'am? Regarding what? Who am I? Ma'am, if I talk about myself, so what I felt is कि it keeps on changing, ma'am. Your perception keeps on changing as you grow, as you grow in age, as you grow in your status, Stature, and also your experience. Yes, keeps on changing. So I feel myself as a small, very small person in this whole universe, ma'am.
Yes, but for And I yourself, when feel it comes like to your world, it's your world now. I'm getting into your world. Trying to know you as a person. Who are you? Who am I? if I talk about myself, I will say I'm a caring and a sportive person. Caring and a sportive person. So what is this actually? Yes, caring, sportive. इसको हम लोग क्या कौन सा नाम दे देंगे इस facet को? कैसे मैम? Okay, I think we'll understand from this particular slide. Should I explain this? Yes, sir, please. Basically, it is my feelings towards the other which translate into the actions. Absolutely. So this is what I am. I decide myself what I am. So You are because of certain things, you hold certain, see, when you come from different walks of life, when you come from different experiences, you grow, you build, and you build certain things that makes you as Ashwini Maithili, isn't it? So I'm just trying to bring out that word from you all. What is that, that makes you who you are? See, ma'am, as your actions, ma'am, your actions. Yes, your actions. And where do these actions come from? For example, the action of being caring, being kind. Where is it coming from? From society, ma'am. It comes from your Surrounding, society, environment. Yes, that is one of the things, sir. Very right, sir. And also means like the society in which you are brought up. You're brought up. So what is that? You're brought up with what? With love, affection. Caring is an action. Action, absolutely. Love is an action. Love is an action. Yes. And these two actions are generated. Love is not an action. Love is a feeling. Let me explain that. Yeah. Caring is an action. I care for my child. That derives from the feeling towards my child because he is my child. That my feelings are, yes, he is my child, and from that feeling, I should have to care for him. So the caring comes from that, man. Or should I explain it? You're right. You're right. Now, actually, I think we know what that is, but probably we're trying to figure it out. Don't you think it is a value system that we have within us? A belief system that we have within us? Yes, ma'am. Belief and value system. So this is what we are going to do now. And I want your books handy. So this is the most appropriate. There will be a set of questions given out to you all. Okay, you have to, I'll give you the instructions for this. So we are going to develop the profiles quickly. Now we are going to get into the psychometric test. So therefore, it is strongly advisable to give your honest responses to questions asked. For any attempt at manipulating will instantly reveal inconsistency and purpose of developing will be lost. So therefore, you're requested to kindly, like, जो आपको इस वक्त लग रहा है, okay? That is your self-image. Don't think about ideal self. Ideal self के बारे में हम लोग नहीं बात करें. इस वक्त जो मुझे लग रहा है, बस वो हमें बोलना है. And that is the values we are talking about. So I would direct your attention to your handbook, page number 61. Okay, so be ready. But before we get into that, I have a point of discussion. Recall times when you have been so absorbed in what you were doing that you hardly noticed the time. You lost the track of time. Page number 61. 66. अच्छा, sorry, एक मिनट. शायद पेज नंबर बदल गया. I'll show you the. It's ma'am 66. If in my. I'll show you. Can you see my screen over here? I'll tell you. This is. Yes, I got. That is 66. 66, ma'am. So now, for me, it was 61. I'm so sorry, 60. No problem. So recall. Now, I want you to write down. Recall times when you have been absorbed in what you were doing that you hardly noticed the time. What you were doing. So can you think of an instance where you were completely absorbed, drawn into that activity or into that moment that you lost track of time? Particular incident or ma'am, in general you are talking about some particular incident? Particular incident, or it is general, जैसे कि, for example,
with me it happens very often, and I've told Tanvi and Soumyadev as well that when I'm into the training, I don't look at my time. I go on and somebody has to remind me. Classroom में भी यही कहती हूँ मैं, class CR को बोलती हूँ, see, I may lose the track of time. You have to remind me, ma'am, break हो गया है. It's time up. Your lecture is over. So I get absorbed in that. मैम ये ऑलमोस्ट डेली होता है हमारे उसमें लाइफ में। Exactly, ये डेली होता है, so this is not something unusual. BSF वर्किंग कल्चर ऐसा है कि ऑलमोस्ट डेली होता है कि हमें पता So ही नहीं अशोक चलता जी, आप बता सकते हो कोई इंसिडेंट जहाँ पे आप completely absorbed हो गए and you lost the track of time? ये मैम डेली होता है। मैं ऑफिस में आकर के बैठता हूँ 9:30 या 10 o'clock पे, और ये सोच करके कि 1:30 तक मैं वापस चला जाऊंगा। जब ऊपर घड़ी देखता हूँ तो ऑलरेडी 2 बज चुके होते हैं। Okay, so you lose because you are so much engrossed in that thing. Daily routine. I would differ a little on what Ashok is saying. Yeah. Because I don't think, and we are also working in the same culture, same environment. But if you say ki, like daily I lose track of time, then there is some mismanagement. If you pass instructions, no, ma'am, we have to be very truthful about it now. We have to be Yes, very truthful. with this platform, because if I have to get up at 1:30, I have to get up. Now you are taking our classes, and I see Soumya, he keeps on tickling that is 1:30. And I'm also very surprised. I was discussing with all my seniors and my batchmates. The time of tea break, like you are giving, like it is now 10:32. We will again gather at 10:42. So see, this means the importance of time. The thing which I've learned in these last 3 days is that if it is 10 minutes, it has to be calculated 10 minutes. So you value the time. Yes, I really appreciate the faculty and everyone, because if it is 10 minutes, it is calculated that now it is 10:23, we gather at 10:33 in minutes. So if that can be done, I don't feel that there is any urgency in the routine matters that you can always lose track of your time. You have to, if you keep it 1:30, everybody will give you the dark or anything important, they will discuss before that. If you keep them giving a liberty that they will dictate at what time I get up from my office, it is never going to happen. Absolutely. So as a commander, I have to run the office and I have to fix the timings. So it cannot be, maybe some urgency has come, so maybe we have to lose. But generally, it should not happen. Agreed. Ashwini ji, आप कुछ कह रहे हैं? Yes, I not being aware of the time sitting in the office is because of we are doing multiple tasks, task by task, and we are delayed in the time. That's the one thing. Another thing is that when we lose the sense of time is something I think you want to know that. Say when I talk with some good friends, then I lose the sense of time. I agree, Ashwini. I agree on this. On that's this the I thing agree. On this I agree. 100%. When I sit with the Gurinder in the evening with 2 drinks and we talk on a subject of the interest, I just lose the time. Subject of interest. You understand that? Yes. So here you are valuing your friendship and the interest of a subject of interest. Here I agree with him, ma'am. When you're in a good company and you're enjoying the moment, you lose track of time. You are not changing the task. You are not clearing one file by another, and getting delayed in office. That is a different thing, because every file is a different task that will come for whole of the day. But say reading an article or reading a book, that is a single activity, and you are so engrossed in your habit of reading, then you lose time that you forget that it's a 4 o'clock or it's a 5 o'clock. You just forget to go to the office. That kind of thing, which when I was involved in any kind of my habit, which I love most, I generally lose time. So that's the thing that you really like, you're passionate about. So now we had a good, now next question on your, you can see on my screen, think about the things that you find meaningful. What do you think of? Includes ideal feelings and activities. And Ashwini ji, आपने एकदम सही कहा जब आपने बोला कि when you sit with Gurinder
and you have the area of interest, you're talking about a very interesting subject. So it includes, you find some kind of meaningfulness in it. That's a true friendship or a heartful discussion. I believe somebody's mic needs to be put on mute because. Hello. Yes, ma'am. We are hearing you, ma'am. Yeah. So that is meaningful. So you value friendship, you value the interesting knowledge give and take that is happening during this conversation, and that activity is something that really is very close to you. So can you think of those types? So these are two things that you have to really ponder upon currently and share your thoughts. क्योंकि अश्विनी जी ने पहले क्वेश्चन का तो मतलब you whatever scenario was given, you very well explained it, and not only that, but you took up the second statement as well. Second statement is what? Yeah, think about the things that you find meaningful. So you mentioned you find it meaningful talking to Gurinder ji. Exactly. What do you think of? Like it includes your ideals, probably. That is what you shared, your feelings and the activities that you mentioned about reading a book and you lose a track of time. There are many That's things the with us, activities. ma'am. Many things with us. So Sitting you with can our please write it down over there. I want with these handbooks are provided. Either you can take it a printout or you can take a notepad and keep writing these, noting down the page numbers as well. Ma'am, I would like to add one thing, ma'am. जरूर ऐड कीजिए. Ma'am, see, as you grow in age now, जी. and if you have this quality of losing time, losing the track of time, that with friends, then you are very healthy, man. Otherwise, generally people stick to timing कि मैंने इतने बजे खाना खाना, इतने बजे सो जाना है और इतने बजे सुबह उठना है और ये करना है. And when you grow and you have that habit of losing time when sitting with people whom you love and whom you care and with whom you feel happy, so this is a blessing, I would say. Otherwise, नहीं तो लोग कहते हैं भाई मुझे मेरा खाना दो जल्दी, मेरे को सोना है, मेरे को मेडिसिन खानी है. तो मतलब this is good thing. नहीं मैम, आप देखें, when you are young, like say in your like in 20s or 30s, 40s तक भी, तो वो तो होता है मैम. दोस्त के साथ गए तो घर वाले डांटते हैं कि आप आए नहीं बच्चों को या कुछ भी. जहाँ if you are married, your wife would say or your kids would say. तो अगर when you grow up in age and then if you lose track of time with your friends, that I think you are in a good hands. मतलब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी सोच रहा हूँ. अभी आपने बात की तो मेरे ऐसे दिमाग में बात आई मैम. जरूर जरूर गुरिंदर जी, आई एग्री विद यू. ये मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा. जी बोलिए. ये लूज ऑफ ट्रैक ऑफ टाइम का हमारे दिनचर्या में काफी गड़बड़ चलता है. हमारे इलाके में काउंटर पार्ट की साइड से अनवांटेड बिना समय के ड्रोन आ जाता है. हमारे यहाँ 4 अप्रैल को एक ड्रोन आया था रात के 2:12 पे. उसमें SOP के तहत सुबह तक पूरी कार्रवाई करनी होती है. हमें एक तो हायर हेडक्वार्टर को बताना पड़ता है, फिर अगले दिन उसके सर्च करनी पड़ती है, उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है. 5 तारीख को फिर ड्रोन आ गया रात के 3:15 में. फिर हमें यानी कि बिना समय के जो हमारा समय है, जो हम अन्य चीजों को देना चाहते, सोने को देना चाहते, फिर हमने ऑपरेशन इलाके में जाना पड़ा. 6 तारीख को फिर ड्रोन आ गया. तो ये लगातार जो ऑपरेशनल एक्टिविटी, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी की वजह से जो हमारा टाइम जो हमारा अपना है वो जा रहा है, हम BSF को दे रहे हैं, उसमें इतना लंबा टाइम चला जाता है SOP के तहत. लास्ट में FIR तक करवाने को लेकर दिन के 12 बज जाते हैं. रात के 12 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक. That talks about duty calls और ड्यूटी पर कोई ये कर नहीं सकते. You have to it goes with every working condition में. Every working condition. So true घनश्याम जी. मैम घनश्याम सर से बिल्कुल एग्री करके मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँ. हाँ जी प्लीज आगे लीजिए. बेटर. घनश्याम सर ने जो आपको सिचुएशन पेंट करी, ये हमारे सबके साथ ऑलमोस्ट डेली होता है.
almost daily, matlab, if anything happens on the border, there are the procedural things, completing those operational things, we just lost time. But sometimes it's tiredness also, and sometimes it's basically procedural things. You have to do this, you have to do this, you have to do this, you have to do this. But sometimes this operational is so engraved that you just got very interested in doing that operation. Say that's two different things. Ma'am, following certain steps requires your time and you get tired. Protocols to be followed. Protocols to be followed. वो सारे प्रोसीजर करने में टाइम लगेगा तो वो लगेगा और किसी वजह हो सकता है. एक होता है the interest of operation, ma'am. Say you are chasing and you just forget कि बस आज तो मुझे पकड़ के ही जाना है इसको. You are not completing any step. When you are chasing someone and you are so engrossed in that operation कि you are following some militants, they are following and you are just adamant कि बस अब समय चाहे कुछ भी हो जाए, I will just follow them. धर लेना है बस. Those are two different scenarios. Agreed. So these are, I'll tell you, whatever discussions we are having, very soon we are going to connect the dots very quickly. Not very soon you'll realize what we were talking and how it is related to our self, understanding self. यहाँ पर वीरेंद्र पाल जी सिंह कह रहे हैं, it's a party time that we lose track of time. राजेश कुमार सर कह रहे हैं कि in company of friends, and Mansin ji, while listening the old Indian music, they lose track of time. And wonderful, that's really nice. So now, very soon, if you just scroll, do you all have a hard copy of the handbook? Yes, ma'am. Okay, so you please come to this page. So here are what values are most important to you. Pick all the values that are most important to you from the example below. Okay, so here it is achievement, accomplishment, advancement, autonomy, balance, and it goes on, the list goes on and on and on, till influencing people, independence, learning, listening, physical activity, okay, spirituality, teamwork, wealth. However, अगर इसमें आपकी values नहीं है, in the list that is given over here, you may add your own values in these empty boxes. Can you see these empty boxes? It's visible to you all on your handbook. It's on my screen. वही उसी चीज का print out आपने निकाला होगा. So this is the empty boxes. If you feel कि जो value मैं रखता हूँ life में, it is not there, you can add it up over here. Sonali ma'am, इसमें एक I just had a query in this thing. जी. There are say around 50-60 values which I could see. जी. But now these things I may have, all of them I may have, but like some may be very important to me, some may be like okay, fine. So we will go step by step. Don't worry, we'll go step by step, Gurinder ji. पहले तो आप tick कीजिए all those values you think they are part of me. Okay. I value them. Okay, ma'am. Let me just get it out here. बताएं क्या? अच्छा, next page I have not seen. So next page we have that thing. Please wait, step by step. That's why I said just follow my instructions. Just follow the instructions. Okay. आप just आपको click की आप टिक कीजिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, important है आज के तारीख में. Not मैं करना चाहता हूँ ऐसा नहीं. Today I believe in creativity. Today I am compassionate. I'm a compassionate person. I value compassion. I value creating beauty or creating change. I value being a competitive person. आज के दौर में, आज के idealistic बातें नहीं करनी हम लोगों को. Ma'am, एक doubt. Today, what you think is? Ma'am, one doubt I just want to clear up. Please. There are three: achievement, accomplishment, and advancement were written in one line. So I just to choose one from them. No. You select n whatever is requiring. You can have achievement, you can have accomplishment, you can have advancement also. It's okay. Should I speak the first 10 or the? No. Sir, we are not going at that. We are just ticking first. 67, 66 page. No, there is no numbering, but you have to tick it. There's no numbering. yes, taken. Okay, decision making hai. And after that, five priorities that are. No, after that, अगर आपका ये हो गया, everybody's done with this? Yes.
I have done. किसने किया? अच्छा, महेंद्र सिंह जी आपने कर लिया? कितने किया आपने? Can you explain? See, last 5 or the 10. First of all, there is a 10. No. You have to click as many as you want on the page number 66 or 67. No, beyond the next page, it is written the choose. No, the you 10. don't go to the next page. First, you attempt this page. Okay. हाँ, तो कर लिया मैंने, तो बस उतना ही मैंने कर लिया, उनको रख लिया मैंने. नहीं, आप पहले आपके जितने आपको लगता है इस समय, इस वक्त, बिल्कुल. these are my values at this moment. I have done, ma'am. Should I read? You may. Yeah, first of all is the building something, decision making, accomplishment, integrity, leadership, self-expression, vision, teamwork, learn, respect, and fun. और भी कुछ है, don't you think about stability or security, recognition? You can add. There's no limitation as of now. बाद में हम लोग 10 पे जाएंगे. So many things are there. You may Listening, pick what. Listening also, yes. तो टिक कर दीजिए उधर भी. You कर can दिया. tick it. Self-expression. Yes. Manish ji, what do you say? I have done. अरुण जी आपने कर लिया? I have also done. Wonderful. Yes, Now, ma'am, I have as picked 12 things. I am proud, I also done. Wonderful. Now, out of whatever you have selected, it could be 50, 60 or whatever you have listed. इसमें से top 10. Choose the 10 most important to you and prioritize them. That is important. Priority से रखना है. जैसे number 1 is I want number 1 value in my life is respect, followed by security maybe, followed by creativity. So prioritize them and take top 10 most important value and prioritize them. Once you're done, let me know. You can write it down. Yes, Virender ji, screen is showing 61. कई बार ना ये PDF में जब convert कर देते हैं, page numbers बदल जाते हैं. So आपका जो page number है, आप देख लीजिए. Accordingly, you can. 61, 62, 63, like that maybe then. हाँ. यहाँ पर मैंने जब पूछा when you lose track of time, the अंतर्यामी ने जो कहा था, it happens frequently during ops, VIP visit, incidents, etc. Great. Any activity which diverts my mind from busy schedule. संजय कुमार जी ने कहा और गिरी जी ने कहा screen on. Okay. Once you are done, just let me know. I have done. Okay. 10 of them. Done. Top 10 and prioritize them. You have to list them in the priority. Which comes first, which comes second, which is the most important for first जाएगा. Yeah. For me, ma'am, first is integrity. Integrity. Okay. Followed by respect. Respect. Then third is health. Health. Okay. Then fourth is family happiness. Okay. Then fifth is fun. Okay. Sorry, compassion. Fifth is compassion. Compassion. Sixth is fun. Seventh is helping others. Eighth is decision making. Ninth is security. 10th is fun. Sorry, happiness. Okay. मैम मैं बता लूं. हाँ जी बताइए सर. This is Gurinder मैम. हाँ गुरिंदर जी बताइए. For me, as Manish has said, ma'am, integrity. Followed by achievement, ma'am. Okay. Then it is family happiness. Okay. Equality. And then serving people, ma'am. Okay. Financial security.
layer, then personal development, friendship and harmony. Wonderful. So देखो दो लोगों ने अपना शेयर किया है. मैं गिरी बताऊं? जी आप कह रहे only 7. Try to make it 10 ना गिरी जी. I have done, ma'am. मैं also done. सुनाओ मैं सुनाओ also done. बताओ. सुनाओ भाई. हाँ. Batchmates are too eager to listen. बताइए. Out of हाँ इंद्र यामी. out of 60, I selected 10 important. अरे Yes. सुनाओ. बताओ अजय. So मैं first one is integrity. Second one is the family happiness. Okay. Third one is stability. Fourth is security. Fifth one wealth. Sixth physical activity. Equality. Respect. Teamwork or personal development. Fantastic. These are my 10. Thank you Yeah. अजय जी. और Madam, किसी को from my side, first one, first priority, visioning. Second, challenge, accomplishment, creating new, happiness, integrity, safety, recognition, leadership, last health. Okay, wonderful. So आपने देखा इतने 4 to 5 people have shared their top 10 values, and I think it is. मैं भी इसमें इंक्लूड करूंगा, अपना बताऊंगा. बताइए प्रमोद जी. इसमें हमने जो सिलेक्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 से करना है भाई. 15 के लगभग है मैम जो हमने सिलेक्ट किए थे. हाँ तो टॉप 10 कौन से आपके? टॉप 10 हमारे. नंबर 1 टॉप में है डिसीजन मेकिंग. ओके. सेकंड वन इज चैलेंज. और थर्ड वन इज विजनिंग मतलब एप्रिसिएशन भी आ जाएगा इसमें. फोर्थ में है लीडरशिप. देन फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस 6. 7 में है लिसनिंग और 8 में है इन्फ्लुएंसिंग और 9 में है इंटीग्रिटी और 10 में है हैप्पीनेस. Fantastic, प्रमोद जी. मान सिंह जी ने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, हार्मनी, फैमिली हैप्पीनेस, कंपैशन, डिसीजन मेकिंग, सर्विंग पीपल, टीम वर्क एंड फिक्सिंग समथिंग. वीरेंद्र पाल जी ने लिखा है हैप्पीनेस, हेल्पिंग अदर्स, रिस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग, इंटीग्रिटी, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, experiment and challenge. Wonderful. So For me, yes, ma'am, I have done. First is justice. okay. Second is respect. Third is security. Fourth is communication. Fifth is autonomy. Sixth is creativity. 7 is equality. 8 is decision making. 9 is light has gone on. No, it's okay. We can see and we can hear you. See, madam. Family happiness. And 10th is building something new. Wonderful. Thank you. So अंतर्यामी जी ने एक चीज अच्छी जोड़ी इसमें. हाँ जी. I would like to appreciate him. Justice. Yeah. Because that justice is not mentioned here, but he has added in that. Added that on is to a very it. essential organ of the system. Yeah. True. I agree with you, Mahendra ji. It is one of the core tenets of our constitution also. Yes. और मैंने देखा एक चीज, एक धागा जो सबको बांधे रखा है. Yes. वो है इंटीग्रिटी. सबने लिखा है टीम वर्क, इंटीग्रिटी and serving people. Most of you, and I think that is your inbuilt value system. आपने के हाँ जी. Sorry for interruption. नहीं बोलिए गुरिंदर जी. मैं ये कह रहा था कि these values, like, should I relate it to my job or it should be my general जो है behavior? No, this is about your own personal. We are trying to understand self. I'm not self. That's what I'm telling. I'm not relating. You're it to understanding it for yourself. देखिए आपका जो एक व्यक्तिमत्व है, your personality, okay, yes, that you carry. Okay, ma'am. Okay, you cannot differentiate. Integrity आप family में भी रखोगे, integrity आप कहीं पर भी हो, you're going to have the integrity. जी मैम. है ना?
जी मैं अपने 10 जो टॉप चॉइस में से जो है एक चॉइस मैंने अपने रखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉप वन इज फैमिली हैप्पीनेस। फैंटास्टिक। अब हम 10 तो कर लिए। अभी इफ यू स्क्रॉल डाउन, आई मीन आई विल रीड आउट some more have been added on by Ashwini ji. Integrity, learning, family, happiness, friendship, decision making, equality, teamwork, respect, experiment and risk. Neeraj ji ne likha integrity, family, happiness, harmony, helping others, influencing people, improving something, personal development, respect, compassion, spirituality. Okay, यहाँ पर एक नया है। सुरेश कुमार जी ने लिखा इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फिजिकल एक्टिविटी, कंपैशन, फैमिली हैप्पीनेस, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन। ग्रेट। एंड प्रमोद जी ने तो बता दिया था। मैम इसमें जो है, मैं तो इसमें जो सिलेक्ट किया हूँ सबसे फर्स्ट नंबर पर है रिस्पेक्ट। हाँ, इसके बाद फिर जो है फैमिली हैप्पीनेस दिया है, और इसके बाद फिर लिसनिंग दिया है, और चौथे नंबर पर है वेल्थ है, और इसके बाद फिर जो है पांचवें नंबर पर पर्सनल डेवलपमेंट है, इसके बाद फिर इंटीग्रिटी है, और इसके बाद फिर जो है बिल्डिंग समथिंग, इसके बाद बैलेंस दिया है, अकम्प्लिशमेंट दिया है, और लास्ट जो है डिसीजन मेकिंग दिया है। फैंटास्टिक। तो अभी हम लोग 10 तो निकाले, अब टॉप 5 आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। What are the 5 most important to you? Prioritize them. अभी इसमें से 10 में से आपको टॉप 5 निकालने और प्रायोरिटाइज करने हैं। मैं अगर इसमें से अगर निकाल रखा है, वेरी डिफिकल्ट, बता दीजिए, वेरी डिफिकल्ट। कर दीजिए, करना है। You have to do it. मैडम मैं बता देता हूँ, कर दिया मैंने पहले से। हाँ बता दीजिए फिर। डिसीजन मेकिंग, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, टीम वर्क एंड रेस्पेक्ट। These are 5. कहाँ गया? सर रोतेला सर को सुनने को हम तत्पर हैं सर। 5 बता दीजिए सर प्लीज। हाँ जी, रोतेला सर बताइए। करना चाह रहा हूँ। Integrity is first one. First is integrity. Second is decision making. Third is compassion. Fourth is respect. And fifth is family happiness. Okay. तो उन्होंने लिखा था, रोतेला जी ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिखा था। घनश्याम जी ने लिखा इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, फैमिली, फैमिली अपील्स, टीम वर्क एंड हेल्पिंग अदर्स। रमेश राम जी ने लिखा है डिजायर, कमिटमेंट, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अ गुड लिसनर एंड चूज योर वर्ड केयरफुली। महेश्वर जी ने लिखा है इंटीग्रिटी, हेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस, लीडरशिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। प्रमोद जी ने लिखा है डिसीजन मेकिंग, विजनरी, फिजिकल एक्टिविटी, इंटीग्रिटी, हैप्पीनेस। सुरेश कुमार जी ने लिखा है इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फैमिली, हैप्पीनेस एंड कंपैशन। एंड मनीष नेगी जी ने लिखा है इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, हेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस, and it goes on. Now my question is on the screen. Can you see the screen? Can you share how your values have influenced your attitude towards life? ये जो 5 values हम लोगों ने narrow down किया gradually, first very big, then 10, top 10 and top 10 से top 5. So can you share how your values have influenced your attitude towards life? आपकी जो values है top 5. The top 5 I have chosen. The first is health. Health, okay. So it has changed the overall outlook of the system. What in BSF or say at the personal level, you prefer to do daily routine exercise, and you put on your healthy diet habits, and you drink less. And my second thing is integrity. So I practiced to do the right thing, even if no one is watching you. Yes. Third, I written is security. Maybe security of your family, security of a society, or your campus, or your unit. That should be secure. Fourth, I have written financial security.
So how has it financial security has influenced your attitude I towards life? have inculcated habits of saving and investing and not spending on material items, material goods, pleasures. Very well said, Sanjay ji. बहुत बढ़िया. And Thank you. fifth is building something. I to build something maybe at a personal level or at say unit level. Whatever asset we have, I try to at least develop twice or three times what we had. So these 5 values I have written. And you have From my also side- shared how they influence your attitude towards life. Yes, ma'am. Giri ji ne kaha, our values shape our life at one point become way of life. Absolutely well said. When we hold on to our values, they become way of our life. They become part of our life, and they are so much integrated in us that we cannot separate ourselves from them. Well, Madam, sir, well from my said. side, I given priority. That's vision. Without vision, why should I work? Where should I work, and where should I go? That's why first I prioritize vision. I should have broader spectrum, and for the vision, we require leaderships. Leaderships means it is a complete leaderships at all levels. We require leadership at smaller group also. And on every aspect, there is challenge. Is a one thing that if I going for 10 meters, then I have to go for 12 meters, like that. The challenge should also be there, and it should not be stationary. It should be dynamic. Then there's next fourth one is creating new. If there is a something new is being created, or there are some aim that we have to create this thing, or asset create this thing, or new practices to be created. So people are get motivated. And lastly, happiness, because happiness is the ultimate aim. So that is the reason for prioritize all 5 factors. So now we have understood very well, like, how values have impact on our life, and how, Giri ji ne bahut sahi kaha ki ye way of life ban jata hai. So now next thing, we are moving on to locus of control. Okay, so locus of control, we'll do the activity first. Okay, I can see a lot of overwhelming responses on my chat box, like leadership is challenge, creating new happiness, family or company. Antaryamani ji kaha hai, if I do anything from a sense of justice and equality, the creativity gets boosted. Besides, communication is must to maintain awareness and synergy among family or command. And of course, security is must for all the actions and setup. Bang on. So you understood how your values impact your life, your decision, and your attitude, which comes into action. It reflects in your action. So next is locus of control. We'll see what locus of control it is. If I have to, yes. Manish ji, you want to say something? Nee, Mohan ji, is that you? Somebody said hello. Okay, if nobody's saying anything, we'll go ahead. So locus of control. Now, this is another psychometric and tested, time tested. This was done by Uday Parikh, one of our Indian author. And very well, he has designed this locus of control to understand how our life, how do we control our life? What kind of control do we have over our life? So we'll go through the activity and then I'll debrief you. Because if I explain in advance, it won't be able to, we won't be able to get a desired result. So I want you all to move on to the page number 64 of your handbook. Now here, there are a few instructions. I'll share the handbook also with you. This is the handbook. Okay. Have a look here. This is the one. Can you see? Given below are common statements that show how people experience their organization. There are no right or wrong answers. Read each statement and indicate the extent to which you feel that was that way. Based on your experience in your organization, use the following key indicating to rate your each statement.
Mark it on the left side of each statement. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको over here? Sonali Can you madam, please? जी? sorry, were you trying to show it on the screen? Yeah, I'm trying to show it on this. It's not. It just shows the scoring slide, ma'am. That's why. Oh, scoring. I'm so It's on sorry. I'll page just number share. 69. I'll just share the screen with you all. Thank you, Soumya, for. No worries, ma'am. Yeah. Yeah. See, can everyone see the screen now? Is it visible? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So now be honest and frank with your responses. If you strongly feel this is the way I can largely determine what happens to me in the Like organization. if you slightly feel this way, I think that should be 1. It is written 4 over there. I'll just tell you, sir. There's a typo Okay, error. okay, fine. Yeah. So write 4 if you strongly feel that way. Write 3 if you feel this way. Write 2 if you feel this way, and somewhat not, like, okay, fine, it's okay. Like the course of my career largely depends on me. Well, I don't think so. I feel slightly so. You can write 2, and this is a typo error over here. If I've highlighted that with a highlighter, it says 4, it is actually 1. Yes, that's If what you I was saying, ma'am. That's what I was saying. Yeah. That's a typo error. That's a typing error. And write 0 if you hardly or never feel that my course of career largely depends on me. No, it doesn't depend on me. I can write 0. Over here, instead of 4, it is 1. So I'll maybe in a minute's time, you'll be able to do this activity. So I can read out each statement. You can give your rating on a scale of. Let us do it on our own, sir. Definitely. If you speak, then we won't be able to concentrate. You'll get distracted. Okay, I respect that. Don't mind, well. ma'am. Don't mind. No, not at all. Not at all. Thank you. Okay, so it's on a scale of 0 to 4, you have to rate each statement. So take 1 minute time and we will come back. Just be there. Just give the rating. I will give you further instructions what needs to be done. Sonali ma'am, may I suggest you to scroll a little up so that number 10 statement is visible to sirs? Yeah, I think this would be great. Yeah, till 50. Yes, ma'am.
So there are 30 statements. I hope you have completed these statements. Still on it? Yes, ma'am. I have completed. Okay, Pramod, thank you. And if you have completed, just if you can acknowledge that, I will be aware. 30 statements on a... Completed, ma'am. Okay, great. I don't want to disturb others, but there are a few points I want to say when everyone has completed. Definitely. मैडम ये केवल एक पॉइंट है मेरा. हाँ जी. All participants, the point number 23. I request to the all participants, please go through the point number 23. This point, how much you prefer? क्या गलत है क्या? आप बताओ ना. क्वेश्चन गलत है क्या? देखिए, आपको ये जो whatever ratings are, you don't have to share it with anyone. It is your belief. Okay? Murthy, 23 number. भाई जो लिखा भर, तेरे को जो लगता है. जी मूर्ति जी, you want to say something? उसमें लिख दिया हमने, लेकिन मैं तो सुनना चाहता हूँ सब लोगों से. नहीं, that is very personal. वो अपना है. बाद में actually this is just Okay. activity बाकी है अभी काफी. Yes. Surprise element is still to come. Yes. I can see most of you all have done. Chat में भी काफी लोगों ने done बोल दिया है. Host of restaurant in the मैंने अपना स्कोर डिस्क्लोज करके सरप्राइज आउट तो नहीं कर दिया. नहीं सर, अभी तक काफी बाकी है. रुकिए. अब आपको क्या करना है? If everybody is done, can I take consensus? Everybody has completed their work. Yes, I can see a lot of people have said done. There are okay. I presume everybody has done. So now what you have to do, आपका जो response है, for example, statement number 1 says, I can largely determine what happens to me in the organization. अगर मैंने यहाँ पे score 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, जो भी है, वो score मुझे अब यहाँ नीचे, can you see my sheet? यहाँ 1 पे डालना है. Okay? फिर 2 statement के लिए जो मैंने rating दिया है खुद के लिए, वो statement के लिए, I have to put that either 2, 1 or 0. जो भी. So आप 23 वाला statement पे बात कर रहे थे. 23, if you say promotion depends on your abilities and if you say yes, 4 है highest rating, you can put that. ठीक है? तो ये आपको पूरा rating आपको देना है. हर एक statement का यहाँ पे responses दिया है. आप ये कर लीजिए. ठीक है? We'll take a quick. You'll finish this. Have you started uploading your response ratings in these response boxes? कहाँ पे करना है इसको? अब suppose number 1 is 4, number 2 statement मैंने rating दिया है 3. नीचे दे दो रखी स्कोर शीट, ये इसी में भर दीजिए ना. जो आपने लिखे, जो आपने नंबर दिए हैं वही सेम लिखने पीछे उसी में. जो स्कोर आपने यहाँ दिया है, suppose 26, I'm acceptable to others in my organization because I'm lucky. Okay? और मैं बोलती हूँ I don't agree with this statement, 0, number 26. तो यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगी. नहीं तो इधर पुट कैसे करूँ इसको? ठीक है?
My ideas get accepted if I make them fit with the desires of my seniors. 3. Okay, number 29. यहाँ पे 3 लिख दूंगी. आया सबके समझ में? And then ये कॉलम जो है, ये वाला कॉलम, जो आपने मटेरियल दिया है मैम उसी में करना है ना, कि इसमें? जी हाँ, जी हाँ, उसी में कीजिए प्लीज. अच्छा, उसमें तो कर दिया है. जी हाँ, ठीक है, आप ये सब डाल दीजिए. Have you inserted or uploaded those ratings in these response empty boxes? Yes, I have done. Okay, और उसका total for this column. Okay, the total internality का total, year and the total, and 3 totals आने चाहिए. इनका total भी हो गया है. Wonderful. So we'll take a quick 10 minutes break. It is 4 o'clock. 4:10 we'll resume the session, and we'll do the debriefing of this session then. It's very interesting. Thank you. Just came, ma'am. Would you like to skip the break in that case? Yeah. This is the area of interest, and it is the matter of losing time, ma'am. Yeah. So what does the house say? Break is always Break is essential, ma'am. Okay, it's 4 o'clock. We'll take a 10-minute break and we'll resume at 4:10. 4:15. 4:10, sir, 10 minutes. We are losing on time. It's already 4. It's already 4, so 4 for 10. I can Alright? largely determine what happens to me in the organization in this way. Core sheet क्या होना चाहिए? So without wasting much time and without killing your enthusiasm, I will take you through this core. Okay. So first of all, I'll debrief what is internality. Okay, what is externality, others, and externality by chance. देखिए, locus of control वो होता है कि जो हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है. How do I perceive the control is within my hand or with somebody else? So internality होता है कि it is my ability, my skill sets that I'm holding on to. जो मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसलिए हो रहा है. That is, I believe in myself. I believe I have trust in my abilities. I believe my instincts. I believe in my competencies, skill sets, or I consider. I do assume, I depend on the data, I analyze the data. Based on that, I take a call, I make a plan, I take an action, and I achieve goals. That is, I believe in myself. That is internality. Now, externality में 2 factors हैं. Okay, externality others. Externality others means I depend on my boss, my subordinates, my colleague, environment. ये सब factors होते हैं internality, externality others में. और externality chance is nothing but luck, by fate. By chance हो गया, by luck हो गया. That is externality chance. Okay, so one is externality others. There are environment, processes, procedures, protocols to be followed. People are there, families there, relatives are there. You have other people because of which it happens or it may not happen. That is a locus of control. ये यहाँ तक clear है सबके लिए? What is locus of control? Locus of control में 2 divisions है. One is internality, another one is externality. Externality में 2 factors है. Others, that is various factors, people, especially all kinds of, you can divide them in whatever segments you want. And one is chance, by luck. Lucky था इसलिए हो गया. Okay. So now we will see the score. So for internality above 34, okay, is something which is a bit worrisome. We'll come to it later, but I'll first talk about 29 to 32 or 33. If your score is lying between 29 to 33, that is a safe zone. Okay, you have high trust on your own abilities. You are an effective leader, and you consider factors lying outside and consider risk assumptions too. If your range is between